हो, वेलकम टू द स्ट्रीम. हाय चिल, हाय अबीदा, व्हाट्स अप गाइस. हाय शिवा, हाय जपनीत, हेलो नकुल भाई, कैसे हो? हाय टेरा, हाय बालकृष्ण, हेलो हेमंत, हाय अक्षित, हाय देवदीप, हेलो डेथ आई, हाय गौरव, हाय रश्मित. हाउ आर यू गाइस डूइंग? भाई आज बहुत मज़ा आने वाला है वॉच पार्टी में. गाना बंद करूँ? मेरा आवाज़ आ रहा है? आज थोड़ा बिजी हूँ, स्ट्रीम लाइक करने आया था, बाय, और आफ्टर स्ट्रीम देख लूँगा. अरे वॉच पार्टी बाद में कौन देखता है यार. हाय सासिन, हाय अक्षय. फाइनली आई एम टॉल, बॉल्ड, फैट एंड इंटेलिजेंट. ओके, मतलब आई डिड नॉट मेंट लिटरली कि हाउ आर यू, बट ओके. चिरो एपेक्स आफ्टर लॉन्ग टाइम एक गेम खेला था सिर्फ. मज़ा नहीं आता यार अब. एपेक्स इज़ नॉट दैट मच फन एनी मोर. टी शर्ट से तो लग रहा है नावी को सपोर्ट. एक्सक्यूज मी गाइज, बताओ मैंने ये जर्सी क्यों पहना है मैंने. यू बी माई ब्राज़ील, आई विल बी योर नेमार. ओ सो यू वॉन्ट मी टू बी योर टीम, ऐसा बोलना चाहते हो? मतलब योर क्लब है क्या? पता नहीं क्या बोल रही हूँ. My sick brain never works properly. हाय शुभांशु, हाय सौरभ. एंड सॉन्ग है, बंद कर दूँ क्या गाना? वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब. एनसीएस ना बहुत बोरिंग लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है. साकिब, वेलकम टू बॉर्नविटा फैम. क्योंकि लास्ट ईयर यही टी शर्ट पहन के स्ट्रीम करते थे. क्या तानिश, प्लीज़ तानिश, go and take 2 minutes break and use that 2 minutes to find your brain because you lost it. Yellow pehna hai because you are a dirty fellow. Hello, I am not, okay? I am a very hygienic person, excuse me. इधर आओ Sherlock, इधर आओ Sherlock. Hi Strax, dinner हुआ? Yes. Hello bot, hello bot. स्टार्टिंग में अगर हिंदी हो जाए तो. मुझे हिंदी एनसीएस नहीं पता है. मुझे हिंदी कॉपीराइटेड सॉन्ग्स इतने कम पता है, एनसीएस कैसे पता होगा? ब्राज़ील, साओ पोलो, विजिट. नो, कौन कौन सही गेस करेगा भाई? कोई तो सही गेस कर लो. वैसे मैंने भी कुछ रिलेट करके किया, बट ठीक है. अच्छा, आज कौन सी टीम्स का मैच है गाइस? लाउड वर्सेस डीआरएक्स. अब गैस कर लो. हाय शिवांशु, हिंदी एनसीएस तानिश फाइंड करने वाला है. ठीक है तानिश, मुझे प्लेलिस्ट भेज देना. तुम लोग को जो सॉन्ग सुनना है मैं प्ले कर दूँगी. Whenever I want to listen to lo-fi, I listen to episode 3 Valorant theme music. ये कौन सा? ये नहीं सुना मैंने. लाउड तो नहीं होगा. ठीक है हेमंत, लाउड की जर्सी येलो है क्या भाई साहब? लाउड ब्राज़ीलियन टीम है और क्या. इसलिए अब मेरे पास लाउड का जर्सी है नहीं, तो मैं कहा चलो मैं ब्राज़ील का जर्सी पहन लेती हूँ. बिकॉज वी आर सपोर्टिंग लाउड ऑब्वियसली. आसपास ओपी डिमोनिक जेट. लाउड की जर्सी ग्रीन है. अरे यार बट लाउड इज़ अ ब्राज़ीलियन टीम यार. अब मेरे पास लाउड की जर्सी नहीं है. आई विश मुझे कहीं से मिल जाए. मुझे लाउड की, लिक्विड की, पीआरएक्स, मेरी 3 फेवरेट टीम्स. वाओ 220 IQ, थैंक यू. वेरी रियलिस्टिक यार. अभी देखो जो था ठीक है यार. बहुत बेकार रीज़न है शुभांशु, तुम तो चुप ही रहो. RIP लॉजिक. हेटर हो यार तुम लोग. ठीक है, मुझे लाउड की जर्सी ला के दो फिर. देन आई विल हैव टू सपोर्ट DRX. ओके श्योर. ऐसा मैं वैसे DRX से कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ गाइस. हमारी मतलब पैसिफिक रीजन की एक ही टीम बची है उधर. मतलब सबको हरा के आ गया ये DRX भाई. 2 OP. बट इसलिए आज का मतलब आज का गेम बहुत ज़्यादा इंटेंस और फन होने वाला है. मज़ा आएगा बहुत देखने में. DRX फॉर द विन. मेरा रियल रैंक आ गया डायमंड लियो. आर यू श्योर दैट इट्स योर रियल रैंक? बिकॉज फिर आई थिंक योर रियल रैंक लुक्स समवट लाइक यू नो, वो जो लोहे का कलर होता है ना वैसा.
मतलब पर्पल तो नहीं दिखता है। लाउड की जर्सी के लिए ज़ोर से जॉर्ज चिल्लाओ, उससे क्या मिल जाएगी। मेरी आवाज़ वैसे थोड़ा सा क्रैक हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं शाम को सो गई थी। मैं लोको स्ट्रीम बंद करके बेड पे गई और मैं सो गई मस्त। क्या नींद आई है मुझे, इतनी गहरी नींद आई है, मज़े आ गए। BO5 है, मुझे तो पता ही नहीं था BO5 है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। मॉडल इंस्टा पोस्ट मैंने देखा अमेजिंग। हाँ भाई, बड़े लोग यार। मुझे एक लड़की पसंद है, उसको कैसे बोलूँ ये बात, प्लीज़ बता दीजिए यार, इग्नोर ना करें। आ, यार वैसे तो सब लोग ऐसा मुंह से ही बताते हैं, मतलब बोलोगे तो फिर बोलोगे तभी उसको पता चलेगा, तो ऐसा बोल दो उसको। शीरो नॉट सो लाउड, एक्सक्यूज मी। लोको 2 आवर्स नहीं हुआ। हाँ यार, मेरे को आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो 2 गेम के बाद ना मुझे डिप्रेशन हो रहा था, तो आई जस्ट एंडेड द स्ट्रीम एंड आई वेंट टू स्लीप। इट्स ओके, पूरा महीना बाकी है, मैं कर लूँगी स्ट्रीम, डोंट वरी। हाई क्यूट कम्बर, हेलो मर्क्यूरी। उस लड़की को ब्राज़ील की जर्सी गिफ्ट करो। भाई वो फुटबॉल फैन नहीं, फिर क्या करोगे भाई। BO5 है, मेरी नींद गई आज रात की। भाई तुम दुखी क्यों हो रहे हो उल्टा। VCT के टाइम तो मैं अपना स्लीप शेड्यूल को मतलब सोचती भी नहीं हूँ, भाड़ में गई नींद, ऐसे होती हूँ मैं, इतना एक्साइटमेंट रहता है मेरे को। मैंने तो पूछा कि BO5 है या BO3, इट्स BO5। मुझे भी पता नहीं था बाय द वे, मुझे मतलब मेरे को अभी एक 1.5 घंटे पहले पता चला मुझे, बिकॉज मैंने सोचा सारे BO3 होते हैं तो ये भी BO3 होगा, क्योंकि फाइनल्स BO5 होता है, बट सेमीफाइनल्स भी BO5 है, एंड एक्चुअली इट मेक सेंस, अच्छा है कि ये BO5 है, क्योंकि लिटरली स्टार्टिंग से अभी तक सारे मैचेस BO3 ही हुए थे, तो आई थिंक सेमीफाइनल्स शुड बी BO5, इट्स अ गुड थिंग। जेरफ और वाइपर आ रहे हैं, आ रहे होंगे यार, जेरफ तो आ रहा है, वाइपर भी आ ही रहा होगा यार, आज तो स्नैक्स भी कर रहा है वॉच पार्टी, तो मतलब जो जिसको आना होगा डिस्कॉर्ड पे आ ही जाएगा खुद से। तुम सब नॉटी का ट्राई करो यार, वो मुझे ना अंडर वाटर ऐसे मतलब अच्छा फील नहीं होता है। वैसे बीन्स वैल्यू कम है क्या। सुबह 9 बजे नींद खुल जाती है बिकॉज ऑफ नेबर्स, और यार बहुत दर्द है शुभांशु। वाइपर 10:30 के पहले नहीं आएगा, लिख के ले लो। हाँ तो दो, लिख के दो। लोगों पे होते हैं बीन्स, हाँ बट वो बोलना क्या चाह रहा है। सिर्फ के YT चैनल का मेंबरशिप रीस्टार्ट हुआ भाई, मुझे सुबह सुबह नोटिफिकेशन आया, यूरो न्यूज़ मेंशनड यू इन अ वीडियो, 3 मस्किटियर्स इन आइस बॉक्स। मैंने कहा व्हाट द फक, मैंने कहा ये तो हमने 2 साल पहले खेला था, उसका वीडियो है। तो आई थिंक उसके कुछ वीडियोस रिस्टोर हुए हैं, तो वापस उसका नोटिफिकेशन जा रहा था। कल 5-5 में क्यों नहीं, क्योंकि मैंने ग्रुप नहीं देखा था, तो जब तक मैंने देखा तब तक फुल हो गया था। मैं पानी पानी हो गई, याद है, अरे शिट, किसका था वो वीडियो, नाम भूल गई मैं उसका। जी यार। लेट नाइट फास्ट होना यार, आई एम नॉट वेल, मैं वॉच पार्टी करके सोने ही जाऊंगी। मैं अभी शाम को भी, मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, तो अगर मैं दिन में सोई हूँ मतलब आई एम नॉट वेल, मैं शाम को सो गई थी, मेरा आवाज़ तभी थोड़ा ऐसा हो रहा है। सीधा वॉच पार्टी के बाद सोने ही जाऊंगी मैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगा, मतलब अभी भी वैसे कम है बट ठीक है, वॉच पार्टी का एक्साइटमेंट है बस मैचेस का। अब तो अमंगस नहीं होने वाला, आई नो यार, बट इट्स ओके यार। मुझे तो पता भी नहीं था 5 है का, मुझे भी नहीं पता था। दिन में नहीं सोती, हाँ अरे मतलब वो सुबह वाला थोड़ी काउंट होता है कि मैं रात से दिन तक सो रही हूँ, वो वाला दिन में नहीं, मतलब अलग से कि भाई उठ गई मैं सुबह और उसके बाद मैं वापस दिन में या शाम को सो, वो नहीं होता। अब ठीक है तानिश, इसको अलग दिक्कत हो रही है। और बाय द वे मैं सुबह मैं कब उठी थी वैसे, मैं भूल गई।
मैं उठ गई थी आज 12 बजे, ठीक है, फिर मैं शाम को सो गई लोगों के बाद। होता है भाई, इसको अनमोड करो। शर्लॉक फिर अंकिता आई ऑपरेशन हुआ, शर्लॉक हाँ इधर आओ आई नो, शर्लॉक बट इधर आई आओ व्हाट आई डोंट शर्लॉक नो इज इधर कि आओ वो इतना शर्लॉक। जल्दी स्क्रीन के सामने क्यों आ गई है। उसका अभी रिसेंटली तो हुआ है, बिकॉज मेरा भी हुआ है, एंड एक हफ्ते तक यू आर नॉट सपोज टू इवन लुक एट द फोन, टीवी एंड एनीथिंग। मैं एक हफ्ते मैं जो बोर हुई थी ना, मुझे पता है, इतना बोरिंग था, पूरा दिन बस लेटे रहो, हर 15 मिनट में आई ड्रॉप आई ड्रॉप, अभी 1 घंटे में दूसरे आई ड्रॉप, फिर इतनी देर में दूसरे आई ड्रॉप। पूरा एक शेड्यूल बना रखा था मैंने मेरा आई ड्रॉप्स का। शीरो की सुबह ही 2 बजे होती है, नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है। मैं 12 बजे उठी थी, 12 और 2 में फ़र्क है यश। वो तुमने पढ़ाई की होती ढंग से तो तुम्हें पता होता। इतना सोते हो तो स्लीप स्ट्रीम, यार नहीं सोती यार मैं ज़्यादा। मेरे को सुबह 5-6 बजे तो जाके नींद आती है। क्या हो गया आइस को? अरे कुछ हुआ नहीं है, उसको नंबर है तो उसने उसके लिए सर्जरी कराया ताकि उसको ग्लासेस ना पहनने पड़े। 12 बजे इतना जल्दी? हाँ तो क्या मैं सुबह 6 बजे उठूँ? फिर तुम लोग को लेट नाइट स्ट्रीम करके कौन देगा? मैंने शेड्यूल सुधार लिया तो प्रॉब्लम मुझे तो कुछ नहीं है, बट फिर नो नाइट स्ट्रीम्स। माइलस्टोन मिस, ये फेजर दिमाग खा रहा है ना मेरा, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कल मैथ्स का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जीएनवी गेमर्स। आई होप तुम एकदम तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स एकदम मेरे जिससे आए। मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आते थे, बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ दूर दूर तक कुछ स्कोप नहीं था, लेकिन मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स आते थे। लेजर सर्जरी रेगा की बहन ने भी कराई थी, हाँ बट उसने लेसिक कराया, मेरा दूसरा हुआ था। सबसे इसमें 3 अलग अलग टाइप के सर्जरी रहते हैं, द बेस्ट वन इज़ द स्माइल सर्जरी, मैंने वो करवाई थी। और अभी शायद मेरा भाई भी करवाएगा, तो मैं उसको वही सजेस्ट कर रही थी कि स्माइल वाला ही करवाना, बाकी मत करवाना, इसमें अलग अलग रहती है। रेगा की बहन ने लेसिक वाला करवाया है, वो अलग रहता है। व्हाट इज 1 into 5? जी भाई, हाँ सर्जरी में स्माइल भी करते हैं, नो उसका फुल फॉर्म रहता है कुछ, मैं फुल फॉर्म भूल गई हूँ। अबे सारे क्वेश्चंस पूछने लग गए, व्हाट द फक यार। तुम लोग को पता है मुझे मैथ्स पढ़े कितने साल हो गए बाय द वे? रुको, मेरी 10th कब हुई थी? मेरी 10th हुई, नहीं 12th हुई थी मेरी, 2000 नहीं टू, अरे शिट भूल गई। 2013 में मेरी 11th हुई थी, मतलब 2013 में मेरी 10th ख़त्म हुई थी, हाँ। तो भाई 2023, 10 साल हो गए मुझे मैथ्स पढ़े, 10 साल। लेकिन वो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, उस टाइम मेरी ट्रिग्नोमेट्री इतनी स्ट्रांग थी ना कि बाकी बच्चे मुझसे पढ़ने आते थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछते होते थे। इजी क्वेश्चन, व्हाट इज 100 into 0? तो 0 ही होगा ना यार, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? 2 + 2 5 होते हैं क्या? हाँ भाई शुभम, होते हैं होते हैं, अगर तुमने थोड़े नशे किया तो होते हैं। ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट है। मुझे ना जब ट्रिग्नोमेट्री से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना, मेरा दिमाग घूम गया था कि ये क्या बकवास है, बट देन जब उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैंने समझा, तो आई वाज लाइक भाई ये तो सबसे ईजी है, तो सबसे बेस्ट है। मेरे को फिर बहुत मज़े आते थे, मतलब फिर हम मेरे ट्यूशन पे मैम ना क्वेश्चन देती थी ना ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो मुझे कम लगते थे, मैं सॉल्व करने के बाद बोलती थी मैम और दो, मज़ा आ रहा है। और जब साइंस की बात आती थी मैं सोचती थी क्यों पढ़ना पड़ रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे से कुछ नहीं होता था, बट मैथ्स मेरे को बहुत फन लगती थी। चैट पास द वाइब चेक, भाई सबके क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ गए भाई। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हुआ ये तो नहीं पढ़ा, 10 साल हो गए यार मैथ्स पढ़े, 10 साल, 10 साल। ये लाउड की टी शर्ट है कि DRX की? किसी की भी नहीं है। हाय शीला, आई मिस द स्ट्रीम सो मच। आ गया शुभम, देन आई एम बैक।
हो गया क्या? अरे 10-19 हो गए, शिट. Dangerous team. And for them, there's some history to this one. टाइम. अरे गाइस बस करो भाई, गलती हो गई भाई, गलत बोल दिया भाई. नहीं है भाई, मैच फेवरेट नहीं था. आई टेक माई वर्ड्स बैक, प्लीज फॉरगिव मी. आई डिड नॉट से एनीथिंग. शिरो बोलो इंग्लिश आता था भाई. इंग्लिश तो उसमें तो पढ़ना नहीं पड़ता था यार, पढ़ना कम पड़ता था उसमें. सिर्फ वो स्टोरीज वगैरह याद रखनी पड़ती थी क्या हुआ था. मॉर्टल को मिली रेडिएटर, जेरेफ को बैंशी, अमन रह गया एस के पीछे, उसके लिए बची बहली. हाँ, ये क्या पढ़ा है मैंने? लेकिन बहली तो है ही नहीं कोई. बहला डजंट हैव अ बहली गाइज. बार बार बेल क्यों बज रही है? मैच टेस्ट ले रहे सब. हाँ ना. फिजिक्स एवरीवन्स फेवरेट. नहीं, मुझे साइंस बिल्कुल पसंद नहीं थी यार. मम्मा मम्मा कहाँ है? बेल बज रही है, रुको मैं जाऊँ क्या? एक बार और बजी तो मैं जाती हूँ. मल्टीवर्स में होगी. वैसे तो मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता, बट ब्राज़ील भी सही ही है. एक काम करो शिरो, आप पूछने लगो अभी सब चैट से गायब हो जाएंगे. भाई मेरे दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं यार. मैं लिटरली भूल गई हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती थी. अमोल थैंक यू फॉर द 20. मुझे बस ट्रिग्नो याद है क्योंकि मुझे बहुत पसंद था. जब से ब्राज़ील पेनल्टी में हारा है तब से आज तक रो रहा हूँ. ओह शिट. डोंट क्राई, इट्स ओके, वी हैव टू मूव ऑन यू नो. मुझे भी वो जब याद आता है रोनाल्डो का रोता हुआ फेस, मुझे भी बुरा लगता है. दैट वॉज द सेकेंड टाइम कि मैंने उसको वैसा देखा. एक बार ना पहले एल क्लासिको में रोनाल्डो को इंजरी हो गई थी, तब भी वो रोया था. तब भी मुझे रोना आया था. वो बहुत पहले की बात है. 2016 शायद, 2015-16. हाय इंद्रजीत. शीरो कहाँ है? रोतलू नाल्डो है जी. शीरो एक क्वेश्चन है, 1+1=3 कैसे होते हैं? वो यश तुम ज़रा से वो हो ना, इसलिए होते हैं. ब्राज़ील की जर्सी क्यों? चलो बात नहीं करूँगा, ये कैसी बात है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ब्राज़ील की जर्सी से? गलती से होते हैं भाई, इतना भी नहीं आता. तो मैंने वही तो बोला. रियल मैड्रिड सपोर्टर पहले, अभी तो कुछ भी नहीं. आप इतना शरीफ क्यों? पता नहीं यार, ऐसे ही बनाया भगवान जी ने. हाय पत्ता, हाउ आर यू? Sherlock, Sherlock, इधर आओ Sherlock, इधर आओ Sherlock, इधर आओ Sherlock. थैंक यू फॉर द 9 मंथ शुभांशु. अरे अरे ध्रुव आया. हाय ध्रुव, हाउ आर यू? डिड यू वॉच पहले मूवी? शायद से यार, वो बहुत पहले आई थी क्या? लॉल, पहले पहले आई थी क्या? जर्सी कहाँ से ली थी ये मैंने मेरे भाई के कबर्ड से चुराई थी. सब चुराई क्या यार, उसने खुद ही दे दी. उसको पता है मेरे को जर्सीज पहनना बहुत पसंद है फुटबॉल के. फिर मैंने आज छोले भटूरे पेले. पेले हैं? एक्सक्यूज मी, व्हाट वर यू डूइंग टू द छोला भटूरा? मेरे को तो गलत बात है. इफ़ नॉट वॉच ग्रेट मूवी. ओके ओके ठीक है भाई, आज तो मैं इग्नोर ही हो रहा हूँ. नहीं तो नहीं तो नहीं तो. नो 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 नो.
लव फ्रॉम गुजरात, थैंक यू। हाय एस्ट्रो नूब। एस्ट्रो अपना नाम क्यों लिख रहे हो चैट में? क्या हो गया एस्ट्रो? खुद का नाम क्यों लिख रहे हो चैट में? आर यू ओके? 2 दिन बाद एग्जाम है और मूड की लगी पड़ी है। मूड की क्यों लगी पड़ी है? मतलब पढ़ाई करते वैसे तो वही होता ही है, उसको कुछ मतलब कर नहीं सकते, इट्स इनएविटेबल। अमंग अस गंगाधर नेम से खेलो, मजा आएगा। नहीं यार। हाँ, you are so cute, really. Oh, really? Really? What happened to Harmonica? She's on a break. Yeah. Hi, Swamini. तेरा नाम लिया? No. I think you should read that again. भाई ब्रीज देखने में कितना अच्छा लग रहा है। स्क्रीन चेंज करूँ क्या? हेलो। हेलो हेलो मिस्टर इलॉन हेलो मस्क। देख रही है क्या? या हाँ हाँ हेलो क्या यो देख रही तूने है? channel देखा इट इज बैक यूरो न्यूज़ 23 इज बैक हाँ, मेरे को सुबह सुबह नोटिफिकेशन आया वीडियो का कि यूरो न्यूज़ मेंशनड यू। मैंने कहा ये क्या है? 2 साल पुराने वीडियो का नोटिफिकेशन। तू सोच मतलब लिटरली सब कुछ री रिलीज हुआ है चैनल का अरे यो तू ये देख रही है क्या? तो बेसिकली इन गेम अभी एक ऐसा मोड होगा इन विच 5 फ्रेंड्स कैन एक्चुअली compete समझ रही है क्या? तो यू विल प्ले सम वीकली चैलेंजेस मतलब यू कैन मेक अ 5 stack एंड मेक इट इनटू अ टीम ठीक है एंड देन यू कैन compete वीकली समझ रही यू कैन कम्पीट वीकली एंड गो इनटू टूर्नामेंट्स और ये टूर्नामेंट्स का हायर लीग होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एंड टू चैलेंजर्स इटसेल्फ हाँ, ये इस साल के स्टार्टिंग में अनाउंस हुआ था ना ये। वही मैं अभी देख रहा मैं जानता नहीं था कि ये आया है प्रीमियर समथिंग प्रीमियर मोड ये मैंने कहीं तो ओ देखा भाई था, मैं भूल गई, बट उसके बाद फिर इसका कुछ देखने नहीं मिला मुझे गेम में, सो मुझे लगा पता नहीं क्या सीन है। वही मैं जानता भी नहीं था बट अभी मैंने देखा भाई ये तो चीज क्रेजी है हम्म। शीरो, मुझे फाइनल्स के लिए ब्राज़ील जाना पड़ेगा खेलने। मेरे को भाई मतलब ठीक है, आपको जाना है ना तो प्लीज़ प्ले फॉर DRX, ठीक है ना कोई भाई? बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऑल हो जाए। अरे हाँ, एंगेज स्टार्ट। अरे यार, ये कीबोर्ड बहुत दूर है, दूसरा वाला। हु विल विन? DR। अरे एक्स लाओ भाई साहब, एक्सरसाइज हो गया मेरा बस। सोचा लास्ट डे है तो शीरो को ऑल द बेस्ट लेके जाऊं, पर शीरो भाई बड़े लोग हैं। स्वामिनी, यू आर फैट शेमिंग मी, डोंट डू दैट। ऑल द बेस्ट स्वामिनी फॉर एग्जाम्स। जब मेरा स्ट्रीम शेड्यूल हुआ था तो मैंने तुम्हारे मैसेजेस देखे थे बाय द वे, बट इट्स ओके। स्ट्रीम नहीं देख पाओगे बट इट्स ओके। अपने आई होप तुम्हारी एग्ज़ाम एकदम मस्त जाए। FNC विल विन द टूर्नामेंट ज़रूर। FNC इज़ प्लेइंग टू गुड, वे टू गुड। शिरो, लाउड नाम की टीम का IGL बनने बोल रहे हैं, अच्छी टीम है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप गलत जा रहे हो, आपको DRX में जाना है बस, और कुछ नहीं, बाकी फिर देख लेंगे। DRX को वोट करो, आज से ही मेरी टीम है। हाँ ठीक है नकुल भाई, आपके ऑलवेज सपोर्ट में मचा देंगे, बहुत बढ़िया। हाय अभी।
right? They look very good through the bracket that they've come through. They seem like top 2 in the tournament. Hi, To be very honest, Siddharth. I think it would be quite frankly shocking if they don't make it to the finals. I mean, Doug, you might want to swap your pred. I don't know if you FNC want that तो jersey जीतने ही because I वाली haven't है, seen Seth DRX wearing भी it every जीतने single वाली day है. at हाँ hotel. यश, तुम Not सब sure if टीम it's को been जिता washed. दो. Probably like That's sleeps true. in it, Yeah. wakes up in it. Shows up to the arena. आसपास है तो हो गया. Actually shower in the jersey. Oh. I don't even I don't take know. it उस off. दिन रील में देखा I don't know if टाइपिंग it's इम्प्रूव another करने का source. Yeah, कुछ like a never nude. गेम Just है, वो right. ट्राई Love करना. love the plan. मुझे क्या करना है टाइपिंग You'll इम्प्रूव look great in करके. the jersey. The mustache will look great on the floor if you end up losing. I'm going to be happy मुझे तो either कोई way, नहीं I think, पता. when it नाइस comes to हेमंत. this series. I'm just hoping गैंग भी that कब after खेलोगे flying all पता this नहीं. way, we go the distance for me. I think that's really what it comes down Yeah, to as we yeah. move to the best of fives. ओ I really भाई wanna see चैट में this team DRX push सपोर्टर्स each other ज्यादा है. all the way. Yeah, and I do think that's exceptionally likely for this series and the one tomorrow. Really, Yes. and the one Saturday, be honest. All the matches from here on out. कौन They, है? they ought to be very, very competitive series. It feels like we have the 4 best teams that are left over, and it should make for a lot of fun. You agree with that? गाइस One of the कौन teams कह रहा you था feel like वाइपर we can 10:30 से definitively पहले say नहीं that आएगा, in लिख a के ले लो. single even bracket, we 10:29 पे आया है somehow वाइपर. found our way to like truly हैं Thought we किधर would हो have at तुम? least one team that upset their way काश out मैंने and कुछ then शर्त right लगाई there होती for यार, one. जीत I जाती think मैं. all these 4 Shit. teams really deserve their spots and are going to play such close matches today. I agree. I mean, I can hear the crowd. I'm ready to go. It's going to be exciting. How They're to dive getting into it. riled up, and they're getting riled up for good reason. Let's get this day started and kick लॉर्ड off आसपास the अकेले बस पूरा semifinals. It's डीआरेगा the भाई. लॉर्ड Americans बना दिया taking on भाई. the Pacific. Loud versus DRX. Best of 5. It's all on the line. We're here in São Paulo, Brazil for Lock in FNC Day is the only 13, team in and the it tournament so starts far who won all right their now. matches 2-0. पिन करना है क्या? आओ खेलते हैं गैंग बीस कर लिया सैटरडे. अभी तो नहीं यार, अभी 3 दिन ओनली वॉच पार्टी. उसके बाद उसके नेक्स्ट डे शायद मैं वैलोरेंट स्ट्रीम करूँगी वाईटी पे. मेरा अभी 3-4 दिन का तो प्लान सॉर्टेड है. Todo brasileiro que joga FPS é um sonho levantar um troféu muito importante. पिन में क्या डालना है? कुछ भी देखो. शॉर्ट्स चैनल का कर दो या 한 발자국 गुड आइडिया. 충분히 갈 수 있다는 자신 있고. गाइस शॉर्ट्स चैनल पे Only 2 teams in EMEA left. डेली शॉर्ट्स आते हैं. बीच में नहीं आए थे, वो एडिटर थोड़ा सा बीमार था. बाकी डेली आते हैं, सो मेक श्योर यू वॉच. हाय विजय, गुड नाइट. गुड नाइट. Navi. That's going to be a bit of a revenge match. सेकंड चैनल का डाल दो तानिश. I think they gather one of the best rosters in terms of individual skill. भाई ये लियो But we're pretty scared. लियो का गेमिंग फेस तुम लोग ने नोटिस किया है? एकदम भाई I'm still aiming for MVP. मतलब So we need पता नहीं सीरियस और इंटेंस लुक लगा मुझे उसका बहुत ज़्यादा. Respect where respect is due. बड़ा कूल लग रहा था वो. Server, only disrespect. कौन है एडिटर? पोजी चप्पल मारूं अगर वो नहीं करेंगे तो. A gente cresceu पोजी muito एडिटर nesse नहीं है, tempo de torneio. एडिटर कोई और है. पोजी संभालता है बट एडिटर बीमार था. तो यार बीमार हो कोई इंसान तो उसको तो भाई इट्स ओके. मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि मैं खुद इतने टाइम से भाई मैं बीमार थी. 홈그라운드여서 그런지 모르겠는데 일단은 정말 자신감이 넘치는 모습이었고 그리고 이제 뭐 소리 지를 때 땅이 흔들린다고. मेंबर्स गेम्स का याद दिलाना है. किसको याद दिलाना है? eu acho que nosso ponto forte é que a gente tem uma molecada muito jovem com sangue no olho, com muita vontade de ganhar. 그런 싸움에 저희가 주눅들지 않고 잘 이겨내면은 어렵지 않게 이길 수 있을 것 같습니다. ओके लक्ष्य, मुझे तो शो मैच का वेट है. हाँ 4th को होगा ना. बढ़िया है. बुरा लगा है पीआरएक्स और सेकंड हारने का क्योंकि पीआरएक्स का फैन हूँ ना. ओ यार E Brasil está पता नहीं यार वो लोग ने बट अच्छा नहीं खेला. मैं खुद पीआरएक्स की फैन हूँ. Guys, let's have some fun. Do you think Sentinels were overhyped? Sentinels have always been overhyped since the beginning. I never supported Sentinels या कभी उनका गेम फॉलो मैंने कभी नहीं किया.
एक्चुअली मैंने एनए की कोई टीम का कभी इतना देखा नहीं एक्सेप्ट 100 थीव्स। 100 थीव्स जब से हीको था तब से मेरे को बहुत पसंद थी 100 थीव्स पहले। बट आई फॉलो मोर EMEA टीम्स। एनए के व्हाट्स अप लेट्स गो चालू रहे। फाइनल मेल भी आ गया ऑफ चैनल बैक जीजी। ओह लेट्स गो। ये क्या बच्चे लेके आ रहा है? अच्छा नहीं आसपास भाई ये मैंने ब्राजील का जर्सी पहना है पता है क्योंकि लाउड का तो है नहीं। फेयर ब्राजील फेयर अच्छा ऑप्शन नहीं था। क्या मस्त म्यूजिक है ना? हाँ ना मस्त है। साथ में बोले वही ऐसा वाइब करने मन कर जाता है इनका इतना अच्छा होता है हर बार। इसी ऐसा एक क्वेश्चन म्यूजिक था ठीक है। उस दिन कोई तो अचानक बोला था भाई यार ये कैसे म्यूजिक मुर्गी मुर्गी म्यूजिक मतलब पागल है क्या तू वाइब नहीं करता जिंदगी में? काम का क्लासिक सुन। आसपास लाउड इज द विन DRX फॉर द विन। अरे देखो लेस तूने मिमी को सुना? मिमी ने क्या बोला? लाउड था ठीक है चला वो भाई उसको देखो बे ये क्या बन के बैठा है? यो ग्रीन गॉब्लिन। ये जो सासी एंड फैनकाडा के रिप्लेसमेंट में जो आए थे ना हाँ ये तो बंदे सही है वैसे। कौन दो थे वो? दैट इज क्योंकि लेस और सदाक तो पहले से थे तो बाकी दो ही होंगे। हां वो बाकी तो क्योंकि बाकी दो ही मेरे को नहीं आता। एक है ट्विज। हाँ बाकी दो का ही मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। या संभाले सही वैसे ओ भाई होम क्राउड देखो। क्वाजिन कुछ ऐसा नाम है ना? हाँ वो क्वाजान इनिशिएटर खेलता है। क्वांस इनके नाम ही थोड़े ऐसे होते हैं। लाउड की जर्सी बेटर है। वेल हाँ ये थोड़ा स्कूल जर्सी। हाँ उनका थोड़ा है सब बच्चे और लग रहे हैं बैंक स्पॉन्सर्ड है। हाय सुरबार जी थैंक यू फॉर पुटिंग 100 की फेमस फॉर सुना। यार हीको भी था यार पहले। हीको मैं एक्चुअली हीको की वजह से देखने लगी थी पहले। I used to watch हीको a lot at one point। चैट में बोल जब मैंने वालों खेलना चालू किया। DRX कोरिया से मैं गलत नहीं हूँ ना इसमें? DRX की मेरे को मतलब इतना पता है पैसिफिक की है बट वो नहीं पता एकदम कि कहाँ से। नेपाल को नहीं है ब्रो। नेपाल से तो कहाँ से हो गया यार? वही बट कहाँ की है वो नहीं पता। देखूं क्या? रुको tournament. They both head back to their permits, and the first pick for Loud is Korean. Korean. ठीक ही बोला था। And it's looked And it great changed on the their other only loss overtime to NRG. Yeah, so no surprise that Pro comes in for them. अबे यार माइक तक क्या इशू मेरे समझ नहीं आ रहा। कल भी हो रहा था आज भी हो रहा है। आ गया। Now for the side of DRX again, Achilles, we kind of talked about how they've already had to show 5 maps. बॉल में DRX अपने आप को माइक ये हो जाता है बे। नशा हो जाता है best options against Loud. I mean, they do the icebox that has been a bit of a staple for them here at this tournament, but they did. अरे क्या हाल है ब्रो? भूल गए क्या? अरे विनायक भाई क्या हाल है? Some new strategies going over to that map. Was it going to be more of the लोटस same? हेवन नहीं अच्छा हुआ एक तरफ से। बढ़िया हेवन ठीक है लोटस मुझे हेवन but historically if you go हेवन से क्या डिप्रेशन है मोनिका? वैसे हाँ मुझे खेलना नहीं है तो चलेगा। देखना है यार खेलने में डिप्रेशन होता है मुझे। बढ़िया लग रहा है इसीलिए लाउड। भाई आसपास देखोगे तुम पागल हो जाओगे। जो भी है चैट में इंग्लिश साउंड है वाइपर का तो बढ़िया साउंड आ रहा है। मेरे कान गूंज रहे इससे। और क्या? अरे नहीं वो बीच में मेरा माइक बंद हो गया था ना। वो बंद हो गया था मतलब बंद भी नहीं कल जैसे अपने आप वो हो गया पता नहीं। वो आउटपुट इनपुट चलना बंद हो गया। नहीं चलना बंद हो गया। अच्छा ये लोग कह रहे हैं DRX PUBG वाली नेपाल से। लॉल हाँ वही मैं बोल रहा था। DRX अरे यार
I think Oh this my map God, does problem not है। favor DRX, to be honest, and I think it's because of what you नहीं mentioned. मुझे पता नहीं था ऐसा कोई Maybe टीम making a थी change here. Arby is picked into the sky, Stacks is picked into the harbor. Okay. They are Hello, trying to guys. cook something up here. Previously, they were just playing off these executes with Buzz, with tons of initiator utility, with the Sova. Now they've made There a are players के नाम माँ बहन करना start कर दिया already. brought them prepared. And this is going to give us a fair amount देखो on जरा either सा side, काम ही so हुई it's है. all going to come down मैंने to क्या the better गलत बोला? strategies and who is going to be able to pilot this बोला होगा competition एक का नाम है to success. क्वांस, I mean, एक what का are नाम we है talking about? ट्यूज One of the big things for खत्म, यही DRX खत्म. in holding ना, their twist, roster twist, together twist. will नहीं, खत्म, save them खत्म. time to Twist नाम है come उसका. up with a strategy. Twist, Save twist. enough TUI to Z take को the कैसे first series pronounce or win the करेंगे? first match Twist. in our best of 5. Twist With क्यों that, it's time does for अबे ये- Z तो silent होगा. Here's Brett. Silent क्यों होगा? हाँ टू ही होगा ना उसका नाम टू ही टुई होगा What the fuck? ट्वी पे दूँ. अबे टुई ये तो पंजाबी हाँ कुछ भी बोल सकते हैं साइलेंट बोलता है क्या सपोर्ट है भाई फैंस का अरे क्योंकि पूरा ब्राजील में ही है तो पूरा उनका ही है ऑडियंस वैसे जैकेट बढ़िया है ब्रो But is that rematch that we witnessed from champs मैप last बना हुआ है And at पूरा Champions, you heard some of the same stories from the desk. DRX are probably the favourites. Loud are the underdogs coming into it. आर्टिस्ट रिएक्शन सीधा ही नहीं देखा नहीं बट आर्टिस्ट बहुत फनी इंसान है That भाई embarrassed DRX. क्या है ऐसा देखूंगी मैं टू ही तो वो होता है वही तो बोल रहे हैं वाइपर Well, तेरी they टू ही vanquished तो those मार demons. Top 3 at champs. आजा. Top 4 guaranteed here at Send Lock this in player June. on Kawan Jin, Poster. Kawan The Jin. journey from title contender First to round. trophy lifter Let's could be an go. Of the arduous one. first match. भाई वो 4 से पुश कर रहे And they're हैं here to Wow. fight for revenge and redemption. ये attitude पिंच चाहिए. कर रहे And Loud an हैं साइड पे छोड़ opportunity देंगे for them इंस्टेंटली मतलब to get बी one step रीटेक 4 closer to फ्रैंक potentially ओ claiming माय that back-to-back trophy, something that nobody has ever done. मरा. in यार भी VCT slow आ रहे हैं history. main से. ऐसे कैसे चलेगा बस भाई. Buzz up top. ऐसे ही होगा बस भाई सही कर रहे हो That he shut ऐसा down. करेगा. Sadak was aware of it. मतलब जीतोगे ऐसे भी No बट ऐसे clash मत from मारो RB there to try and help him taking that duel up top. It's a fairly common position that Sadak's played before in the past. Remember him dueling Navera Let's from go that as spot. fast. See how अरे the battle खुद का goes नहीं on the तोड़ पा flank रहा though. बाबा. Fast flank. हो गया And पैनिक हो Zestin गया. has his work cut out for him तो right now. dodge Being करेगा ना, swamped कुत्ता and वाज. swarmed. There's 4 players now waiting to पैनिक match क्लियर. him. ओए Flash. दिया. Into connection. तो कुत्ते को नहीं Wall's मारूंगा. gonna do a What the fuck? decent amount of अच्छा chip मारा. damage बंदा there. उड़ाऊंगा. Decaying down, making it कुत्ते ever पे so विश बंदे पे slightly बनता हो है गया. still. Holding Okay, it let's go. down and Zest is dealt with. अबे ऊपर चढ़ के लोग मार कौन के सी ले ले. Down, क्या नाम चल है गया जब उसका सब The flank है. reposition is there, but it's push not करना easy planted नहीं है for ना them, and they सब still have to deal with Sadak from the high ground. Walls on walls, obfuscating अरे this. बच्चे देख लो. An attack on the Hello? spike running forwards. मार दिया Reloading the पीछे clip, से. ties ठीक है, down ठीक है, the ठीक road. है. लेट्स गो अबे झूले में घुस के मार के लेट्स कल्टी ले लिया गो बे वो. लेट्स गो हाँ हाँ Attitude. ओ भाई बाइंड क्यों नहीं खेलते बाइंड इज Pistol नॉट इन round द that मैप sends पूल the place एनीमोर into uproar here. Loud have been so good on pistols. All of these top 4 teams have them. दोनों ने हार We कर truly लिया do इस पे have तो रहता ही the है creme de la creme playing Quality. in the semis for बहुत Lock-in. टीम्स लेते But हैं Loud have been so क्या impressive, Loud- picking up their तो coach that underdogs focus बोला. super heavily दोनों on का किसने सेम बोला? लाइन पागल है हो in क्या? the champs. And you can see ओ भाई that हाँ भाई, even थोड़ा though देख नहीं रहा था DRX उसको हर थोड़ा सा. साल their VCT competition खेलते play हैं a mirror underdogs match in है this भाई game. Still, those B post एक plants बार जीत causing भी a लिया problem तब for भी DRX. underdog है. हाँ क्या हो ठीक. गया? It ruined them in the game against Cloud9 ऊपर and led लेना to पड़ेगा a इसको. massive failure on Pearl. ओ वाओ It's one thing being able to just pick भाई this up, सड़क it's स्मोक another थ्रू thing मार रहा है it's पागल है के मैं पीछे चल सड़क. Don't strike हाँ, early with सड़क. another first death on सड़क the सड़क Not one that he could have सादा particularly के वो. avoided though. सड़क सड़क Not quite. Still मैं भी being पहले beaten सड़क down, ही and this is बोलती a थी Loud squad that You're throughout their run are locking not in a that field. अपने को उसको Funny सपोर्ट names करना है. यार, अपने को आसपास. वैलोरेंट को passionate सपोर्ट plays. करने का. Sometimes a bit of overheating. I won't lie. लाउड loud लाउड underdogs. लाउड को करो Possibly the लाउड crowd playing a part in that. Gets the excitement going, gets the blood ये pumping. but ऑडियंस का सब पब्लिक हम सब ने कौन दिया सी? है ये कौन सा बोल दिया इसका नाम ऐसा लगता है कोई prepared for this, डेजर्ट alive है aside. ए वो क्या कर See रही if है? को Loud फ्रैगिंग can करके. temper some of that फ्रेंच fiery passion. डेजर्ट अबे राइट देख ले भाई लेस Aye. ठीक है भाई Surely he doesn't get a chance at this one. लॉल अरे लॉल लॉल अबे इतना भी अबे पागल है क्या बाड़ा खाओ. एक किल मिल रहा है ले लेना. Could be a big Trigger ultimate, control especially when करके Loud are going to be भी. playing retake B most of the time. क्या ही Sadak किया playing in पागल आदमी those है भाई. back एक मस्त positions, बंदा है anchoring the site. पूरा बॉडी पेंट करके Sadak has been a weakness on the इसलिए उसको defensive बोल रहा था side. ब्रो वीसीटी का Felt क्या like मना when Loud played मैं against आईपीएल another. वाला है क्या I mean, do you remember हो that game, सकता है. Brent? Feels like forever ago at this point. But what a game DRX it was. currently tied And with the on highest Pearl, placement. NRG seemed like they had a heavy दोनों का focus same on mirror putting line pressure है B long हाँ and trying to punish Sadak. See what game plans Sim to DRX have sim. cooked up in the last 10 days.
There's going to be a lot of importance placed on this one. Loud, Loud obviously, with the bonus round. लग तो नहीं रहा है भाई. Weaponry's a Like bit underdog. weaker. Flash play through the wall, अब trying to जीत के take आए the लोग. fight. Zest holding it down, will not be भाई able to Good one, good one. थोड़ी खेलते Good हैं one. instant response. It's ऐसी going to hand the बातें हैं. rifle over to the hands of one of the Loud players. And an immediate pivot here, called from Stacks.
taking the rest of his team through to be long. And here's where pressure starts to be applied to Sadak. What's his choice? With Kawanzin falling, those seekers that I mentioned in the prior round are nowhere near. Obviously. But आज शायद थोड़ा लंबा नहीं होगा क्योंकि कल क्या दिन में शूट है. In the moment still, Kove's going to go down. Should ऊपर have ऐसे that smoke safe क्यों नहीं plan for करते हैं? Stacks. ऊपर You can see there was a मतलब nanosword अच्छा that तो was smoke किया laid down उसने. earlier. पूरा काटा है. Just trying to predict where the plant location might be to push them back, but वो basically Viper का is like post plant usage, Harbor का entry usage It's a 4v4 with better weaponry. तो दो controller But ऐसे look use how कर far रहे back some of their एक का players wall are down फिर always दूसरे का positioned. Stacks ये are देखना cannot पहले help these guys on उसका site. गया वाइपर का so far वाला back. Now that पूरा. that wall goes up, it's going to make it ever so slightly more difficult. Buzz claims the one. पर डिप्रेशन है बे कितना स्मोक से ही पूरा साइड Still कवर्ड है. active, still around, and he's going to be that final layer to this fight right now. And what Yeah, timing can he Hall take? shake नहीं तो हुआ. अब भी बैठा है देखना. Anybody going to be watching this smoke snake bite though buys them a bit of time. 2 years taken अवेयर out थे फिर भी. as the time chips down. By round ठीक है. It's a deafening gloom enters the arena, the crowd. No more noise going to be made. इसने एक को तो डिंग मारा उस. ओए. ओह भाई Oh, साहब. खा गया बे यार That's a big पार. one. And I think Loud have got some learning moments No. from that round for sure. They've looked at the VODs clearly of बढ़िया DRX, and they Hydra. know that a lot of people are going to be playing off-site. DRX's post Like plans on the on B, defense hub on they the have a attack. couple of मतलब players yeah. pillar, a couple of players all the way back towards the Even round में ult. भी They like to दोनों play का off वो the है. site. Use it. And Loud assumed too much If there. DRX win Looking at the Pacific VODs region and की next to didn't starting actually match clear the थी site. या. Sadak ran forwards, instant Hi, play to Rhythm. Buzz, and He RB was is never best cleared, in never the world noticed in in fact. stats. They were just happy to wall it off, I think. So as Loud Hi, go into their Shitty, B how are post you? plans, their B retakes, they're वही going बंदा to have to put a आसपास को bit more पास बोला. attention and not just assume everyone's playing for those spam angles. The Euro Cascade news को pushing बोलो back name that change one करें. angle. There was a flash as well prior. Buys them that kind of space that they तो were उसको looking अब for नया there. नाम And हो an गया alarm उसका bot, नामकरण so हो गया. really I just think he making likes sure it. they layer down that utility, making एकदम it चुप-चाप quite खेल रहे difficult. Stacks gets his ult on. Position अच्छा क्या ये लोग भी Good one मरने for के बाद pushing अमन की B. तरह माइक स्पैम करते होंगे. Honestly, it's pretty good for both sides. But फिर it seems to सिर्फ be like they're IGL. going to be running into Aspas here. Aspas could be IGL को तो करना पड़ेगा the ना. difference maker. उसको off Operator देखनी है in बस. his hands. Give him that sight line, give पर him ये a लोग chance, शायद and he'll डिस्कशन make the सारा most of it. मैच के बाद के लिए रखते होंगे. नेक्स्ट राउंड का प्लान अगला पहले करते With this होंगे. new setup and Oh, हाँ new गलतियाँ frontal डिस्कस तो नहीं करते. देख रहे हैं कि ऑफ है कि नहीं. and it's going to stop Aspas from having an But idea. अब कैसे Cascade will करेगा? follow as well. मार दे Takes an अंदर. early अरे peek, an दे दे aggressive सही one. देख रहा है. Activates the dash, the reckoning though, that is Uh-oh. definitely going to be fast. Aspas. Let's go. An easy one handed to Aspas, an opening. It's going to be good Plan for Loud. We'll see बहुत how they easy play है, this बस वही retake उसके though बाद now. ability Once देखना more, है. post plant positions, the back of ये halls. बैक हॉल कंट्रोल लेना पड़ेगा. We held by लॉन्ग तो सिर्फ DRX, a bit of ओके आर भी raw मार दिया spam there पर्सन. from the Phantoms. Equal Reload, हो top up the गया. clips once more. Still a couple of bullets left waiting for them. Snake Yeah, bite though. That's the अरे. supplemented. Being Ah. squeezed and the timing just not good. अब वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे Yeah, स्पीड के yeah, लिए. yeah. Follow that up. Cove dropped down, bursted down. Oh, The boy. swing from अरे Leslie. Here's the इलेस और reload. सारा दोनों ने whiff किया. हेलो. What is दोनों that ने from whiff किया. Stacks? He's mid-reload there getting pushed. सेव करो ऑफ सेव एक करो बार भाई. हेलो मॉडल की तरह हेलो रिदम रिदम थैंक यू फॉर द 4.99. कैसे बोलते हैं मैं तो भूल ही गई इतने दिन हो गए. थैंक यू. उसको स्पेक्टेट करेंगे मैं उसके ऐसे सपोर्ट. बोलते हैं. बात कीजिए. भाई हेलो मॉडल बोले बहुत दिन हो गए. अच्छा शॉट मारा उसके सपोर्ट में. ये आगा शॉट देख के शीरो ए में आ गया. एक्सक्यूज उसको सपोर्ट में. Excuse me. Helping fend off the Loud players. यार ये दोनों whiff किए यार. But I'm still, it Sadak still और looks Les दोनों dangerous whiff to me. कर दिए. When you look at how RB's अच्छा position मेरे को right भी. there with Stacks, they're isolated. यहाँ पे लेस आगा थोड़ा सा ना. ये देखे दे दे. Loud should थोड़ा be सा able नहीं to पूरा fight सा these आगा guys उसके सामने reload 4 करके or मारेगा. 5 versus 2. दोनों ने whiff किया सादक And और take लेस. two separate retake fights में. where they're favored in both. और इतने बड़े-बड़े प्लेयर जब हग सकते हैं तो हम तो हग ही सकते DRX हैं. players are holding on हाँ so वो strongly. लीगल राइट हो जाता है इजी. अबे Could be the gravity of the situation. याद रख देखो जेरेफ कैसा बॉटम रैक करेगा. Arena in 3 किल लेके. uproar, of course. अबे बेशरम है क्या थोड़ा सा. Motivation लेके. Said, you know, listen, we got some कल young 3 guys मैच है on this एमवीपी team. बनाओ. बीटीएस में जंपिंग की चालू. Sometimes that ऐसे. kind of passion, it bleeds into moments like that where they just have a little bit of a misstep. They don't play like they have been in practice. People don't mention it very often, but the crowd absolutely can be a double-edged sword. Bait you into Hello, being bye. greedy and going for one अरे. more. ब्रो क्यों अरे शरीफ मार रहा है अंदर. लाइन आ अरे रही है. The sound यार. itself isolating. क्या कर रहे हो यार.
क्या कर रहे हो ब्रो सरक भाई? ये इसका ऑफ जाने वाला है मेरे फील आ रही है। नकुल भाई ये कर लो आप। जाने वाली वो जाने। बस दिल खुश हो गया, सही बोला था क्या मैंने? थैंक यू रिदम फॉर टूर में आ गया रे। ट्राई तो करना पड़ेगा थोड़ा। जरा से करता वालों दर। Oh my god. क्या नाचे दोनों भाई। Maybe with a rifle in a couple of the hands of them, but RB still locking down the angle still. बोला ना ऑफ गया उसका। And Lauda got a Go real round था। It's okay. तो राउंड में वही कमिट नहीं किया वो ऑफ लेके वो सेव ही कर लेता है राउंड में। You would expect. हाँ मैं बैठ के सबको हेलो हेलो बोलती रहूँ अब। Dances, he dodges. गाइस मैच देखो चुपचाप। I think Aspas को ऑफ करने के लॉन्गेस्ट लिए स्ट्रीम हो गया 10 hours। लॉन्गेस्ट तो नहीं मतलब आजकल तो रोज ही 10 hours Timeout होता है। now called then, as Fraud, the Whom man we are you were mentioning in the supporting, coach's loud. seat, Bren, gets his chance to फुल talk. डांस किए हाँ to बे। the players on Loud, पूरा and भरतनाट्यम I'm दिया दोनों definitely स्काई ने। seeing some ओए nerves करके। early on from the Loud guys. I would agree. I think they're not going through their protocols of retake very well, and I think also the gap between the player that's furthest forward and the second or third player. अरे तो सेम सेम टू सेम। Bit of miscommunication in the Same to ranks, same किया perhaps. तुमने भी? मैंने वही तो Yeah. पहनी है ब्राजील की। And all of this with Buzz having 4 first deaths. So, मेरे को know, लगा Why ये not booster है। supporting getting the sex? openings, Yeah? but they aren't. Sorry, 3 first deaths. Let me correct myself there. But they're certainly getting the आजकल openings. प्रोफेशनल स्ट्रीमर है यस। And they're putting बचपन से DRX भी। into uncomfortable spots, and then they're not. Challenge able to complete have हुआ that. नहीं कैसे भाई। लिखा वो? 3 wins in a row वाला कंप्लीट हुआ। Winning. Inside of this look like they've पर been in this 13-4 spot वाला चाहिए before. था ना। एक हमारा Wow, 13-3 what विन a हुआ, 2 difference that is 13-5 विन हुए, compared to the 13-4 नहीं DRX हुआ of कल। old, where we would see them at this point in the tournament, and you just knew in your bones Yeah, that he's Crumble was coming. No more. No, this is a different DRX squad. तुम्हारा बात सुन। They've been tested. Legendary words by twice Viper. in many of these global events भूत now. मारी के अमन Most चुप हो जा। recently in these months as well, having a bit of that वो breakthrough. एक ही मंत्र है ब्रो उसको चुप कराने का। उसको एक ही मंत्र है बे सही में। Time and time again. This time they're aiming for grander sights in this match. Opportunity, a chance to really Works every carve their time. name out Works in like a VCT charm. history and potentially claim You that should try trophy. it. Obviously, still one more match before that, and you might be getting ahead of ourselves as this is the beginning of the series. A flash play. Yo. Doesn't get too much info actually. Doesn't Okay, spot ये और anything. भी आया क्या? Ducking Please down, आसपास that's हगना back मत। up. But ये वाला backing पोजीशन away. बहुत ऑफनली होल्ड होता है। There's a lot to try and fake. तो हमारा रैंक में होल्ड हो Forcing, जाता but है Vasquez यहाँ पे is किया pushed गया। up. समझ जाएंगे वो लोग He भी। doesn't have the dash active. This is such a risky play. Could be anyone meeting him. सही बात है। मारना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा। The flash from Cowanzine. एक्टिंग अच्छा था मॉर्टल वाले वीडियो में। थैंक यू भाई। प्रोफेशनल एक्टर भी। A safe मेरे position. को दूर से इसने मारा सीकर्स। They're really quite far back there. Looking for some sort of indication. टॉक्सिक that they could वाइपर be इन pushed रेबेल व्लॉग। deep, and Aspas, भाई वो well, he has to टॉक्सिक रहेगा respect का मैसेज that. He तुमने does ध्यान back से away देखा from नहीं? the angle, and this is the time to शुरू strike कहाँ से now हुआ है? for DRX. Okay. Here comes the I see, utility, going for the racketing fight. up close. Dash has to be नहीं used कर to सकता disengage है। from Aspas. Easy Still, नहीं the है। second layer of util is there. Snake bite, flash, पूरा and pushing forwards. Very tough. Ball's going to be gained. And now there's a counter play. Oh. Seekers and A nice one, Aspas. pound for pound. The ultimates are used. Bro, दिया भाई अपने थूक में मर गया मार वो। कसम घुस गया। Lessons of going down to his own snake bite. ये तो अमन जैसा वाइपर हो गया रे बाबा। Close. Someone has to break this. No तुम one's देख रहे हो वो on the लॉकडाउन spike. तोड़ नहीं It's सकते getting वहाँ a से? bit panicky. बढ़िया लॉकडाउन है यार। दो प्लेयर लॉकडाउन। Is the plague being made? 2 detained leaves it down to a 2v2 Time here. problem. And suddenly Good round. DRX might have saved themselves. It's looking dangerous. Time running low. Hard to tell when the इनके पास वो crowd नहीं, is casket नहीं cheering है। and chanting. कास्केट It's से a भी टूट maelstrom of गई emotion right now up Defuse top. हो रहा बाप, हो Close गया। and Let's personal, go. but eventually Defuse हो ना? it is claimed. Let's go. Even scoreline for Loud, Meow. 3-3. कल आधे आधा मैच ओटी गए थे। अरे भाई डिप्रेशन हो गया भाई कल ओटी कर करके भाई कल सारा एनर्जी निकल गया। But there's a couple of important things to point इतना out there. भाई First of मतलब all, और huge ओटी amount भी of ऐसा नहीं कि ultimates being 12 used in that round. 14-12 खत्म हो जाए भाई Starting 21-19 with अरे stats, भाई। he's और already up to पागल है his 2 मैच second खत्म हो जाते reckoning 21-19 of में। the map so far. मत बता यार After कल फिर 17 राउंड मैं आज बहुत चार्ज्ड अप होके आया हूँ कि आज अच्छे That's मैचेस absurd, and होंगे। it's not just because he's been मेरे को getting तो कल के kills, डिप्रेशन dying a में मैं हूँ lot. अभी भी। He's also farming ult orbs, and that seems to be a key part of their strategy. Oh. Similar to ओ the way ऐसे से एक मारा था तब जाके मारा। do Loud हाँ, realize and Loud तीन adjust. मारा वो The लोगों second ने। layer to that too is that Loud actually found those picks beforehand, Oh and they're going भाई aggressive. क्रिस। Yeah, there was a flash ब्रो around ये the corner, but फ्लैश नहीं था। there was a slightly delayed with it. ना ना Fantastic opening for उसकी Aspas. स्काई नहीं फ्लैश जाता ना तो वो घूम गया था। Activate his dash, of course, that's going to be अच्छा। fading away हाँ। in good time. And he's certainly getting the better end of Buzz Side here. से पूरा While it नहीं looks होते like ना team flash। nerves from Loud, Buzz is the one that's out of sync with the rest of his team on DRX.
Going down as the first pick. ग्रुप पे डाला है वैसे गाइस जो जो भी वॉच पार्टी कर रहे हैं हमने वर्ल्ड स्टेजेस पे ज्यादा फैंटम क्यों यूज होती है? अरे गाइस प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। अभी देख लो क्या है इस पूरी टीम में 3 लोग वैंडल चला रहे हैं अभी। इधर 3 फैंटम है तो वो प्लेयर टू प्लेयर है, ऐसा कुछ वो नहीं है सीन। पूरा प्लेयर टू प्लेयर है, किसको किस पे कंफर्टेबल है। ऑल्सो उनके दिमाग में रहता होगा कि अभी हमें क्या कैसा फाइट लेना है, वो स्ट्रैट के अकॉर्डिंग कहाँ पुश करने जा रहे हैं। भाई कैसा है क्राउड भाई इसको मार दे सारा प्लीज, प्लीज मार दे। टफ लिखा है वाइपर डिप भी हो गया, जेट डिप भी हुआ है, सारे डिप हो जाओ। Fantastic slow round here from DRX. चलो ठीक है, ये एक मारा कॉजन मारा बैलेंस हुआ। यो 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 ये एक चप्पू है, लो है वो। Aspas was on the flank. Yep. But Aspas is alone. Only the knives to work with. There's going to be पूरा सोच उसको लग जाता स्मोक के थ्रू। एक दिन आसपास ने एक चप्पू ही मारा था, पता है, बहुत क्रेजी मारा था। The tap of it forces the fight, forces a peak. RB goes down, but it is Leo, still Leo. running low, and now Fight, finally Leo. getting on top of it. Yeah, nice trade, nice trade. साइड घूम क्यों गया? Right round the corner. अरे ये क्या कर रहा है सादा? कैसा मार रहा? डिफ्यूज हो गया भाई, डिफ्यूज हो गया। तो डिफ्यूज हो गया भाई, लेकिन डिफ्यूज हो गया भाई सादा का थोड़ा लॉस्ट लग रहा है थोड़ा ये। हाँ तो उसको कॉल का इश्यू होगा, मेरे को लग रहा है वो कोई बैक साइड बोला होगा, पीछे देखने चले गया वो। Loud has what matters. The 4th round on the board. पीछे अरे पीछे एक सीटी पे हार्बर मरा ना, वो कॉल दिया होगा सीटी है। जेट आगे मेन पे लड़ा, वो बोला मैंने आगे दे गेड़े हौले, तब जाके मैंने आगे देखा। The economy has been kept honest though. और मर्सी afford an operator, but it's only a spectre for less. कैसा है? Lester's the vast शीरो majority आसपास of तो कैश वेस्ट तू न जाने आसपास है खुदा। सही बात है, आसपास है खुदा गॉड। Look at Stacks again here. He's one away from his YouTube अभी वो आ गया है थोड़ा सा। अमन हाँ पे अमन वाला कॉल दिया होगा सीटी पे बंदा, सीटी लाइफ इज शॉर्ट। And I think also Stacks could start using these वाइपर को in कोई the सर्वर post-round म्यूट to दिया। stop the retake happening. Because Loud are giving them a lot of space around the map there. बोल तो रहा है। मैंने दिया। And even in prior rounds too, they were getting onto site fairly easily. क्या मैं आवाज नहीं आ रही? तेरा पर्सनल प्रॉब्लम है भाई वो। कौन सा मैच? Strike is प्रॉब्लम है। Lester has to try and stop ओ this. भाई ब्रो लेट्स गोली मार देना। No, he's into the side. Oh nice one लेट्स। Nanoswarm to their feet. Another अरे snake यार। bite placed down. But Stacks चलो with full ठीक है, उसने अपना काम तो किया। barrels his way through onto the site. अल्ट मार दी भाई। Post plant Viper's pick going to be difficult to deal with. क्या अल्टर है बाबा ये? Does not have his हाँ बढ़िया अल्टर trailblazer. है। No पूरा खाया information, है। abilities whatsoever. They've just got to walk inside. ऊपर चल फ्यूज मार दिया तो। और नाइस वन इसको मार ये मार का तो मारो मार इसको मार इसको आसपास आराम से नाइस वन वेरी गुड क्या हुआ DRX वाले कहां गए सिचुएशन यो Loud. Drops the cove. तो मैं DRX करो। अरे कौन सा नशा है मर्सी हमेशा ऑपोजिट को करता है, जिसको हम करते हैं उसका उल्टा बोलता है। हां हमेशा। और मेरे साथ तो करेगा ही मर्सी। Let's go DRX. अरे हाउला DRX। And now it's DRX on the ये back मतलब line. ऐसा कोई खा रहा है ऐसा कैसा नो हेट क्योंकि अपने रीजन के यार बट स्टिल I think the game plan is actually perfect from DRX. हां मतलब ऐसा They're कोई farming बात all tops नहीं है correctly. मतलब They're getting into good post यार plants. वो होता है ना। I mean, in तुम that तो ठहरे परदेसी। they have ओ भाई ये भारत अलग पंप है मेरे कोच। Everything should be favored towards them. टाइम आउट हो गया DRX का। हो गया भाई डिप्रेशन में Inside the Viper ult. वाचिंग अ स्ट्रीम वायलेंट ट्रेन अभी जाकर नेटवर्क आया। मर्सी जॉर्ज DRX लेट्स गो सब डूबने वाले हो Permission to ban सुन रहे हो सब डूबने वाले हो कौन DRX को सपोर्ट पहली बार सब डूबने वाले मेरे को हो कुछ लेजिट फनी लगा। मेरे चैट में ये तो अच्छा बोला। लाउड आसपास इज गॉड कोई ब्रो। भी जीते हमें क्या 45%। अलग ही चीज मैं DRX को ही सपोर्ट करता था। हाँ तो भाई सबको एवरीबॉडी हैज फेवरेट टीम। अभी कुछ लोग चैट में कह रहे हैं कि पैसे का स्लॉट मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा यार, बट हमारी फेवरेट लाउड है। Through a 9-3 lead on the first map.
स्लॉट मिलेगा ही, कोई हेट थोड़ी कर रहे हैं हम DRX को। DRX OP टीम है भाई, बहुत अच्छा खेल रहा है। Pretty poorly when they ended up choking at champs. He's currently DRX 2 वाला attacking map पे attack नहीं कर पा रहे। 5 first deaths out of 8 rounds played. That's भाई quite जेट का टीम देखो ना, जेट के भरोसे छोड़ देता है। तो इसी वाला उसका ओपनिंग बड़ा स्ट्रांग है ना, नहीं इसलिए उसको बहुत वो देते हैं रिस्पांसिबिलिटी। Needs to adjust his tempo based on the opponent. केजे के दर से ये जा ही नहीं रहे। एक बार दो बार गए, दो बार शायद फेल किया ना एग्जीक्यूशन। फट्टू है ना। Getting a bit of space there into Art. क्या रे फट रहा है? नहीं, दो बार मिल गया था उनको ये। सादक मरे जा रहा था। उसने मरा ना? सादक पता नहीं मरे जा रहा था। हाँ। Post plan the operator, so that's going to be giving them constant peace of mind. This round is Hey Musketeers, welcome. One away from getting eco'd. DRX जेट की जुड़ान देगी पागल। To a terrible first half after अमन ने what आज they'd ब्रेक लिया accomplished गया early on. क्योंकि कल वो I mean, they जो 1 pump सेकंड a में little bit of the डिफ्यूज करने util का there ट्राई किया into था। Art, but they don't break that alarm bot. They don't do the आज job जो तोड़ने का ट्राई किया था केजे। Yeah, really fully there. उसके बाद Just उसको allowed less the peace of mind once more to rotate over here to help them out. Yeah, Reinforcements. Peace of mind is absolutely the correct term to use. Fnatic का Can कल है, commit so हाँ many कल होगा। players to be a preemptive Viper's Pit as well. Off सब तो a मिल नहीं tiny बोला amount मेरे of utility, but the time is ticking, and DRX have got to go in. से। भाई कहाँ घुस गया ये? खुद भी जानता है कहाँ घुस गया ये? बोला मेरे को ही नहीं पता तो सामने वाले को क्या ही पता चलेगा, ऐसे घुसा हुआ। वो कहाँ से तोड़ दिया? ओह नाइस वन। तोड़ दिया। प्लांट में वो सब कर रहा। On the floor with 24 seconds left. This is looking like a bit of a Pioneer बाबा। disaster. Come on DRX। ये जो डिफेंसिव वाइपर के अंदर आके ये जो ट्राई कर रहे हैं ना प्लांट करने का। ओ भाई ये कब आया? Catching Aspas. अबे ऑफ गई भाई। कोई नहीं। नाइस वन। दोनों गए। एक मिड लिंक है। ओए The gravity of the time situation ही नहीं है। really just laying yourself down. I don't believe this इसको time. बस जिंदा रहना है। हो जाएगा क्या? ना अरे हो गया? नहीं हो गया। ओ क्लच है, नहीं हुआ। लेट प्लांट हुआ। वो नहीं हुआ ना? वो अच्छा मैं वो ऊपर आइकन देखा। अपने लिए आता नहीं ना। हाँ अलग है, इधर आता नहीं। मैं भी कंफ्यूज हो गई एक बार के लिए कि राउंड के टाइम देख रहा था, बोला टाइम अप हो गया था प्लांट। 3.8 से कम तो था। हाँ सेम। राहुल वेलकम टू बॉन्ड विद द फैम, थैंक यू। मेरे स्क्रीन वाले उसमें ब्लू स्टैक डाउनलोड कर। That's a dagger to the heart of the Korean squad. हार्बर रैंक में क्यों नहीं? बिकॉज हार्बर एज अ बट रैंक में तो बल्कि यूज होता है, रैंक में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट एज अ सोलो कंट्रोलर हार्बर इतना अच्छा नहीं आज के बैठ के है। सब वीडियोस करेंगे, पब्लिक बट करेंगे, स्टिल रैंक में यू कैन प्ले हार्बर ऑन पर्ल, लोटस, and even Icebox भी यार वाइपर यार मैं बेटर है। जानता तो अंदर से बहुत खुश है बट ठीक है। 4 सेकंड बचे, एटलीस्ट 4 सेकंड रखने चाहिए। भाई ये वाला वाइल्ड सही है, ये सामने से तोड़ भी नहीं सकते। Going to be alerting them now that they know that this is going to be aiming towards that B hit once more. Seekers leaving their way through the site. Okay. No one going to be waiting for this one. चेजे का मॉली मार के तोड़ेगा। अच्छा But it's going to be that 5v5. कौन भूलेगा राहुल तुम्हें 29 मंथ्स? इसे का एक मॉली का डैमेज कितना होता है? थैंक यू सो मच फॉर द 29 मंथ्स। 70 कुछ ज्यादा ही प्यार दिख रहा है। मतलब मर जाएगा। बहुत पूरा गलत कितना होता है? अरे मैक्सिमम मल्ट के लिए But he's alone. Needs to try and survive. पागल है क्या? 150 का बंदा अगर पूरा मरता है तो 110 Will कैसे? be it. ना पूरा बंदा एक मॉले में नहीं मरेगा ना। कैसे नहीं मरेगा? पागल है क्या? अरे ओके वो तो अलार्म बॉट वल्नरेबल से मरता है ना पूरा। Where's the spam? Where's the मर answer? गया। It's ओए मर गया। But half of the बस भाई नहीं, बस भाई कल। the pressure is mounting. Oh shit. Oh nice. अरे भाई Wide लेट्स गो Let's so हाफ कर दिया था, हाफ कर दिया था। नाइस थ्रो गया वो कर डिफ्यूज करते हुए ही मरा ना वो। ये तो थ्रो गया है, पता चल गया था एक बंदा है पीछे जाके बैठ जाओ आराम से। ये तो थ्रो It's the गया same है। punish on DRX. When they leave too many players playing that long range spam. 1v3 दिया है बे। मुझे लाउड वही लेस के लास्ट 2 किल देखना है बे। उसने एक को मारा, एक और को पिलर फ्लिक मारा। पिलर पे दो थे नहीं, ना? दोनों वहीं पे थे ना, पिलर पे ही थे दोनों। वो पीछे एक था। नहीं ये देख वही मैं बोला, दोनों को मारा उसने। पीछे वाला लैंड है, फिर बिना टैप के And the Cove पता as नहीं well मारे जा managing to get them half on the spike. अरे डिप्रेशन हो गया नहीं इसको। नहीं वो लोग स्पैम कर रहे थे डिफ्यूजर को, इसलिए अरे पर एक ही बंदा बचा और उसने जेट को नहीं मारा है, नहीं पता चल गया तब वो एक क्लोज नहीं आ बचा गया। था, वो डिफ्यूज कर रहा था एक बंदा, ये लोग उसको स्पैम कर रहे थे जब लाउड आ गया। नहीं जब वो मरा इंस्टेंट लेस ने मारा, ऐसा हुआ है, वरना वो क्यों पीक लेंगे, वो स्पैम कर रहे थे। Even the slightest amount that's out of sync. Are the code names? नहीं आज पे रैंक पुश करेंगे भाई।
कुछ दिन बचे हैं ना यार का Less than that, has to back away actually, but still अरे not clear अलार्म the नहीं मिल alarm. रहा The alarm bot is क्या not ये going खत्म होने आ रहा है क्या? 5 दिन हाँ बचे 6 दिन है ना यार के 5 दिन 5 दिन बचे हैं एक्ट में तो भाई मेरा क्या सफर रहा है पता है? शुरू हुआ प्लेट 3 प्लेट 3 से रैंक पुश करके आए असेंडेंट 2 असेंडेंट 2 से डी रैंक होकर फिर डायमंड 3 डायमंड 3 से फिर असेंडेंट 2 असेंडेंट 2 से फिर डायमंड 3 और फिर डायमंड 3 से अभी असेंडेंट 1 अभी पहुंचे। ये पूरा एक्ट निकल गया इसी में। अभी असेंडेंट 1 के रैंक अप मैच पे था कल वो सिंगापुर खेल के फालतू में थ्रो किया। भाई मैन सिंगापुर नहीं खेलने का ये समझ आ गया मेरे को। Starting to see them take that space still. Les will anchor it. Lovely kill to find. Oh, nice one, Aspas. इको है ये राउंड तो There's not enough time to really make any sort of plays here. क्या लगता है गाइस कमबैक होगा? And zest. See what they can do. मैं बोल रहा हूं कि लास्ट राउंड हार जाओ जिससे 9 3 from every position. हां 9 3 कर ले क्या मारा ये? हां स्पैम पॉइंट है ना वो पड़ता है बड़ा डगआउट से Spike but a double face. finalized. कैस्केड डालना चाहिए था उसको। अरे इको तो इसलिए वो एबिलिटी यूज नहीं किया। कैस्केड डालता टैंक हो जाता। अरे वेपन राइफल तो दोनों पे आ गई थी ना। ये बेस्ट ऑफ 5 है ना? ओ भाई क्या मारा बस। और ये किसका मैप पिक है? ये लाउड का। अबे ये बंदे ने उसको मारा तो पता भी है कि डगआउट में बंदा है फिर तो डालना ही चाहिए था कैस्केड। DRX का ऐसे सेंस ही नहीं है। स्पैम पॉइंट पे बैठा। आधी साउंड नहीं जा रहा। Now it is on that final round here, the first half. It's not IMAO, it's LMAO. Scrape together around. The battle to be taking place here. Looks like all 5 members of DRX. ओ भाई तो पूरा आ गए Knives in the hand of Aspas. Dash going to be engaged. Bro. Raw spam flash. Oh yeah, होश ही नहीं है ब्रो। इनको होश ही नहीं है। वाह। Too strong bro. Dominating. को भी नहीं भाई वो नाइफ पे और शेरिफ पे मार गया ऑफ होके भी नाइफ और शेरिफ से मारे उसने। सुनना नहीं वे वो वॉल क्यों पुश किए ये लोग मतलब सेंस ही नहीं बनता। इसको मैंने दो किल पे है जटी है। कल मैंने बोला ही था ये लोग मत कर। अच्छा भी जाके नहीं सुने। हां मैं तेरी बात नहीं सुनता। लोगों ने सोचा आप बाहर जाके ट्रेड ले लेंगे तो पता नहीं 4 लोग पुश किए। ले हम तो 5 है ना एक ट्रेड ले लेके कर लेंगे। Loud just looked too strong to let this नहीं one हां drop, लाउड but का I'm sure the same could have been said if you were watching that game of champs too. Just an electric first half, but let's send it down to the desk to break it all down so far. क्यों? होम क्राउड एडवांटेज मिल रहा है ना लोगों को। Thank you so much, Ren. It didn't take long for Loud to find their rhythm as they push the first half scoreline to 9-3. But Doug, I actually want to start on the DRX side because we saw them make the composition pivot to match Loud. Yeah, and I think it's been so much fun to I nerd out वो about लोग को कर्स करवाना था मेरे को लग रहा है। It's been और so much fun DRX to में watch. बोला होगा They're कि using देखो the 8-4 utility, करने but से what's बेटर been most 9-3 करके impressive to me अपन is their कर्स लेके heavy कमबैक investment करेंगे। into the reckoning. Right? Everyone is trying to funnel those orbs through the orbs, So that through was the the plan. plants, through everything they possibly can to maximize the efficiency on the reckonings. They मुझे fully देखते believe DRX in अपना मैप में chaos, कैसे खेलता है। creating windows for them to execute on, and honestly, both teams have done that. Yeah, I mean, this has kind of just been the classic approach from DRX as far as just feeding stacks ults as much as humanly possible. We see the same thing when he's playing the Breach, trying to get those Rolling Thunders up. ये This क्या is नाम है इसका? very much the same for the Reckoning. And for those early rounds, it was working out really well for them to be able to breach into this B site and get that plant down. And actually, in this replay, we see them pushing Aspas भाई पर ये away, हार्बर और and वाइपर that's where I दोनों wanna go साथ में next, तो बहुत Kyrgios. डिप्रेशन है The बे। Jet मतलब भाई matchup that we have कुछ is विजन ही when नहीं है। Aspas is in a rhythm वॉल right के now. थ्रू पुश No, he करना ही पड़ेगा absolutely is, at some and Buzz point। is completely out of it Bro, right now. He's trying to dance with 2 left feet. 64, You can see 64 ACS. This is one of the weakest performances at a half we have दो ever kill seen from भाई। Buzz. He's currently बेचारा finds डिप्रेशन में चला गया himself होगा 2-11-2. 2 kill। That is brutal, whereas Aspas is completely and utterly vibing. कोई नहीं It feels अटैक similar, था। right? It's another one of these things where we see the game plan from DRX and then it starts to fall apart. जेटी अमन क्या हो जैसा गया जेटी We're शीरो? going to ask for the I think individuals to उसने step up, Mimi, in the होता second है बस half. भाई But होता है let's इट्स talk about ओके। what, as a team, we can maybe चैट expect का out of DRX as they move मतलब to the हालात defensive देख side. के We मैं saw the सोच रही defensive थी side from Loud. It was absolutely काश fantastic throughout. They're काश very good at कुछ लोग के rethink, पास using the थोड़ा harbor and दिमाग viper ज्यादा utility. दिया इन होता लोग का है आसपास को बहुत हंसी आ रहा है। क्योंकि जितना दिया है वो उनके लिए कम हंस पड़ रहे रहा है They बस have ये found सोच themselves in रही a थी। difficult position here on map 1, but it's all मेरे not आवाज all बढ़ा done बढ़ा and दिया। dusted just yet as we head back to Brandon Sideshow for the second half. बोलते हैं अमन को टक्कर दे रहा है दूसरा वाला जेट। What an uphill climb it will be for DRX to भाई अमन से हाँ बे 2 compare किल किया बे इसने। fashion in this form. वही तो अभी स्क्रीन पे वही तो वैसे भाई Are you still supporting DRX? Decent part. मैं अभी देखा No नोटिस matter किया how मतलब। veteran you are, doesn't matter how अभी many तभी तो global जेट डिप events बोल रहे थे कि जेट सामने जेट दोनों का भाई जेट जेट का किल किल हो बता रहा है भाई।
क्योंकि वो आसपास है यार, too The newer strong. players on Loud are still putting on देखते हैं अभी ये excellent लोग क्या performances करते हैं. too. डिफेंस कर रहा है ना अपने DRX. You saw the ये लोग और results फार्म there. करने आए क्या? For both Defensive of these map है ना teams on guys ये? Pearl, DRX had one map on Pearl where they looked split हो रहा है. immaculate and one लाउड where और they got फनाटिक का stomped फाइनल by दिखाई दे रहा है मेरे Cloud9. को. Loud Yes, being a split little हो. more stable, only lost in OT. Could DRX आसपास के possibly कोई win this आसपास OT नहीं. though? It would ओए require यार a जरा very ऐसा जो ये जो लेजर लेजर भाई दिखा डर रहा क्या है और आसपास का देखने का है मेरे को. सही वैसा है, हमारे दोनों का गेम में नहीं जेट ऑन कर देखने का सकते मेरे क्या? को. Let's see though. वो जो दोनों ऑब्जर्वर थे वो देख सकते हैं This ना. round gonna be that ace split, ओ pushing भाई, forward. अबे क्या देख रहा है ये नशा क्या है ये? KJD पे हो समझने गया. की साइड से सीधा ऐसा आ जाएगा. Stay alive. देख के रहा. भाई ओह Actually falling. हाँ बॉक्स तो भाई ब्रेक ये कर होते हैं Come on यार, one स्ट्रैट्स और sided मत करो. ये स्ट्रैट्स होते हैं. भाई. ये लोग को पता है कि कौन कैसा कहाँ खेलेगा. Nice one DRX. Maka still claims one. मार एक kill मार. किया. ओ भाई, ना जेट से ना भाई. एक स्प्रे में भाई दो को Mako भाई. was seen. जेट से This नहीं. guy आज जेट से नहीं हो रहा है. But this भाई might be a एमो ही little खत्म bit हो too गया रे ओ much. बाबा. भाई, अरे यार 4K. नहीं यार. No. वो एक भी मार रहा है बे. Done. But Buzz is also best. भाई तो ये सभी बेस्ट है यार, तभी वो यहाँ खेल रहे Four in the हैं. round for जी, जी, Aspas. जी. Putting on a masterclass out there. अरे हम किसी को डीमिल नहीं कर रहे, हम अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. सिंपल बात. It's unreal. इसको सपोर्ट कर रहा तू? Long अबे range होता है with the कभी friends. कभी Loud. भी खराब Mid होता है. range, close range, अरे doesn't भाई matter. आसपास तू देखा? Four कभी कभी health. एक मैच भी खराब भाई होता है. उसने एम हटाया, अभी देखा zero एक और आ रहा है, kill फिर तो उसने नहीं फ्लिक Big बैक game किया. player. That's कोई what's नहीं, पहला incredible. मैप वार्म अप समझ के जाने दो DRX That भाई लोग. time on Loud has taken him नहीं from लेकिन being a rookie इसको to a ये veteran so कंसर्निंग है quickly. मतलब समझ रहा है जेट. हाँ वो तो इसको है. इसको नेक्स्ट मैच से इसको वाइपर खिलाओ बे. One who has to really step up. It's been said in a couple of the interviews as या well. किल you जो know. खिला. बेचारा हाँ भाई, माको को बेचारा जेट एक खिलाओ. लाइनअप नहीं आती होगी इसकी. Championship माको title last कंट्रोलर है year. उनका, मेन Like you कंट्रोलर. said, Josh, he was तो वाइपर के लिए तो वही था. आई थिंक डबल डुएलिस्ट खेलना चाहिए अगर इसका एकदम एम नहीं चल रहा. तो क्या माको भी Double दो ही kill किल है. करेगा ना तो फर्क ज्यादा नहीं है कुछ. but he's had to ना माको का कितना I किल don't think गेम का सीन है, वो लोग का बस स्ट्रॉन्ग चल रहा है और कुछ नहीं. Listening नहीं to लेकिन Sadak जेट as का well, पूरा बन एक गया ना. भी आ रहा है. हाँ, पूरा momentum एक भी आ He रहा है. said that पूरा the as a credit team to ही Aspas, होता and he है. said Aspas is talking देखो during the आसपास को games. देखो आसपास ऐसा वो करेगा आता Out What kills, he wants right? to do in मार ही terms of the देगा. calling. So he's not just there fragging. He's offering a what? lot more to ये this इसका तो Loud ऐसे ही squad. फटा हुआ है पिस्टल And से क्या stepping up मारेगा now ये. that he is one of the veteran presences. ओ भाई next evolution of this young player. फैंटम फुल शील्ड लेके आया है सेकंड राउंड. Just showcasing that वो he's मिड got वाले it आ all. गए अंदर. और मार बैच. ये देखो आज भी देखो आज फ्लैश भी होने देखो. वाला है. बूम. मरा. ओ भाई. या कवर दे दिया. देख रहे क्या भाई. ट्रेड किया Ready है and ये. waiting. अरे बस कितना जितना रहेगा भाई. अरे तू Sure that ट्राई they कर ले. weren't falling prey to any of कितना that. ट्राई किया वो बचने DRX का. not even offered that luxury of trying to die to the spike to deny those GG go ults. next. DRX किसको हरा क्या है क्वालीफाई. This is DRX एनर्जी को नहीं लाउड ने एनर्जी को हराया था. सॉरी नहीं ये DRX ने हराया था. picking up a हरा pistol. कोई यो, एनी यो, की टीम Round थी. 13. एनर्जी क्या थी बात क्या? करनी क्या भाई. And what a statement it would be. नहीं DRX ने मैं स्टार्टिंग में दो NA मैच की नहीं टीम देखा थी. था. C9 को हराया कौन था. सा लेवल का. उसके बाद भी तो एक हुआ था उसके बाद भी शायद. हुआ था क्या? हाँ Region. वही लग C9 रहा को है हराया मेरे था. को. रुको. They're only representatives left in the tournament. And that's what this Yeah, tournament yeah. is all about. The winner of lock-in, Valorant. they get a spot for their team at Masters Tokyo. Sorry, a spot for their region at Masters DRX Tokyo. ने टैलेंट को Fighting for the हराया था Pacific. लास्ट में, उससे पहले C9. ये हाँ, शूट Talon वाला को, गेम yeah. में लेके Region ब्राजील as a whole. C9 या. नेचुरली अच्छा है पता है. Lovely util laid down early here by DRX, but again just maneuvering. इसका नेमार वेमार भी साला कितना मस्त है. ब्रो क्या एंगल देखो भाई. ये गलती कभी लाउड नहीं किया. हाँ बे. इंटरेस्टिंग ये बात है. अबे मिड कैसे ये तो कोई भी नहीं करता है. मिड दूर पूरा छोड़ देना. मैं इंटरेस्ट से बात बोलूं रुक जाइए हो जाइए Still राउंड. alive, 5 bullets. भाई 5 बुलेट पे भी मारा ब्रो. And backup is there. Down to Buzz. M2 बेटर वे. जेरब का वाइटी आ गया. Smokes off one of the angles with a cross. ये मुझे पता था तुम मजाक भाई करते कुछ जा रहे करने ही नहीं दे रहे. And Yeah. that point on the उमंकाल. horizon here for Loud. Aspas sat at 22 kills to Buzz's 2. Sax is doing watch party alone. अरे अब तो If मम्मी you ग्रुप wanted पे a लिख दिया jet जो भी dip, watch if party you कर had रहा that on है your आज bingo card, oh my god, you've gonna got it. तो कब का लिख दे This घंटा guy ही is लिखा on a तो different एक level घंटा right पहले now, लिख दिया and था. that is gonna be tough for Buzz to भाई उसका comprehend. फेस देखा कैसे. Heading into लिख दिया Icebox, I got to imagine we're gonna see more of this, लाउड का probably इजी on नहीं split लगता. 2. पहला गेम है अब देखते हैं. अमन अगले VCT मैच. इनका कर मैप रहा है पे watch क्या है, party, अभी मुझे सेकंड पता मैप पे It's देखते gotta हैं start कि going the DRX other way कैसा for खेलेगी DRX to तब have a समझेगा chance in कि this. क्या चल Aspas रहा with the है double उनका. up draft. भाई आसपास को Nobody देख giving ले. him a look. The final boss made manifest.
हाँ ये लोग पूरा राउंड ही ये करेगा। फाइनल बॉस बोला। साइज किल मार दिया बे।
enabled. Nice. कितना लगा मजा आया आप खत्म है ठीक है ट्रेड है 3v3 आप खत्म है मार 3v3 ट्रेड है अबे जेट कर लो भाई जेट ये थोड़ा सा लेट्स क्लच कर देगा रुक जा जस्ट क्लच करेगा ये क्लच के watch this ठीक है रुको Kill found, jump रुको knows nobody's on क्या it. रुको रुक ही रहा Waiting for the push. क्या क्लच हो जाता है ठीक है यार मतलब ठीक है एक्चुअली ये 1v1 लेते लास्ट में 50-50 हो जाता है वार्म अप डबल पिक आ नहीं रहा था उनका He's been their best performing player so far. अमन बैठा है क्या बस की जगह अरे ऐसा मत बोलो but he's so consistent. क्या बोला अमन को इतना बस इज अ वेरी गुड एक लकुलवाई का जोक द ओनली वे लेफ्ट टू डिफीट नाउ इज बाय डिक्रीजिंग द लोग के वजह से अमन अरे ठीक है यार लकुलवाई फिर से भाई आगे बोलोगे तो अमन के साथ क्यों लेकिन नहीं मुझे एक बात बताओ इसका स्क्रीन इतना स्ट्रेच आउट क्यों है हां बोलो ऐसे ही नहीं लो रेज है स्ट्रेच नहीं है लो रेज है तो मेरे को भी एक बार लो रेज कर देना तो क्या पता 1024 कर देना मैं आपको कुछ नहीं स्ट्रेच करके 3 किल अच्छा नहीं होता तेरे को भी अरे नहीं हम ज्यादा क्यों करता है स्ट्रेच मुझे समझा नहीं अरे ये लोग तो सीएसगो से आदत होता है इसलिए करते हैं बाकी कुछ नहीं मेरा सीएसगो तो ओए जरा देखा कि नहीं मैं सीएसगो का खेल रहा था हां तू बोला कल अबे बोला नहीं वो स्टोरी में देखा देखा नहीं रुक जा इंस्टा भी तो हैक नहीं हुआ ना भाई वो तो नहीं होगा I think another thing that we're just seeing demonstrated here is that the Americas region is clearly the best on Pearl. We haven't seen them देख रहे हैं lose on Pearl. इनका तो मैंने तो कब बोला तुम लोग ही बोल रहे हो मोमेंटम अच्छा है ना fighting against each other. ये लोग सीप टॉक भी सब एक साथ कर रहे हैं They've just got the read here. अपने इधर में 4 लोग सीप टॉक करेगा एक आगे जाके भाग देगा Seekers. वो एक भागने वाला बबला ही होगा मैं बोलने वाली थी पता है भाई पर नाइस वन ओ भाई क्या मारा अब आया थोड़ा ज्यादा है ना थोड़ा ज्यादा है शायद उसको अमन से कंपेयर कर दिया तो गुस्सा हो गया हां वो थोड़ा ठीक है कहता इतनी बेइज्जती नहीं सुनी नाइस शटडाउन नाइस आखिर में स्पैम ना करो आपको एक बढ़िया सा आधे घंटे का टाइमर देंगे देन बॉडी स्ट्रेच दिखती है इसलिए हेड पड़ते हैं बॉडी स्ट्रेच नहीं दिखती है बहुत ज्यादा होगा भाई ये सीएसगो नहीं है ये हां वैलोरेंट दिखता है कुछ नहीं एचयूडी स्ट्रेच होता है भाई वॉल का गैप देख क्या 2 किल मार गए यहां से ब्रो वही बहुत बढ़िया मारा वो बस अच्छा संभाला इसको भी ले जा ये इधर है पूरा आप आ गई बस भाई पे ये रेजोल्यूशन ऐसा करता हूं हां वो भी एक अच्छी बात है एफपीएस भी बढ़िया आती है तुम अगर रेस कम कर दो तो भाई सीधा स्पैम पॉइंट से डॉक कर रहा है बैक साइड से अंधा कोई गोली मारना शुरू कर देना ये डॉक ओ भाई क्या मुक्के मार दिया बे उसको भाई मार को उड़ा दिया अभी टफ होगा जी उसका मिड भी ले लिया और मैं अकेला ऊपर बचा बस भाई टाइमिंग इसके साथ भी टाइमिंग बस भाई नो आर्मर ऑफ लिया है ये राउंड साइड हो गया मतलब बी पे ऑफ करता ओ भाई ये मारा अच्छा था जी वार्म अप गेम गाइस हाय डियर जीत गया ना लाइक करो गाइस लाइक करो नहीं बेस्ट ऑफ 5 है अभी तो फर्स्ट मैप हुआ है DRX का मैप पिक क्या था आइसबॉक्स आगे सेकंड आइसबॉक्स यस उस पे देखते हैं भाई आसपास का लुक पूरा फुटबॉलर जैसा है एकदम ये सिम कर रही है मोनिका अबे मतलब शर्लॉक को अरे ब्राजील में वैसे भी फुटबॉल का बहुत वो है वो कह रही हूं अरे कैसा क्या ये फुटबॉलर जैसा दिखता है भाई ये ब्राजील की फैन है हार गई थी ना इस बार ब्राजील की फैन नहीं हूं मैं वैसे बट हां आई सपोर्ट सीआर इज सो नहीं मार्सेलो इसलिए नॉट नेमार बट मार्सेलो But in terms of what they've demonstrated here, the coordination, the ability. First one is Siren City. Cheers, thank you for the one gifted. Thank you so much. Loud is loud. भाई कहते हैं भाई मैं किसी पे सिम्प नहीं करती हूँ. Compete मत करो वो दो टीम को right now because sadly I am not a simp. मैं compare sorry. मैं क्या ही बोल रहा अमन भाई यार नहीं कर बात करते यार अमन से यार. रही है जरा बात. यार अमन कहाँ है? खुशी देख रहे हो भाई? एक मैच जीता है.
ये लाउड सच में लाउड है भाई, भाई चालू है, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा नेट ऑफ हुआ होगा भाई, इधर से तो चल ही रहा है। मॉडल पे तो करते हो? हाँ भाई ठीक है भाई, मैंने कब सिम कर दिया। सिम चैंपियन वैंडल पे भाई। ऐसा लग रहा कैमरा के आगे कोई हक दिया है। बफर? हाँ देख बफर हुआ है तो गाइस। तो 5 है ये अब गाइस। वाइटी का बफर हुआ है क्योंकि मेरे एंड से तो नहीं हुआ ये। अगर बफर हुआ भी है तो एक बार रिफ्रेश कर लो। सेटिंग मेरे इसमें तो ड्रॉप फ्रेम 0 बता रहा है। इग्नोर्ड लाइक एटलस क्या मतलब? आर्गो ये बॉर्नविटा फैम का क्या लॉजिक है? बिकॉज आई लव बॉर्नविटा। मजा आता अगर वो लेट्स गो भी बोलता। Do you support any club right now? Not really. I don't watch matches, league matches. BO5 है तो ये first map था। हाँ first map था। ये loud का map pick था and they won। अब DRX का map pick होगा Icebox। कलर ग्रेडिंग हो रहा है। फिर कौन सा है थर्ड? मैं भूल गई। पागल बना रही कौन भाई ये पागल? ग्रुप गेम्स कब होंगी यार? मॉर्टल के आने के बाद ही चांस है, उससे पहले तो नो चांस। या एक शुरू होता है तो तुम उसी गाड़ी में चढ़ जाते हो। चैंपियन वैंडल लकी गए। ऑफ बफर ये सब लिखना शुरू, एक ने शुरू किया सब शुरू हो गए। मैं बोला भाई मेरे इधर से सबसे चल रहा है। कितना देर है? टाइमर चला दो 3 मिनट। डिफॉल्ट वैंडल बढ़िया है, चैंपियंस कुछ बफर हुआ था। चैंपियंस भी कुछ नहीं। किसी का हुआ होगा मेरे को लग रहा है। इतने सारे लोग एक साथ कैसे बोलेंगे? नहीं हुआ बफर। लगता है पोपो पे स्किन्स नहीं है इसलिए पोपो हमेशा ये लिखता है। If 2 teams pick same map. GG So far, that is not how veto works. जब हारेगा ना तब रोना। Best of 5 का veto ऐसे होता है, पहले तो जो भी मतलब I think toss होता होगा। I'm not sure about that. दूसरा सेमीफाइनल किसका है? जो जीतता है वो पहले एक मैप बैन करेगा। तो जैसे लाउड ने हेवन बैन कर दिया, लाउड मान लो लाउड जीत गया, लाउड ने हेवन बैन किया तो DRX दूसरा बैन करेगी। फिर लाउड एक मैप पिक करेगा, लाउड ने पर्ल पिक किया, फिर DRX ने आइस बॉक्स पिक किया, तो ये 4 मैप तो हो गए ना। तो सेम कैसे होगा? नावी का फनाटिक और नावी का फनाटिक जीत जाएगा शायद। फिर लाउड ने स्प्लिट पिक किया, DRX ने फ्रैक्चर किया, और फिर जो बचता है एंड में वो डिसाइडर मैप होता है। भाई ये है म्यूजिक। टाइम फॉर शर्लॉक चला देगा ना। कॉपीराइट क्लेम आ गया मेरे। इतने बड़े लोग नहीं हैं, जस्ट मैं एक मामूली इंसान हूं। ये भी कॉस्प्ले कब कर रहे हो यार? मुझे कुछ आइडिया नहीं यार कैसे करते हैं कॉस्प्ले। बोलते स्काउट वर्सेस नावी, फनाटिक वर्सेस नावी बोलते। वेरी क्रिएटिव। इतना क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हो गाइस? कंटिन्यू प्लेइंग वैलो आफ्टर विजय में कम्स। हां ऑब्वियसली इसमें बड़े छोटे लोग कुछ नहीं, ऑब्वियसली यार हर कोई थोड़ी जा सकता है ऐसे मिलने। जब तक वाइपर कॉम्पी खेलना चालू नहीं कर देता तब तक ये आधा खेलेगा, उसके बाद पूरा ही खेलेगा। हमारे लिए तो रोनाल्डो से पढ़कर है पोलर वेयर। हाँ क्या मतलब चिरो लुक्स लाइक रेना। क्या भाई? रेना के तो बाल पूरे ऐसे पीछे होते हैं भाई। ये कितने बजे तक चलेगा यार? इट डिपेंड्स हाउ फास्ट लाउड विंस। हाय स्ट्रेंजर, अगर आप छोटे हो तो हम तो एटम साइज पार्टिकल हैं। ऐसा तो कुछ बफर भाई किसका बफर हो रहा है गाइस? लोगों पे भी स्ट्रीम चल रही है, वहां पे भाई सही चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है यूट्यूब लोगों। अगर हम मामूली इंसान है तो हम क्या? अच्छा अगर शर्लॉक मामूली इंसान है तो हम क्या है फिर? मामूली इंसान को सपोर्ट करने वाले। लेट्स गो हरिकेन। बाय द वे अक्षित तुम मुझे कह रहे थे तुम्हारा इंस्टा मैसेज देखने, मैंने 2 दिन ढूंढा, मेरे को तुम्हारा नाम का कोई इंस्टा पे मैसेज नहीं दिखा। आप ट्वीट करो, ज़ेरेफ लीड है, हम लोग रीट्वीट करके वीसीटी में ला देंगे। ब्रिमस्टोन फैट शेम कर लो भाई, बदतमीज। ऐसा होगा क्या? आएगा मतलब ऐसा? Few wars is an ऐसे फेमस तो नहीं हो रहा है यार।
Yo. हाँ वो रैंडमली उठाते हैं वैसे. ये दिस इज हरिकेन देखना रैंडम आया. ये शर्लॉक लो प्रेशर से किस हिसाब से उनको हमेशा बोलती रहती है पीएमसीओ एमवीपी है वो तुमसे ज़्यादा ही उखाड़ रखा है. भाई कहना क्या चाहते हो भाई? Let's be honest, that may have been the final nail in the coffin, but it really felt like the coffin was 6 feet under. And they were just Kamara bhai. क्या है? They just looked so good. It was a 9-3 half. It was not a 3-9 blessing. They were not able to convert it into something meaningful. And I think जरा देखा? क्या यार बोला? तुम्हारा वो स्ट्रीम कौन सा? देखा ना देखा. देख रहा है. ये हम खेलेगा ठीक है उसमें हम मैचेस लेट्स सी. ले तू बनती गर्ल नहीं खेलेगा कभी VCT. क्या? तो पीसी पे जा रही है ना थोड़े टाइम में. जरा भाई रेडा इज बेस्ट एजेंट खेल लेंगे. क्या बंगाली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? रहना है तेरे दिल थोड़ा बहुत में. डिफरेंस है. भाई ये तो अच्छा परिचय तुमने लिखा है. मैं बोलने वाली थी कि नकुल भाई के लेवल के जोक्स हो रहे हैं. क्या डिफरेंस है इतना मेरे गेमर गर्ल मुझे बात करने के उसमें हैं. खाने को खाम बोलते हैं सब इसमें इधर में. टट्टी और क्रिएटिविटी के बीच कोई रिलेशन है? पैनल के विचार बताओ. एनी बेस्ट रोनाल्डो मोमेंट फ्रॉम एनी मैच यू सॉ. यार बहुत सारे रहे यार पहले तो क्योंकि हर एक मैच देखा है. जेरेफ अगर मेरे बगल में बैठ के किसी को बंगाली में मेरे बारे में बुराई कर रहा होगा मैं समझ है थोड़ी सी. बहुत साल हो गए क्योंकि अमन का चैनल देख सकते हो. मुझे याद है मैं भी मेरे स्नैपचैट का वो एक होता है ना ऑप्शन कि यू कैन सी तुम्हारे पुराने ऐसे सालों पहले के स्टोरीज वगैरह उसमें मैं देखती हूँ भाई इतना. मैं मैचेस देख रही होती हूँ और मैं उसकी स्टोरी डालती रहती थी पूरा टाइम. वो सब आता है उसमें स्नैपचैट पे. DRX के 52 किल्स के बाद 25 किल्स भी नहीं हो रहे. क्यों? क्योंकि अभी वो अपने रैंक पे खेल रहा है ना. यही बोलते हैं ना मतलब मेमोरीज. अच्छा उसका नाम भी मेमोरीज होता है. कल ही 38 मारा था जस्ट सेइंग. सॉरी इट वाज जेरेफ के साथ बात करो आप. वो 38 तो सामने वाले ने मारा था. तू 30 ही मारा था. चैनल आया शायद से. हाँ क्या? ठीक है भाई लेकिन इन लोगों ने बहुत हगास भी बहुत मचाया है. ओल्ड एंड क्लासिक भाई क्या भाई वो कितना 2 गेम के बराबर वो मैच चला था. उसमें तो 50 पहुंच जाना था. 5-0 रियल मैड्रिड वाज वन ऑफ द बेस्ट तो मैचेस. 50 वाला मैच वैसा ही हुआ था. वैसे ही ओटी के आता है. 51 कैसा होगा? कौन से गेम में अगर पहले का था तो मैंने देखा रहेगा. मुझे याद नहीं है पहले. तो मैं था वो क्या तू वो अब तू किया ऐसा बोल रहे लोगों को. अंदर कामा एंड कैप्टन. एक दिन क्या अकाउंट में मैं एक दिन गाइस मैं रात को सोने जाने के पहले 50 किल करके गया था. जेरेफ ने एक स्टोरी लगा दिया कि उसने. हां बे क्रेडिट ले गया सारा. क्या बोले चीज है पर मर्सी का भी दिल बड़ा है. उसने आज तक रिवील नहीं किया. बोला एक्सपोज मत कर यार. लेट हिम हैव हिज मोमेंट. अब तो हो गया. कर लो ले लो तुम भी यार. कर लो. मेरा नाम से ही है अक्षय. तुम्हारे नाम का तो कोई मैसेज नहीं दिखा यार मुझे. यार मम्मा ग्रीन टी देना भूल गई शायद मेरे को. मैं फिर खाने लग जाऊंगी यार. आज तो यही है मेरे पास. पॉपकॉर्न बनाना पड़ेगा और मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं है. ये न्यूज़ वाले होते ही ऐसे. हाँ बे ये यूरो न्यूज़ आ रहा. न्यूज़ साला. यार एथलेटिको मैड्रिड में एक प्लेयर होता था मैं नाम भूल गई उसका. बहुत मस्त खेलता था. ये न्यूज़ छापते हो सब. क्रेडिट चोर. क्या? यूरो न्यूज़. हाय नहीं याद आ रहा. भाई नाम तो बढ़िया लगता मंदन ने. यूरो न्यूज़ ब्रो. Why is everyone underestimating Navi? कौन कर रहा है ब्रो? Navi is too strong. फर्स्ट वाला स्ट्रीम वही नाम रख के कल भी मैच बहुत मस्त होने वाला है. दोनों टीम्स इतनी अमेजिंग है. ग्रीजमैन. हाँ अबे तुम सही. ग्रीजमैन वेरी नाइस नेम. मस्त खेलता था भाई वो. नहीं साला क्यों बोला तो ग्रीन टी याद आया. अबे ग्रीन टी मम्मा को बोला था स्ट्रीम पे आने से पहले इसको देखो कि मम्मा याद से मुझे ग्रीन टी दे देना. मम्मा शायद सो गई होंगी. अबे हारेगा चेंबर. लेट्स गो चेंबर. अबे बोल रहे स्क्रिप्टेड न्यूज़ वर्सेस यूरो न्यूज़. चीरो एक चूहे ने मेरा हुडी उतार दिया तो माय मॉम गॉट अ पैच टू कवर द बेस्ट पार्ट. वो पैच पे चूहा बना हुआ था. चेंबर नहीं लिया एडे जेट. अड़काऊ क्या किसने? चेंबर था तो
अबे यार मुझे लगा चेंबर लेगा पागल है क्या चेंबर वेस्ट है सही में तू भी मत खेला कर अरे भाई तू मुझे नहीं बोल सकता करते पे भाई पर नहीं you should support me now no you should support me now आज गेम नहीं खेलो रात में खेलेंगे ना नहीं हाँ वो जेटी लिया है क्या खेलेंगे हम लोग शूट है हाँ बात तो सही है जल्दी सोएंगे आज कितने बजे शूट 2 बजे 2:30 2 बजे 2 बजे तक उठ जाना 2:30 से शूट चालू कर देगा हाँ ठीक तो 5 बजे तक खेल छोटे शूट है हो जाएगा आधे घंटे में हाँ सुबह से 5 बजे खेल ही सकते हो ऐसा देगा ना कान मर्सी सॉरी भाई अभी ग्रुप में लिखो अभी मर्सी मैं बोलता अभी सो जाते हैं कल सुबह देख लेंगे VCT क्या बोलता है हाईलाइट देख लो भाई काम बता अभी सोने जा रहे हैं हाईलाइट्स कल वॉच पार्टी करेंगे चलो आप लोग मर्सी ने बोलते बात खत्म गो पता नहीं है ज़ेरफ तो गेमिंग हाउस में है भी नहीं बोलता जल्दी सो जाऊंगा To the Hunter's Fury should open up these ultimates a little too. So there are positives here to pull from. And like the Des was mentioning, it was DRX that have been playing this comp a lot. Whereas it's the first time we've seen Loud's Icebox. An unknown quantity. Let's go. Why side it chhod diye? Into this best of 5. Forwards though, Loud not going to be dissuaded just yet. Wall's going to be used, but they're going to be claiming space and planting up top, and even to try and disrupt this one doesn't look likely. Compared to what we're going to see from DRX on their attack side, placing into 2 players, but not punished. Very good information, even just a little bit of a blow there, damage done. Exchange of the bullets, the weaponry, even a snake bite up close. Oh my goodness. Team Zal's at 1v1, but he will eventually fall now. How does the play get made? Obsessed almost granted an opportunity to claim. इसका नहीं है लेकिन बाकी लोग का scalps taken. एसएस को मार लो हो गया nice one let's go pistol DRX are here this thing another great wall there actually that stops people from being able to get deep. अरे तो ज़ेरफ वाले नशे You can see that Twiz has put time into his armor. We already knew that based on what we've seen from him on Pearl. But here looking comfortable too. DRX dead on the wrong end of another pistol round. Great play from these guys on site too. I think there's a real temptation once the flank is given up to just give up sight and go and fight super heavy behind you. But Loud decided to push forwards. Really nice reaction from Sadak with the call. 5 stack gamble play. Stacks claimed the orb. That was his goal. Pays for it with his life though. He was going for those orbs all the time on Pearl. They constantly had reckonings online. And this is one of the first times where Loud's aggression has actually challenged him. The spike is alone on Sadak. Okay, the Loud guys started to come back. Oh my God. There was a moment of doubt DRX is going to be able to capitalize. These classics are making quite short work of things. Still, Mako ended up taking a decent chunk of health away when he was trying to contest and fight that one. Now a close angle. Flash the right click over the top. How does he duck and really dodge this one? The answer is he doesn't. It has got particularly dangerous and RB now. He's the leading clutcher of the tournament, but Les is watching for it. Turns away. And now will there be a double face? Not quite still. Significant damage can be done. It's a bloody Loud as they head into that bonus round. We'll see what they choose to do with the economy. यार डिफेंस तो कर लो ढंग से It's an uncomfortable decision that they have to make. But there might be some low-level investment that still works. Noted. And as we've said, yeah, first time we've seen Loud on Icebox at lock-in. Loud have only been forced to show 3 maps up to this point. They've been very clean. Only dropping that single overtime Pearl against NRG. Solo बेकार है still a pretty decent bonus round for Loud. They're going to be able to invest fairly heavily into this. Loud का run बहुत सही रहा है. And they're trying to apply pressure on the B, so using the cascade. And I think this makes a lot of sense. With that cascade online, I don't think he's got Soma drawn as much. Kawanzin could rely on the Sky, which he's been playing at this tournament alongside Breach. We haven't seen It does relieve that necessity of having the drone, like we were discussing, you know, to push players, oppers off that angle.
when they are just walled off like that. Now there was an early C9 के 10-2 से comeback मारा था. हाँ वो देखा था भाई. Put up a bit of that space. There was a deep flash now, but look, अबे ऐसा मैच ही देखना है बे. Exactly. मुझे control slowly. अबे ये वाले मैप पे थोड़ा strong होना चाहिए DRX. Interesting turret, isn't it? Gets posted. And after this wall drops, it kind of controls the area. Or at least gives you good information if people are going to swing through the wall as to where they're coming from. Oh, and they're moving up deep into position. Flash push forwards, Reckoning as well. Positioning. Clear this one, less from the side. Just creating moment after moment for his team. 4 players left up for Loud. They do not feel like persuaded, despite the fact that they had the weaker weapons. Still, there is that answer. Zest, good kill to find. Left down to 3v3 now. उनपे 2 sheriff है और and this looks dangerous and very well planned out by Loud. Can the post plant hold on? It's not planted in a great spot. Dash forward, so cuts up the angle, and that's Sadak out in the open. 2 years, Sheriff shot. Does find itself. Still He's got the rifle, but it's not quite bad. Forward in the angle, half of the fuse. Says, half के बाद stick क्यों कर रहा है? Braindead है भाई ये. Absolute insanity. Actually बस का गलती है. नहीं बस का गलती है. बस को कवर में रहना था. So nice. The way that they take beat control and then load less up. अरे क्योंकि उसको लगा वो पीक नहीं लेगा. मतलब ये नहीं बस मर गया उसके बाद उसने हाफ किया उसके बाद ये देखिए ये टाइम मिला है. वो हटाना उसको और हटाना उसको सही बात. आना वो लंबा किया ब्रो. Buzz to step up, win around for his team. जब रियलाइज किया कि वो उसका स्मोक चला गया जेट का and अब कोई पुश करेगा तब जाके वो छोड़ा. That you would normally expect to win. Updraft up top, that's to try and punish this. उसको भी मरना नहीं चाहिए था और इसको तो हाथ पे छोड़ देना. Trying to grab these orbs. Buzz gets it. That's the Blade Storm. Can he be the difference maker? मेरा नाम दे दो पूरा इग्नोर मारे. बाद बदमाश चैंपियन be broken. Sadak is aware of this, knows that there's a few players close, and space being gained. Only the one before an instant answer back on this crossfire, despite the weaker guns, despite the pistols. Is DRX who are making the most of this one now? What is the call as well? On-screen वाला wall नहीं है ना. Space still going to be vacuumed up. Blind को मारने जाएगा blind. नहीं, I think वो aspect भी कर दो. अरे प्रॉब्लम क्या था? बस ने मार्को को मार दिया. Plays too easy into the angle. This does not look like a new team. These do not look like newer players. I know Sadak said. अभी थोड़ा सा मार यार उसने लास्ट गेम एक हाफ में जितने किल किए थे नहीं लास्ट गेम फर्स्ट हाफ में जितने किल किए थे उसके डबल तो कर लिया यार अभी तो बेटर खेल रहा है 2 किल पे था अभी 4 तो कर लिए कम से कम 4 राउंड में. To me, just as good as they did with the old Loud squad. It's okay, आसपास मर्फ कर रहा है. Maybe that means Tumis doesn't quite get as active in the round as somebody like Pankara or Mako, but it doesn't really make too much difference. So here we see it again, the cascade to take B long control. Buzz, his confidence certainly hasn't waned after Pearl. And still, Seeker spots the target. Sadak moves forwards. Where's the kill? Dash up top. Kills him down right as he's evacuating. And he needed to be the difference maker. Have another chance though. Unrelenting. That's what it feels like when you're on the opposing side of this one. Loud, not willing to give anything up. The spike was planted in the middle of all of that. अब वही ना पीछे भाग गए वो लोग कोई पीक नहीं करेगा. Let's now with the pick. Yeah, this is going to really start to put that time pressure on. What can they do with this? hold देखो ना. Not a player aware of it. 2v3. Buzz, what can you find? Zest in the pit. Okay, Aspas मर गया. That's the first obstacle down. Nice. Buzz आगा. And it's just too much to do, isn't it? पीछे से आ रहा था. Top of the spike, doubled up, decaying all the way down. 1 kill from the tracers, but time far too low to make the most of it. GG's. Good round. 0-5, bro. This map. क्या? ये अगर वो Aspas we were talking about it, the test was talking about it. It needed to be the time for DRX to strike back, to show that they have what it takes to really compete. True. And so far, it's not looking good for them. भी कर सकता था. I think it's a must win. It's the first map of the series that DRX had a chance to pick, so it's up at the top of their pool as well. They've demonstrated how strong they are on Icebox against some of the other teams. And also, once you get deeper, once you get to split and fracture, Loud have already showcased that they look incredibly scary there. If Loud can't get punished on a map they haven't even had to show so far, where can DRX even win?
मार के Where is the limit? वाइपर स्टेज वॉल करा के प्लांट दे दे. That's the big question. प्लांट खेल लो. And I think at the moment, Buzz is actually doing a fairly good job of applying some pressure, but the whole of DRX's defense is getting steamrolled by the pace that Loud are playing at. Kaligan. Here again, less the Tollywood up through tube. The film looking to get aggressive. Now last time RB was the one that died early and opened the gap as the turret went down. This time Les pulls his way through and pulls RB back towards him for another cheap kill. And he won't be dealt with. Wait, Marco just so unaware. I love this from Loud. And to think that they haven't even had to show Icebox so far in this tournament. And it looks this drilled. They're getting all of the benefits of the KO in terms of the flash through their wall. But they also have the reconnaissance of the dog too. Nice. Rifle upgrade. But so much to do for Buzz. confident खेल ले तो अच्छा भी होगा गेम. चलो जी. Sure work. Flank को flank किया बे. 6-0 lead for Loud on the second map. After dismantling DRX 13-5 on Pearl. VCT साला टूर्नामेंट खेल के भी ऐसा. ये लोग it feels like they could still show us more unique strategies. We've seen heavy B pressure. And I think the addition of the Harbor into these comps, playing Harbor Viper, makes it really difficult for Buzz to get aggressive. He's always got a cascade in his face. And it's not like any other wall where you can push through. You're getting slowed as you go through that. You're not favored. Trying to go for a classic jet play of poking yourself through a Viper wall, let's say, or an Omen smoke, getting one and dashing out. It just doesn't work as well against Harbor. ये लोग कौन से सर्वर पे खेलते हैं? ब्राजील And so what I'd really like to see from DRX strategically is for Buzz to continue getting aggressive at B main with at least another person with him, or possibly fighting, you know, pushing pipes early in the round. But I still think it's going to be very hard for him to get value against that, because that Harbor wall is going to always be there. Right up in his face, mitigating any sort of impact. And this is Loud, such a commanding lead. And you can feel it really building as well, just all the energy. Crowd at their sides. You know, at times we were a little bit critical of Loud, you know, maybe overheating, trying to play to the crowd a little bit too much, but they spent the week, they've cooled down, tempered themselves. It's a cold fire that's burning right now, and that's what's being showcased. Loud, determined to get one step closer. So here's that interaction we were talking about. Buzz, with his operator, comes forward, and with the cascade, he's not quite sure where he is, but that is a perfect way to open the round. A first kill for Buzz. That's my stone, just, he's unrelenting, man. There's no time wasted. Skipping a hop, jumps up to the box, and he just rips away the opening that Buzz earned for his team. And Sadak, of course, there's no... going to be used. Ultimate what? spam kill that reload kiya wo Sadak moves forward. They know where Zest positioning is. The indicators are around still. Arby's been doing the most, but Util in his hands, caught unaware. And 7-0 is such a commanding lead. BO3 में ही खत्म हो जाएगा. BO3 नहीं मतलब 3 मैच ऐसे कह रहे हो ना. This looks impossible for DRX. In the lower bracket final at Champs, they were able to claw themselves back into a fifth map after going down 0-2. The team has demonstrated that they're not out of series this early, that they don't crumble instantly when they face adversity. And yet, today, I feel like what I'm witnessing is just Loud utterly outclassing them. Count off? पीछे नहीं गया था वो मार के. Loud have a different strategy for every time they've gone round. And DRX are left reeling. They can't even use the lessons of the prior losses. ACJ पर ठंड में भाई गर्मी है. Try and claw their way back into it. You are most humble person. Atlas was saying that evening. Prioritized on 2 years. Handled up that reckoning. Now a dog clears the one side. Interesting cascade, but
It is that weaker buy for DRX. And Aspas just trying to get as aggressive Yeah, as humanly जो किया ना possible. glide वाला ये मैं भी How करती deep हूँ they're नीचे गिर pushing. I जाती mean, the हूँ. wall just gives them all the space into the back of Snowman. New strat again. Yep. A new flavor to it. And DRX with poor weaponry this Guys मैं time. chat कम पढ़ रही हूँ बार-बार क्योंकि mute करना पड़ रहा है. Constantly मेरे को DRX problem who हो have रहा to है. react to it. इतना control ले And I लिया. love the flexibility that adding the harbor to this comp gives them. ये लोग इतना छोड़ के खेल रहे retake High कैसे tide करेंगे? around the पगला है side. ये. Sheriff in a hand to Mako. Makes the most of that one. Seekers though popped off. Positioning precisely known. It's blessed with 3. Wants the 4th. Will he get it? The answer is yes. खत्म है. इनका less ज़्यादा मार रहा है. Louder makes it some safe rounds where they play a standard post plant on Icebox with a lot of these more aggressive looks. This time the wall allows them to take Snowman control. Previously they've been crossing through it and getting aggressive on people waiting to play the retake. There's always something different being thrown at DRX. And I mean, just look at the players, look at the coach. They're out of ideas. Best case scenario is going to be 4 rounds for DRX, but with the current momentum, the pace of which this game is being played, it just looks so unlikely. And look at that, all those orbs that were being prioritized, the 2 years once more, grants them all the space in the world to get a free plant, and the less speed is consistent thought in their sides. That's nice, well done. Drone coming down with it from Zest. Looks back up Tube and sets up for that kill, but they've taken Snowman control again. Not a crossfire, Mako's going to claim 1, but it's an immediate trade. Lockdown for a lockdown now, this is where things get scrappy. Move across. It's Aspas! Almost निकल गया था. Bugs does step up to the challenge. Lockdown going to be catching. Out in the open. चलो एक round तो आया. Stick this one with out of care in the world. ये तो कुछ कर ही नहीं सकते. There will be no silly business, no knives to be found, but Merciful eventually it is DRX. They will claim that first round on the board. Can DRX string this together into any form of momentum? This time, the ult being very important. But I also think that DRX had a nice idea there at driving a wedge in on the retake and separating one half of the post banners from the other. The crowd there genuinely looking disappointed that this wasn't a 12-0 half. करेंगे, it's natural. अपनी region की team को ही support करेंगे, it's natural for growth. A push down the tube here from Stacks, following his cascade and a recon dart. Looking maybe to add a different flavor to this as Buzz finds another first kill. Things starting to go the way here of the Korean team. But are the adaptations going to be enough? They've been left reeling is what it feels like. Still, flicker that's the angle to try and watch for. Aspas really being pushed onto the common angle now. Top of the box, Mako. Vandal in his hand, doesn't want to spray. Snakebite at the floor though. Keep him safe for a moment. Now though, it's going to get difficult. The slow start to fade away. Anticipate. Kawazine, Flash was waiting. No play off. Aspas catching it. Zest is low. Stacks does trade. But this is very quickly getting out of hands right now for DRX. One of the sole opportunities for them. The wiggle with the movement. He makes himself an elusive target. So well played by Stacks. The trade, the anchoring. He shuts things down with a 4K. A major round for Team Captain and IGL when DRX need it most. 4 rounds in this half is the bare minimum to get things back on track. For our podium team, bronze plays gold from champs, and right now you're seeing that gap between third and first. But of course, how do those 2 changes? You expect a different result here, and instead it has been just as dominant. The ship. And Loud take a timeout to hold that momentum before it can go anywhere. Angered the beast. There's that timeout being taken by Loud. Guys, what's going on? We dropped 2 rounds. We're going to get that 12-0 at the half that we were hunting for. And Buzz has been able to find some value with the operator. He's actually working around the cascade very nicely. हर टाइम में पीछे होके बैठ जाते हैं. Found a first blood. Able to drop that.
And it seems like DRX went hard anchor A, which I think is a nice adjustment too. If you end up playing backward A, and playing retake or post-plant utility, what you end up finding is the harbor walls just lock you out. So I like the adjustments, but to me, Brent, the problem is DRX has just adjusted way too late. Do you remember on Pearl where it was round 11 by the time they broke the alarm bot for the first time and really put pressure on Sadak's defensive holds? It feels the same here again. It's round 10, round 11 by the time DRX are figuring out what they need to do. Making those adjustments. And that string of rounds by Loud, I mean, listen, they have kept the money up. It's practically pouring out of their pockets, being able to get buy after buy despite losing the back 2 rounds. There was an opportunity there. Buzz, I believe he spotted a body. Moves away. This is an angle that he has been playing, but Sadak, okay, bit brave from him. Not expecting that angle to be watched for. Dog round the side. That's time to the cascade, so it can't be broken as easily. Clears away the one box. Tap at a plan. Stray shots. And it looks like Stax might want to challenge over at Snowman too. Snowman feels like it's going to be important. Stacks out in the open. RB does collapse from the side, but Kawazin felt like he was fully moving. Still claims the kill, and he's got the pit online. Danger time, retaking with the operator, but clears one of the obstacles out. You could try pushing a Hunter's Fury in here and seeing if Buzz can follow it, but he's only one player. Doesn't have the dash. Shock Seems better to just group up. Tap onto the spike, forces the snake fight. 2 years moving forwards, and it's a flick of the wrist. Locks on. Down to Buzz, no time left. Decay going to be building back up here. Half on the defuse percentage play, gets off of it. Resmoke. You got me joking. The crowd. And I think he's done a great job of silencing the doubters too. Horrendous performance. His operator and that clutch. Been about the only thing that DRX have got working for them on Icebox. 12 and 9. Stepping up and providing one last lifeline for DRX to hold on to here. If they get the 4th and get the pistol, maybe they can make a map of this. The economy's still not challenged for Loud, of course, after 8-1 rounds in a row. But the adjustment has come. And so much of it has been based off Buzz. On this corner, is anybody going to be there to try and break this trail? Over and over again. Shot out of the sky. But the supporting high tide allows Buzz to get back up on the angle because he knows that they are going to struggle to get through there without that piece of utility. And like I said, the adjustments, they really are coming. It just takes Loud. Sorry, it just takes DRX. It's just a bit too long. See a pivot now from Loud. They've got a good ultimate to try and leave their way into this site. The Seekers online. Isolated over Flash is what it seems like. Now the Reckoning. Right into the back. Sadak not scared of taking this space. Even the fight as well looks to be the point of contact. Nana Swarm laid down on his feet, and DRX, no attempt from them to try and refight this one. They had plenty of ults to do so. There's the Reckoning, used up close. Aspas forced to move. Hunter's Fury as well, spots them out. One tag on the Sadak. Will there be anything else? Kill found still. Still alive. Aspas. Take a fight to them. What a great reset from Mako. And yes, a reset. Viper's pit down, but brought down out of it. Unless just 9-3, familiar sights for Loud and DRX dating back all the way to the challenge. And the first time we've seen Loud तभी आ रहे थे जब लेस कलर के लोग ने डिनाई कर दिया था तभी जीते थे लोग फर्स्ट राउंड. Just seem impossible, doesn't it? And unstoppable if you're thinking about Loud. Absolutely fluid is the gameplay, great adaptations, but I'm curious the first half. Don't let's sit down to the desk to find out more. अपने इधर में अगर हम लोग ये Thank you so much, Brandon. Another 9-3 first half. It comes in our first look at Loud on Icebox and Mimi. This team has just owned the B side for the entire first half. I had questions about how they were going to be able to play it. The executes they've had thus far.
क्या पता दो गोली लग जाए क्या है एक को मारेगा ना हम बाकी मार देंगे but eventually pivot back towards the B side in the late rounds. They're able to use the dog to take space back yellow, and then they use the reckoning to push really deep. When DRX हार्बर जब से रिलीज हुआ ना ये हर मैप पे थोड़ा ज्यादा यूज नहीं हो रहा taking that with the orb, whereas for Loud with the sky in the mix, डबल अरे वो सोलो तो बेकार है पर वही एंगल ब्लॉक करने के लिए वो अच्छा है वाइपर के साथ बहुत उपयोग होता है फिर Now we put a big spotlight, of course, on the Jet matchup. इसका वॉल का टाइमिंग वगैरह कम है। पर उतने टाइम में वाइपर का वॉल रीलोड वो हो जाता है वापस। ये डबल उस टाइम के लिए वो बहुत सही है। अभी ये लोग बर्गर किंग मैंने भी देगा। अरे चैट में बोला था किसी ने बोलता वाइपर का सपोर्ट है लाउड को। कभी प्रॉन मिक्सचर खाया है? प्रॉन मिक्सचर क्या होता है? प्रॉन के तो अलग-अलग डिशेस खाए हैं। मिक्सचर वो मुझसे शादी कब कर रहा है? उठ के कुछ खाया नहीं सीधा आके बैठ गया। भाई मुझे भी खाना है यार मैं मॉम को डिनर में बोलता हूं। ओए इधर में कुछ और पूछ रहा है। पानी पिया बस। क्या बोल रहा है कि जेरेब से पूछो मुझसे शादी कब कर रहा है? बैंशी है क्या? You think about that second alive, up going down, the Bulldog is invested in this match, he can't financially handle it, and we're talking about an entirely different कौन है वे जेरेब ये? and that's really पता नहीं यार कौन है because I don't know how much जेरेब का प्यार है यार। this was the map you had to win, but should have unlocked that first half. सबसे जानते लाइक जब से ये मीम हुआ जैसे मॉडल ने बोला इसकी तो गर्लफ्रेंड बैंशी है ठीक है उसके बाद मैं गया अपने फैज़मोफोबिया में जर्नल में मोस्ट डेथ्स टू बैंशी बस तब से ये चल रहा है। This pistol round has everything on it for DRX. तो अच्छी बात है ना? Just how important Icebox मतलब तुमको डायन से प्यार है मतलब? इसी बात से लाइक क्या मैं क्या बोलूं मेरा मोस्ट डेथ पोल्टर का है। An account the fact that they're going up against नीचे क्या लिख रहा है वे? मुझे वाइपर भी चलेगा। अरे ये तो अबे गांड नहीं ये ऑप्शन प्ले करना ही नहीं है ऑप्शन प्ले करना ही नहीं है Yo, वाइपर चैट सुन अरे भाई जेड वाह नीचे से आके It's outrageous confidence प्लेमेकर सोचना क्या बंदा क्या प्लेमेकर भाई ये लोगों ने ना ड्रोन यूज किया ना कुछ किया भाई चुपचाप नीचे से वॉक करके हार्बर वॉल को पुश किया And now things are forced to go quiet as DRX reassess. ये है स्टैट प्रॉब्लम्स उसने हार्बर वॉल को पुश किया बट वो अपड्राफ्ट होकर राइट गया तो नीचे वाली एली तो एम्प्टी रहेगी। रीड होता है लोग देख के आते हैं ना कि सामने वाला कैसा खेलता है। अब वो स्लो आ रहे थे तो उसने प्ले बना दिया आसपास He's the most aggressive player on Loud. अब कर रहे हैं वो ड्रोन। Have to clear it though. Look at that drone being used from a very far back position. मेरे को तो मर्सी भी चलेगा। What the fuck? Space gained. Space looks like he wants to have another go at it. This would be behind this wall. There's a dart that doesn't even clear him. This would be absurd. But the real play is having a cube and under orange right now. Yep, split play. So important. Less. Spots it out in that Viper head to head. Oh boy! That's Arbido. Flash play. Aspas by let's go. Leo Express Leo. Let's go. Too strong. And containment. It's the name of the game. Aspas. Absolute gremlin just lurking around B main. Oh boy. Mako too much to do. ये जो इंस्टेंट ट्रेड नहीं कर पाते ना ये लोग इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बर्गर बनाना आता है। सही बात। And you talk about containment. नीचे वाले एली में कोई नहीं है। DRX are just getting stuffed in a box right now, but ये how do you फट से निकल contain गया this ट्रेड भी guy? नहीं दिया उनको। ऐसा लगा भाई ये मारा उसको ये भी ट्रेड नहीं हुआ। He's getting a flash through a wall for him to repeat for the third time in the round. अभी देखो हमारा 9 तारीख तक पूरा। And this is the problem when a player gets that level of confidence, when they feel like everything is working, suddenly they're going to disrespect your utility. Suddenly you're going to have to deal with them, and if you can't win those fights, if you can't preempt them and shut them down, Aspas is going to have 20 kills in 13 rounds. 20 to 8. क्या करे? For Aspas, I mean a commanding scoreline, a commanding KD. And I feel bad for Buzz because he's playing all right this map, but he just can't hold on. He can't keep up. No one can. Different heights ये मॉले सही लगाते हैं बॉक्स के separates a lot ऊपर of the तोड़ भी नहीं sides. It's a सकते। bit of space to the defenders here, but I think the goal is to try and get that plant down. Util though stops that. अरे मर गया। Defensive molly. Wow. That's a he tries to defensive go on the molly. rope, but Sadek was spamming it. That's so good. Hopes and dreams resting on these shoulders. Trying to hit these shots with the pistols, but Loud far too good. Never a missed opportunity. Never any signs of weakness so far in this series.
DRX not going for the force, just happy, allowing Loud to get up to that 11th round. And this, I mean, look at the score. 13-5 मैंने Clash of Clans live search किया, मुझे आपका live recommend किया, भाई दिखा दो They look insane. And I want to cast people's minds back to the lower bracket final at Champions, where DRX met against, you know, the NRG core, then known as Optic. They lost 13-8, 13-5 on the first two maps, and they still pulled it to map 5. Thank you, guys. So it may still be. They might still make a match of it. Rohit, thank you for the 7.29 dirham. My first super chat to my favorite streamer. Thank you. Loud 3-0. गेम बनाना ज्यादा आता है हो गई यार ये DRX तो मैप पिक है हार रहे फिर नेक्स्ट तो जीत ही जाएगा मतलब ये ऐसा खेल रहे हैं ना इसको पूरा कोना का पता है समझ रहा है कि आसपास तो लेट ही जाता है इधर देखना है मुझे इधर जाना है तो मुझे इधर से पढ़ सकती है और कहीं नहीं पढ़ सकती भाई मुझे अगर मैं बताऊं ना कि फाइनल क्या होगा या तो क्या मन है देखने का बहुत बढ़िया लाउड वर्सेस फनाटिक ओ फक मैं वही तो बोला क्रेजी हो जाएगा भाई बट नावी वर्सेस फनाटिक भी मजा आएगा मतलब इनका जैसे वन साइडेड है ना कल वन साइडेड नहीं रहेगा वो नहीं होगा बट DRX से एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि ऐसा वन साइडेड DRX वर्सेस फनाटिक हुआ तो मैं फनाटिक को सपोर्ट करूंगा तुम समझ रहे पूरा होल फनाटिक कैसे होगा अगर ये जो होल सीजन चल रहा है ना ये होल सीरीज में ये टूर्नामेंट में DRX का वो हर बार ना एक राउंड हारे हैं समझ रहे हो एक राउंड हार के वो थर्ड मैप तक गए हैं इन द बेस्ट ऑफ 3 बट लाउड अभी तक बेस्ट ऑफ 3 में गई ही नहीं एक्सेप्ट द वन विद एनर्जी हां उनका एनर्जी वाला बहुत क्लोज था बे वो बहुत क्लोज गया देखने में मजा आया था हां ऐसा फाइनल वाला फीलिंग आ गया था मैच weaker weapons still dart's going to be cleaned up and they do respect that util छोड़ दिए Must win round for DRX. It's a little bit shaky. वो है spray rounds there. Shots being fired. The test is really just being caught out in the open. Down to 48 health now. Spike will go down though in that 4v4, but the way Loud have been playing, anything could happen. They don't have rifles, but we'll see. वेट कर रहे हैं जब एंगेज शुरू हो जाएगा. Nice wave for that utility. These passive post plants really hurt DRX on Pearl. Check these. इसको पता ही आएगा. भाई यार आसपास हमेशा मार देता है कैसे भी पता नहीं मार देता है. Get his head ripped straight off. Now Aspas 18 health. इन्होंने भी है. And a dream. Loud वाले. बोनस था उनका. अच्छा है. Puts them. हाँ एक ही मारा है. 4. But it's a long road to try and pave their way to any sort of semblance of victory. Which also goes to Loud. But the more they start getting onto the board, the more they Loud हर बार trade ले लेते हैं. I saw the stat earlier that they were winning 3/4 of their attacking rounds on this map. वैसे क्या बोला? The way that they load ult orbs onto their players will allow them good opportunities. This one is so crucial though. Yeah, the crowd. Booze for Viper सुन वर्षी क्या बोल रहे हैं वर्षी फिर से बोल. These fans are making it personal. But DRX, this has to be around for them. They need to punish Loud and send them into an eco. वर्षी उसको slowly DRX are going to have big ults online if Stax gets the orb or the plant. They can use that reckoning to make it so much more difficult for Loud to retake. So they did a charge. Nice. Common angle to spam. It pushes Stax down. That's through the cove as well. Cheno. A suboptimal plant location. Robots push them back. Will he survive? Yes. Great timing. Reckoning. Good timing on that one. It's a refight taken. Dart not being found. And they clean it up. Rifle spam. Crossfire setup. Mac is still alive, still kicking in the fight, 45 health. मुझे भी लग रहा था यार. First में जब मुझे ये चढ़ आई थी. It comes down to 2 years. And even he can't quite manage those expectations. Gorgeous post by DRX. That's what you need to see from this squad. Getting the fire back underneath them and pushing Loud down to an eco. The crucial play there being that Stax has been generating these ultimates really quickly. He's got the spike on his shoulders, and the reckoning comes through exactly as Loud want to go for the retake. And that means these players are uncomfortable. They can't stay in the same spot for very long. They can't trade for each other as easily or hold angles properly.
rips apart the retake, and DRX are using utility at the same ये time. कौन सा वाला है? अच्छा और लेने नहीं देते। ओ भाई देखा? Diligent play. लेने आओगे सीधा उस स्पीड पे शॉट डाउन मार के। में हक मत दो भाई। It's going to be Loud going for those ult orbs, just like DRX were when they were on their defensive side. But how do they get through this one? आसपास को बस एक पिक मिल जाए। Push coming through. अपने बंदे पे शॉट डाउन मारा उसने। अल्ट आ गया। मेरा क्यों लोडिंग हो रहा है? नहीं। Oh my goodness! Narrowly spots that one. Still retake to be taken. Push all the way in. अरे almost गया था। Into the cove. Got to be a recovery now for DRX, but it's looking so damn bad. Handed over the rifle. Sadak taps the spike. Right now, baiting out of position. Oh, the flash is good. Zest does claim it. Receiving his eyesight back into it. No more tap onto it. Sadak again trying to bait the swing, but RB shuts that one down. Unless he's got the energy up, wall going up. Steps in. There's no way you can't get away with this. Dart pushes him back, but he's already gone up. Surely. In between the legs, positioning known. Less hunting for the kill, but gives up on the round. भाई but बहुत damage दे दिया ये लोग ने. Or does he? No, he doesn't quite have this one. Oh shit, सोच अगर हो It's जाता a ये। nice idea, cute play. But DRX, they play it fairly safely, but at the same time, there was danger in that round, and Loud only had pistols. An investment of the Reckoning, though, from 2Es certainly makes things doable. That recon die is lovely. Even if it's still good to be able to get Zest into a position where he can push the spike on the next tap. सोच वो आरबी देख उसकी पार्टी भी थोड़ी सी। Cow and Zine going for an aggressive flash play to create space for the rest of Loud to stick. DRX are going to have their work cut out for them when Loud have rifles. Which is right about now. Crazy angle is good. Drop down to 30 health. Big punish. Got to respect that now. Pushing all the way through. DRX have time. They don't want to let this one slip. It's going to be util used to clear that path and get that plant down in the close corner. And look how Stack saves the high tide for the post plant. That means that Loud have so much more space to go for an instant retake. Hunter's Fury, just using his clothes. Lockdown's going to be removed. Still, there's the danger. The danger is here, right in the pit. RB does not get cleaned up. Oh, this is ridiculous. What a reposition from RB. And what is going on here? What is occurring? How does the kill get found? Sprays down position. No! Perfect timing. Turning them into mincemeats. Re-swing. What the? Abe? Don't let this get dangerous. Time ticking, which still afforded. Loud could play this one if they wanted to. At this point, Aspas hunting for those kills. He knows economy's getting stretched, but still it should be him saving the rifle. He's going to go down with the spike. Yeah, strange there actually, because Aspas isn't going to be able to save that into the next round. No operator online. Still, perhaps he wanted to use his Blade Storm. It's not going to be immensely damaging that decision. I think the real one is RB's reposition. But I think looking from an overall strategic point of view, as Loud decides to take a timeout here, you're seeing DRX with a really different approach to a similar comp. Instead of using their high tide to make a lot of space for themselves on site, taking snowman control or getting through it to take the site, they second, बीच में Loud में time out नहीं लिया, Loud time out करके Loud आ गई give themselves very little space to work with. Loud are on that retake within a couple of seconds. If you can wind your head back, wind your memories back to the first half. Loud were pushing DRX so far away before the post plant ever happened. So when DRX retake, Fnatic और Fury का भी मजा आया था देखने. Clear snowman, clear tube, clear top side. DRX are actually playing a much more claustrophobic game. It's going to give Loud opportunities. So far, though, it is working. But DRX have had to burn a lot of ultimates at this point. They've used a Reckoning, they've used Hunter's Fury and the Viper's Pit. What they really need is Stacks to get another Reckoning online by the time we hit round 20. Oh, Sadak bichara 5 kill pe. They also need to make sure that Aspas doesn't kill everyone with the blade sword, because the way that this guy's been playing that is well within the realm of possibility. In a normal match against most teams, when you see your opponents drop down to the weaker buys, you're thinking, okay, a bit of breathing room, but Loud of being able to make these half buys a bit more dangerous. Now we see an approach. It's an attempt to push away, and he sort of plays away from
A main drone. What does it really see? Flash to try and as well hide information. Gets the tag though. That's what's pushed up off of it. Trying to take the space back. Swinging wide. Top of pipes. A bit of spam. Shutdown ho rahe hai. Kill found. And so the big pain point. Oh my god, shot removed. mara Fast bhai. Buzz pure. अब आया Buzz bhai. Gonna wrist up into a combat kill to just spam. ज्यादा dash मार सीधा. That's great work. Dash मुंह पे जाके मार. Stax is still 2 away. I'd like to see him hunt for this final kill, to be honest. His is the most important ult to get online for the next round. But even so, it's possible that with an ult orb and a plant, they'll have that still to play with. Almost. Oh my god. Great reaction. Call कर गया है Buzz. इसका अगर ये वाला मान ले एक राउंड का सन्नाटा हुआ है पूरा. 2 players facing at the same time. जो हैकर के ऐसे मारा है ये डर अच्छा लगा. Couple of shots. ये डर हो भाई. Difficult ones for sure. Really difficult ones. ये But दो अकेले sometimes निकाल players might still be able to grab them. spam point भी दिया. If DRX win the next round, I'm believing in the comeback. जहाँ पे वो मारा उसका हेड वहीं पे था. The way that they're manipulating the ults is fantastic too. भाई मैंने एक चीज I नोटिस think करा है. there might be a way that they can get into this round with a lockdown and then play Reckoning post-fight. There is going to be a massive Ball push के here on through B. ball के through spam के लिए वो अच्छा है ना. The balls to push up major play. That is tagged up though. Up draft, there was a punish attempt by Buzz. बच कैसे गया वो? He's a ton of his own util just to maneuver his way around that one and potentially collect that kill. Still moves forwards. Now dashes No. Don't look. B moves around, blind, but to the angle, and he is fully blinded up. Swinging around, coverage is there. इतना नहीं होता bro. And it is just that hammer strike one after another. बस को लगा वो आसपास है तो वो घुस गया. भाई वो डबल फ्लैश जो किया ना दूसरे फ्लैश नहीं करने देना था. पहला फ्लैश में उसके Sky looks so phenomenal, man. Utilizing both of those flashes, knowing that the first isn't good enough, relieving the pressure. Merciful, love you. ये जितने खेल रहे हैं क्या सभी रेडिएंट है. हाँ, भाई अच्छा खेला ये राउंड. Phenomenal रेडिएंट तो कुछ नहीं है इनके लिए भाई. I think DRX rushed that though. Once they had control of B and they pushed Buzz back, and they pushed Aspas back, RB had the perfect time to go for a lockdown. You stick a lockdown there and you wait. You apply so much pressure to Loud. स्टाइल के साथ ऑल टाइम. गाइस आज मैं कुछ फास्ट मूव नहीं And instead they just ran it into the ball. ठीक नहीं हम सोएंगे इसके बाद. And it has set Loud. Split. Map point for them. Split है उस पे Loud का double list It's रहेगा. allowed for a team like DRX. No longer available. Lockdown going to be used up close though. This is punishable if they have util for it, but Ult क्यों मार रहा है पागल? so it's just going to be a pit. I don't know how less he's going to stay. में फंसेगा ही वैसे भी भाई. क्या किया ये? He's going to have to evacuate his pit. Is he just going to allow himself to get detained? Yeah, apparently. Wants to keep it up. Obviously, the Viper nerfs, meaning he has to maintain that. Dash has to be used. वो ऐसे ही करते Viper. No punish on that. No punish at all. It's backup remaining. Spam. Okay, Fuse मर गया. It's dangerous from Stax. If Stax falls here, they lose their big भाई मरा नहीं वो बंदा. Just barely keeps him alive. हार्बर सिर्फ प्लांट के लिए रखा है. जैसे सेज रखते हैं. Shots landing. Wallback damage, and they are weak, missing the second one. Oh, they almost He had बच to गया. score it, but Loud, moments away now. It's a 3v2. डिफ्यूज हो गया ब्रो. पीछे डिफ्यूज हो गया. आगे कोई देख ही नहीं रहा था स्पाइक को. ये में डिफ्यूज कर लिया वो लोग ने. के मैप पे भी हार गए ये तो. This retake style looks incredible from Loud. The aggression coming out from Aspas and Kawanzin. Pushing forwards, making space for one of their team to get on the defuse. The Brazilian retake looks so good. And the crowd are pumped. Loud are one map away from being able to get themselves in a position where they could be our first ever team to lift 2 trophies, and back to back at that. That's what they're fighting for. And honestly, ये बंदे जो अलग-अलग गिरे थे ना. try and bring it back. It was good. Adjustments were made. Ever so too late though. And DRX find themselves in a position where, once again, exactly the same as that lower bracket final against Optic Champs, they lose a map. 13-8, 13-5, and head into the third. बट ये तो इनका मैप पिक था यार उसके हिसाब से कहाँ अच्छा खेले See the लोग. same. It looks almost impossible, but they've done it before.
The crowd funneling against DRX is that extra element that maybe they didn't think about. But we'll find out on the other side of this just how this series will conclude. हर चीज जो कर रहे थे वो लोग ये टैकल कर रहे थे। भाई तक चलेगा ये तो खत्म होने आया। हाँ ना भाई। आपको इनुमा की पता है क्या? इनुमा की नहीं। कोई ना अभी 2-1 होगा। 2-1 कैसे होगा? 2-1 कैसे होगा? Next map will be Loud's pick। हाँ split Loud का है। हाय रोहित। 3-0 एशिया वालों के बस का नहीं। टेक ड्रॉइड सही बात है भाई, तुम्हें ही भेजना चाहिए था खेलने। इधर क्यों बैठे हो रे बाबा, तुम्हारा ही तो कमी था उधर टीम में। और बात क्या है बता, एशिया वालों जो बोल रहे हैं ना, तुम भी तो एशिया में ही है। तुम कौन सा तुम कौन सा साउथ अमेरिका का चौथा है बे? तुम्हें काम करना, तुम वहाँ पे जाके खाना खाना। खुद के रीजन की टीम को ही ट्रैश टॉक करते हैं भाई ये लोग। हैं अवले यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहा है? चला जाना दो छोड़ी। अजीब ही लोग हैं। I feel like Messi makes it play. हाँ playmaker तो देखो ना। I've seen it. Guys तुम लोगों ने अभी तक क्वालिटी लाइक्स नहीं तो playmaker से। भाई बहुत बदतमीज हो गई है मेरी चैट आजकल। वो चीज I think बस में नहीं है। तू बदतमीज। बीजेएमआई खेलो, उसी में कुछ होगा। उसमें जितना करना था कर लिया रे। तुम लूडो खेलो, तुम्हारा उसी में कुछ होगा। आपका चैनल यूरोस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, हो जाएगा। यूरो न्यूज़ बोले हैं कि करवा के देंगे। तुम्हारा तो लूडो में भी कुछ नहीं होगा बे। तुम लूडो के साथ खेलो। चलो गाइस प्रेडिक्ट करते हैं। Who will win map 3? Loud। हाँ। मेरे पास कितने हैं? 7,100। सब लगा दिया मैंने। 0 points। उसी में तुम्हारा स्कोप है। बाय मन, गुड नाइट। तुम्हारा लूडो में भी स्कोप। एनर्जी रहते तो क्लोज कंपटीशन होता तो एनर्जी को हरा दिया ना यार। लाउड नहीं तो हराया था शायद एनर्जी को। किसने हराया था? अब रहता वैता की बात तो देखो, लाउड हरा चुकी भाई ऑलरेडी। बाहर है भाई एनर्जी। टाटा बाबा है जिस पे वो एक्सपर्ट है। अबे हाँ ये मैच मैंने देखा था। नहीं मैं शायद अबे हाँ मैं बाहर थी। क्यों मोटा हो जाऊंगा? ये फेब 19 को हुआ था ना। हाँ मैं दिल्ली से वापस आई थी तब की बात है ना ये। हाँ तो मैं स्प्लिट नहीं देख पाई थी। पर्ल मैंने आधा देखा था, फिर मैंने फ्रैक्चर पूरा देखा था। Should I describe your backward? Backward बोला बे। हाँ जरा। हाँ तो 2 बार कर दिया भाई, वो बहुत जिला है समझता है। बात लगेगा। मैंने भी 4 बार भी कुछ कम नहीं है। जिला। यो जिला बोले। क्या बोला? यूट्यूब पे कुछ चल रहा। मेरे पैरों में दर्द हो रही है। मस्ट भी जिला बनाना चाह रहा था, बस उसके पैरामीटर्स परमिट नहीं किए। तो गाइस हम फटाक से खा लेते हैं। अरे देखो हमारा इतना बड़ा जिला कैसे बन सकता है जरा लेकिन। बोल। ये क्या चालू किया स्नैक्स ने? आओ। फिटनेस विद स्नैक्स एपिसोड 1। और जरा क्या कर रहा है? भाई साहब चिकन रोटी किल थोड़ा रिफ्रेश कर रहा है। दाल चना विद कोकोनट, इफ यू नो द कॉम्बिनेशन। दाल चना ये मर्सी जानेगा। मर्सी तुम जानते हैं कॉम्बिनेशन? दाल चना जो वो होता है ना, नारकेल देके वो दाल बनती है ना। नारकेल क्या है? मतलब कोकोनट देके नारियल होता है। नारकेल कौन है? नारकेल बंगाली में नारकेल बोलते हैं। नारकेल हमारे इधर में तो बंगाली में नारियल। तो मर्ची यहाँ पे तो यहाँ पे नारियल बोलते हैं, नारकेल नहीं बोलते। मैं आसामीज में सेम बोलते थे मुझे लगा। मैं किसी को आसामीज नहीं हाँ ना किसी एक आसामीज के मुंह से सुना था मैंने जब मैं वहाँ घूमने गया था कि ऐसा नारकेल। प्राइस पूल क्या है? प्राइस पूल इसका पता नहीं। नारिकॉल बोलता है। नारिकॉल ओके हाँ राइट नारिकॉल। हाँ एक तो जब आर्मी कैंप में गया था वहाँ पे सुना था मैंने। फेवरेट चिप्स
Dave Green से ऊपर कुछ आया है। $60,000. मैसेज स्कैम कर रहा है यार। अच्छा इंस्टा पे नहीं होता है वैसा, तभी कह रही हूँ। इसी के लिए माथे पे डीमो है जावे। ओ आसपास डीमो खावा जाए। लगा के मार रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है। I think Mimi put it very succinctly while we were off camera. Aspas might एकदम cheap है बस। I think so. Very possible. But it's so we got that qualifier of the might still. Yeah, okay. He's working on it. He's working on it. But Finally Radiant is back. ब्लैक क्लोवर देखा है क्या? ब्लैक क्लोवर मैंने शुरू किया था बेबो आने में 10 एपिसोड देखे जब मैंने छोड़ दिया था। ब्लैक क्लोवर हाँ। 1000 विनर का होगा ब्रो। मुझे बंदे को ब्लैक वाला बुक मिला था ना। $500,000 है। अच्छा। वही ना। $5 शायद कुछ तो ज़्यादा ही होगा। उसमें तो फाड़ देता। अच्छा यार। कोरिया में फेवरेट कंट्री भले आ रहे पर फिर भी मेरे लिए जीत चुके हैं। अरे भाई सेमीफाइनल तक पहुंचे यही बड़ा बात है। जीतेंगे किसी दिन। डार्क चॉकलेट और मैटर नहीं करता अंदर। हाँ मतलब अपने हाय शाइन नाम मिलता है, नाम से जो ब्रांड एंडोर्समेंट आते हैं ना। नहीं सब लोग जीतने के लिए खेलते हैं, मतलब ये लेवल में ना सब लोग जीतने के एक्सपेक्ट करके खेलते हैं। इससे ज्यादा तो वो पर ईयर कमा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस रिप्रेजेंट कर लिया और खुश रह गए। ये लोग को जीतना ही है, लाइफ में इन लोगों का गोल ही है, इसलिए पहुंचे वो लोग। Nobody can defuse this spike. मतलब कैमरा ऑफ कर दिया। ये कैसा प्लान है? Client of please Oh my god. And then they're just able to hold this the whole way throughout. I mean, the Reckoning be damned. You're not going to be too bothered by that. Sonic just holds it down, and they're so distracted by Aspas in the back line that no one is able to go ahead and interrupt this. So it's a bit of an anticlimactic way for this map to conclude, but it's still just so brilliant. भाई कह रही हूँ शुभांशु मैं उसको कि ऐसा नहीं होता है इंस्टा पे। And I think it's actually a very direct comparison to what we saw in Pearl, where this Loud team is really good in these post plants of getting the. मेरे कॉलेज वाले कॉन्वोकेशन दे रहे हैं। हाँ क्या? मेरे कॉलेज की कॉन्वोकेशन में तो मैं गई ही नहीं थी। कौन डाल? छोला डाल। छोला डाल। If you are Bengali, that's छोला डाल। They want to play in this very scrappy, very aggressive. छोला डाल आके दिए। भाई चुम्मेश्वरी। ये बस जो खिलाऊंगा ये पर। भाइयों। भाइयों। क्या डाल? ये वाला डाल। क्या डाल? ये वाला जो डाल हम खाते हैं। डाल। डाल क्या होता है भाई? डाल तो पेड़ पे होती है। डाल बोलते अरे माँ का इसका। It is the bro, not the. डाल। डाल। डाल बंगाली में डाल बोलते हैं। रीड नहीं। डाल। मैसेज चेक नहीं किया। अरे तो पूछ ले। से बोल रहा था तो मैंने सिर्फ देखा थी उसके नाम से मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मैसेजेस तो मैंने बहुत दिन से नहीं देखा है। बहुत सारे वो एक दिन बैठ के देखना पड़ेगा। मैं रियलिटी में लड़की हूँ। हैं? मतलब तुम तो कोई तुम बच्चों हो? मेरी किस्मत मैं रियलिटी में लड़की हूँ। तो क्या हुआ? तो जैसा बकचोदी कर रहा वो जेरी की बैंशी। मेरे ला कोई तो एक लड़का आईडी बना के बकचोदी करता है। Is it? Hi madam. नाकिल दे छोला दाल संगे लूची हेवी कॉम्बो ब्रो ब्रेकफास्ट कॉम्बो है ब्रो। मेरे वाला डाल इस का ब्रांच वही तो मैंने बोला पेड़ होता है डाल डाल। अबे ओ if you know Bengali you please just no comment। एम लैप्स करने मेरा क्या सब होगा? डीएम सीन आता है। भाई ये तो फास्ट करना चाह रहा है बट थोड़ा सा हग नहीं रहा है। ये वाले टाइम में तुमने बोला था मैसेज देखने नहीं तब दिखाते मैंने ये तुम्हारा लोग मैसेज बोलते देखा किसी था। बंदे को कि ये कर दो हमारा एम लैब्स प्रमोशन का एक वो करना है। मैं बट इतना सब इंस्टा कर रहे यूज हैं नहीं एक्चुअली करती सब कर यार। रहे हैं और किसी का एक तो रैंडम को दिखा रहे हैं पास वाला भी कर रहा है। वो भी कर रहा है। It's called Tetenge coconut in Kerala। तेंगे कोकोनट। लैंग्वेज पर क्यों डाल रहा है? मतलब उसके लैंग्वेज पे बोलते होंगे यार। इसलिए कि प्राइस हाँ नहीं लैंग्वेज देते पे ही पता तो नहीं यार जनरल बोल रहा बहुत हूँ। ज्यादा मैं कौन सा अपने मन से नहीं तुम हौला है। हाँ शुभांशु आई एग्री विद यू। अरे कोई नहीं भाई सब तो अलग ही चल रहे हैं भाई। हाय रेबल। क्या खेल रही है? मैंने करा है नहीं मैं तो करता रहता मैं कभी नाडिया इक्वल्स टू कोकोनट इन ओडिया नादिया नादिया तानिश
तुम्हारे नाम से मैसेज क्या बात कर तो नहीं रहे हो? यार Yeah. क्या एक्सेप्ट फिर लेट गया ये तो खेलने का मन है नहीं मैं जो बता रहा हूँ DRX's first look on split in this tournament. Doug, we've kind of seen them take two different approaches across the two maps that we've had so far. First, to match the composition of Loud, and then looking Buzz is raised. Sadak netted is a win. Sadak is. But what do you want to see out of them स्पिन here? का Let's give डबल them their डुलिस्ट best shot. रहता है ना भाई एक हम कोई रहना लेता ना मजा You have Buzz on the रहना नहीं दिखेगा भाई It wasn't Buzz सबसे on the jet that बकवास है necessarily was the problem. It was the fact that Buzz didn't have any खेला ही counter. नहीं Like, इस he didn't have any एक खेला था और बहुत गंदा खेला था कौन था वो पैसिफिक टीम ही थी एक टैलो नहीं स्पोर्ट्स थी क्या पैसिफिक वर्सेस पैसिफिक कौन सा हुआ था उसमें था There you have it. Can this one go distance? They got to get it done here in game number 3 if they want to push it all the way to 5. Let's find out as we send it back to your casters. Here's Brendan Sideshow. मैं फील ले रहा हूँ The potential close here to the storied history. बेंगोली ज़्यादा फिश खाते हैं ये एक प्रथा है एक मिथ है जो बस्ट करो खाते हैं Never quite reaching the खाने का बात नहीं लेकिन मैंने जहाँ तक कभी इंडिया में देखा है ना मतलब दिल्ली फिश कल्चर ज़्यादा है फिश Thinking about DRX, they are थोड़ा one of सा the इधर most पे long-standing rosters, if not पता नहीं इधर में बहुत longest कम standing मुंबई में तो खाते हैं मतलब मुंबई में तो खाते हैं That comes with वो है 3 जैसे years हम of लोग खाते हैं ना expectations on their वो वाला फिश shoulders इधर to मिलता भी नहीं hoist ना a trophy and वो take बात one है, home सही for बात। Korea. मिलता है But लेकिन they've never even made a grand वो final. fish वाला वो The नहीं। series that Seth was talking about, that रेस attempted तो reverse क्रियो ने sweep खेला of था कौन सा खाओ भाई compare that to Loud, who've made क्या 2 ही Brazilian खेला था। super rosters work ब्रो क्रियो तो and have क्रायो made और नहीं 3 खेलेगा grand finals in the last 12 months. कायरो That's bonkers. सादाक का रेस It's देखते हैं क्रियो Success just feels baked into It's this क्रायो now. सॉरी क्रियो ये बोले शर्लॉक बोल This map here split. वाला मैप पे तो नहीं मैं See if इसका there's going to be सुन an क्रियो extension क्रायो of कुछ play भी for DRX or allowed. नहीं Going to be क्यों? sailing relatively uncontested all the way Sherlock, to that Sherlock, grand कुछ भी। finals. शेरलॉक बोलते हैं मेरे को तो बहुत लोग बोलते हैं मैनिका भी ये मैनिका कैसे आ गया भाई शेरलॉक मैनिका The way that Loud are playing certainly does. Bit of बहुत damage. लोग शेरलॉक बुलाते हैं भाई मेरे को It's not going to be pushed back, but this double duelist comp is so चला जा, वो fast कुछ and loose and चला जा, aggressive. वो चना Drop it down. चना डाली बोलते हैं ना हिंदी में Flash not ready for ज़्यादा RP. चला जा, Jumping, तो चना डाली dodging, बोलते हैं ना हिंदी weaving. An attempt at a trade with Buzz. Well, he's going to meet his match at heaven. पेट तो हो रही है ब्रो Comes ओए down to this, TRX. Stacks was Swarming hiding. ये प्लीज positions. इजी क्लच इट Down to 2 प्लीज years. इजी क्लच इट प्लीज Flash अंधे हो round the corner, ठीक है। completely blinded up, and so a pistol round Last thing claimed aged. for DRX. इसका 5 मिनट में करता And that's massive. First one on भाई the board for मोनी them को all series मेन का long, बना and दियो it's मुझे exactly how you need to start. अमन शेरलॉक Loud's बोलता team है composition हाँ is हाँ, going वही to तो be कह रही हूँ। constantly applying pressure to you. शेरलॉक अपन को And- शर्लॉक शेर लगता है I think RB is going to be under. टाइगर It's going to be the main focal point for that pressure, in my opinion. You saw Aman Stacks Sarab just kind of yeah, baiting him ठीक है, here Sherlock. in order to get into a really हाँ। crunchy position where he can वो wait for the बोलेगा ऐसे retakers to टाइगर वगैरह come ही through. बोलेगा कुछ रेफरेंस देगा वो Holding on ऐसा against the बंदा jet हुआ वो race शेर takes होता a है lot of effort. शेर को बोले शेर को जब Taking बंद the कर pistol देंगे वो is लॉक हो जाएगा so important. ये जो होगा उसका बनती है expression, शेरलॉक DRX are going to start on that right foot. क्रायो कौन सी टीम से है हॉर्न Potential टीम्स of a comeback into the air and mention of it. Expectations obviously on the shoulders of both Oh, these bhai. teams. Dog's going to get some good Suit info. ke gaya. So Stacks spotting 3, I believe, with that one. Yeah, that's आ huge. जाओ Because one of the things that Yeah. Loud does is take control चार behind लोग this आ रहे Viper हैं। setup and एक then ऊपर force का you to जंप peek पिक रख into रहा है बाकी साइड पिक्स रख रही Mako, आसपास से टक्कर दिखा दो potential to तुम be तुम overwhelmed. Flash ले deep, इन्फो निकल गई जीजी gets the information, but Oh, contact play timing. lurking यो out इस band. इवेंट भी होता है Strikes them down. But does But इसका he पता नहीं know? जो क्रॉस Does कर गया Mako know about Sadak's positioning? ओ Looks through, ए it's चक्कर a दिया fuck। reactive play. Stacks forced. फिर से ट्वीज आ रहा है They'll ट्वीज bring him down with a spike at their feet. On Yeah, Flash as well, Twist clears clutch, bro. some space छोड़ो। for them. So ट्वीज तो farming भाई up a couple ट्वीज of these ult भाई orbs now ट्वीज onto का the मॉनिटर DRX कितना side, लो है making it a rather clean and flawless anti-eco round. इसको एंटरटेन I would read I feel like Spike's family. DRX Spike's in the family में episode couple 10 of तक maps, देखा उसको देखा ही नहीं। including, you know, Split and Icebox here, have actually उसको been build much होने में better time at लगेगा, shutting मैं down छोड़ दिया। Loud's economies. अच्छा They finally Spike's found their family. moments to be able to punch back. And when Loud get onto the eco rounds, they don't look as dangerous. Here you're going to see, though, that explosion. East Talonzine played is map. almost always using his Trailblazer at पार्टी A, का फ्रंट फोटो माको and है it's often followed by क्या? Sadak. इसका फेस कैम देखो ओबे This और time, everybody रेसिस्ट on Loud behind it. Yeah, 5 grouped up.
Orb to smoke the cross. Throw some uncertainty into the mix for the Boombot. Leading forwards, Fragment Nade drops down, spam inside of it. Oh, Aspas, nice one. Let's go. And yet he does. Angle walks for. Will there be a trade? Just getting that pressure. In a bounds. And RB's left in a 1v3. He'll take a duel early against Aspas here. And lose it. Loud responding very quickly. Must see this, despite the fact that go for DRX were Sandman. ready for that hit to go through, their pull You nade देखो, combo was you. still late. Boy, crazy. That's the pace that Aspas and Sadak are going to be playing with here. That's the tempo. They're so quick with their blast pack engages, with their dashes. Body daddies भी बहुत अच्छा. If you're anchoring a site, you can get overwhelmed very quickly. Imagine DRX यहाँ से 3-2 कर दे. Imagine ही करो वो. क्योंकि वही होगा वो. See here how Zest and RB were designed to hold onto A. The Knight shutting down a lot of the supporting utility. Grabs a ton of info in this round as well. 4 players found. Aspas more shut down. Holding on top of heaven, just lays down that fragment nade. But look, a ramp that's compromised. कुछ नहीं होगा. The job. ये वाला angle थोड़ा सा beauty है. पूरा flash. Play this one. Anti-flash drops down. Taking space once more. हाँ ये अच्छा कर रहे हैं. Nade भी करा. Chooses the back away. Snake bite उसको उस पर back कर गए. But the utility traded out, making sure that. अच्छा main से जा रहे हैं. Ramsor नहीं try किया ना heaven पे. Towards the side. This is where the fight takes place. Has to be the man of the hour. Dodge, weave around, stacks, assisting and helping him out. An absolute concrete hold here of the site. Very nice hold. Very nice hold from DRX. Working themselves together. And that one was difficult. Loud's ability to explode through B forces DRX to use util early. Even though Loud were only taking a ramp, DRX have to give them the respect as if that could be a full hit onto A. And they use the pull and they use the nade early. So when Loud go for the re-hit into A, there is no pull available. There is no nade available. They just have to anchor. They've called rotates though and read that very nicely, Stacks and the rest of DRX. And they hold on. But you're getting a glimpse into how dangerous Loud's comp can be here. It takes a lot of preparation and very fast reaction. So one's holding it and win for hand. So, weaker weaponry. Loud have still been dangerous in the past when they've got just the sheriffs. Pop flash play, smoke to meet them. One fight as well. That's laid down at the feet. Mako, Kelsey, a bloody thing. Okay, once more Stacks there to bail him out. Bit of danger. But Mako's there like a rock. Yeah. Oh boy, you're crossing me, mar rahe. Making sure that they relieve the pressure, making sure that one player backs away, someone else to step up. It's a point. That's not body agent. Really bring it too hard, but in these best of fives, it is a different element added. Your map pool pushed and pulled and tested. Absolutely true. In ways that it hasn't done before. And Loud have been a team that relies on their attack side split because of the way that their composition is. They've been bowling teams over in this half of the map. And I think back to the game against NRG. NRG had a decision to run an operator on their Astra defense that I thought smacked of not quite having the right experience against Loud and how to counter them. Trying to counterplay them just by assuming they'd walk into it. Yeah, whereas instead the pace just bowled NRG over. Good start. RB's not going to be doing that. RB's a very rifle-heavy player, and he's also extremely sensible with how he uses his utility to help his other teammates. He's become a very good site anchor, despite that not originally being his MO. He's going to get flashed in here, an aggressive play. There's no way you can come out with any sort of kills. Indeed, Aspas does shut it down. Just after I'm talking about how safe RB usually plays. Zest and RB cook up a play like that. Throwing it into the mix. Seekers was used. What? I think that makes sense as a mid-round informational play, but really early on, before you've got any idea that they could be in B main. And this opens the door for Sadak to double blast back in here with his ult. Showstopper. Nice be नहीं अब तो. Zest miles away. Ult खुलने वाली है. Knife back online to try and cancel this one, and there we go. Dog. ये क्या? Satchel right up into heaven. The rocket. मारी कहाँ? Spot तो कर ले. Oh भाई बच गया चलो. Sort of target, and now nice DRX make the play. They make the call. They want to try and fight this.
अकेला हेवन से निकल गया भाई. 41 health. With the most to do. But he's too low. First one found. वो भी मरेगा, जस्ट मरेगा. Crowd. The nade's good. Nade is really good. Almost very nice try. Oh my goodness. अबे वो बाकी लोग सब मर गए ना. हाँ ना, मैको से 3 उड़ गए बे. Surviving with just one player, but Stax does shut that down before it got really dangerous. Stax मारा, 2 मैको मारा. Amal, the crowd are doing an art about the possibility of Sadak winning a 1v3. I want to give crazy credit to how DRX handled इसके 2 kill देखना. अच्छा क्रॉसिंग में वो और ये अच्छा. And forcing Loud to overextend into them if they want a chance at being able to take that space. वो जेस पे जो नेड आई नहीं, जेस का माथा शट हो गया. वो तब भी वॉकी कर रहा था. He's like bro, जो होना था हो गया. I mean, these guys are playing the most passive angles, passive crossfires you can. वो तो नेड जैसे बेगा तभी समझ आ गया तो डेड है. हाँ ही जाएगा. जाएगा भी तो उससे मर गया था ना, गन में मर जाता. नहीं पहला नेड पे तो फटेगा ही 55 डैमेज तो खाएगा ही वो. हाँ और था वो लो. When this team was known as Vision Strikers and at the beginning of their time as DRX too. फर्स्ट कांटेक्ट में मर गया वो. This map was amazing. This Korean team had trap. अब थोड़ा एक लेवल पे आ रहा है. Was fantastic, and we haven't seen it as a strength for them in recent times. Perhaps just waiting for this big moment. Defensive map है, देखते हैं. स्प्लिट पे तो उल्टा अटैक में निकाल रहे थे ये लोग. Loud map pick as well. They took them here. Yeah, no kiss cam today. The right idea about it, and the timeouts taken from Loud, looking to readjust. Yeah. Rethink their game plan. If DRX deal with this double duelist composition well on split, good Iron Kid. Loud are going to be playing on Fracture. Imagine है ना. Got to assume. As long as DRX can hold on. Chernobyl दारुण सी. ये मैं सुना हूँ. Maybe there's still hope for them yet. Honestly, Fuzzy next. Early night, the 0 point used towards A, and the Loud players dodge it. Looking to try and take that space in a more slow manner, contacting forwards. And this is the kind of round where Sadak is going to just try to get a feel for the protocols from DRX. If we dodge their knife on A, what is their response? Do they try and re-clear it? Here you see the Trailblazer used from Stax in heaven. Second piece of information. Oh my! Well, guess what? Spurs happy to claim it. Way further forward than the DRX players are expecting. Base and the kill. Flick locks on to the grave. Stax. यार अभी भी जाना है. From the back seat position, see what he can do for his team. वो मार्को को एंगेज किया. Playing so aggressive. मार्को को क्या हरा में देख. आगे पीछे just hunting for information. Spike still making his way, but dropped down, and that means Buzz. Hey, you see. बस भाई. Side down. Side. Sadak creeping and crawling behind them. I like this from Buzz. तो अंधा हो जाता वो. चलो Sadak, nice one. Sadak do something just as good to rip this one. Fabulous left. That's Mako. स्पाइक ड्रॉप है तो उस तरफ ही देखना चाहिए. हाँ पॉइंट वही है. Used to dissuade this one, pushing forward. अरे मार्को भाई मार रहा है बे. Listen, it got dicey. Talking FaZe clan, but eventually this guy's got safe hands. And Mako. राउंड भी पर इतना क्लोज जा रहा है भाई. 6-1. सेकंड आईडी है भाई. अच्छा सेकंड आईडी है क्या? In that comeback. फिर अच्छी है nice. The lower bracket final. Alison Borderland देखो. Crazy. To be able to bring his team अच्छा back. खेल रहा है कि नहीं? Seeing flashes of the same thing again. अब तो खेल रहे हैं. भाई आसपास से क्या मारा बे. I love this idea though from Loud to really test how the defense looks on an eco round like this. ये अगर आसपास मार्को को मार देता ना जीजी हो जाता. तब तो राउंड था. Otherwise, it's very low. मुझे लगा वो सिटी वाले बंदे को होल्ड करेगा. Do they dodge the 0 point again? Double initiator, double aiming to break it, but it just doesn't quite work. Controller. डबल कंट्रोलर और एक डबल ड्यूलिस्ट डबल इनिशिएटर. देखो ये लोग अगर ये वाले मैप में अच्छा खेल रहे हैं ना तो मतलब सेंटिनल इज यूजलेस. Their own Viper wall as well, right? So bit of anti-synergy. Oh, भाई शॉट देखा. He's the casualty. Ouch. ओ भाई पुल करके और दूसरे को भी ले जाता. मैगी और बॉर्नविटा. Seekers a wide swing, चलो घुस reposition. गया वो. ओए क्या? Trying to help him out. The swing from heaven, readjust though. Oh, shot भाई. My goodness. Okay, चलो ठीक है. 1 minute. से आज नहीं हो रहा. Damage being done. Buzz dropped down in the middle of all of this chaos. Please. Out wide, out in the open. कहाँ से घूम के आ रहा है? Take matters into his own hands, but oh sorry jet तो इस बड़ा नहीं पर डिफ है. आराम से खेल रहा. उसको भी सेफ रहना पड़ता है बिकॉज़ उसको भी
वो डालना पड़ता है वो सब मैप देख के. मारा ये मारा. Still out in the open. You have the other first shot. What a round inbounds from Buzz. What a round from DRX. Stacks and Buzz, magical. In terms of the duels that they win. Where was this team? Where were these players in maps 1 and 2? Side पे जो hold किया उसने अकेले. कान की वहीं पे था ना कान in the replay. Stacks taking that first duel off the back of the pole, and then this one. ये crazy shot था bro. ये वाला बहुत. Readjusts to be able to take out the Raze player there, Sadak. I mean, that's just insane. The entire time, Seeker just chewing at his back. Yeah, I mean, he just has to be constantly adjusting his movement. And this is DRX looking so damn commanding in this map. 7-1, knocking Loud once more onto that weaker buy. And the two newer players, the two rookies for Loud. Recent movie कौन सा देखा था मैं? They've only got 1 kill between them, I believe. I think I saw the chalk line. They normally have the vast majority of the trades. They're trading as fast as Sadak, and that's how they get a lot of their kills. Timing नहीं. Yes, माफ हो गया. Nice one. अच्छा हुआ तो. One mistake. Pays for that with his life. Hands a rifle over as well. But DRX have still been very stable, even in the 4v5s on split. They just drop back. Sadak, no. Showstopper. Let's go. भाई almost मर ही गया था. 42 health. Smoke still to dissipate as well. Heal कर दो भाई, Cosmin भाई. Trying to anchor. आर्मी गुड़ाओ. Yo. क्या देख रही हो? क्या देख रही तुम? At least try to take the fight. आर्मी को मारो बे. Weighs his way through. Sheriff's making this dangerous, but Stacks responds. सही जगह देख रहा था वो. निकाल लेगा पर एक पे राइफल है दूसरा. Seekers though. Knows where they are. लो है दूसरा तो शेरिफ वाला है. मार दे. No trades. नहीं यार. निकाला है भाई. Just यार नहीं यार 5-0 3-0 में खत्म करना है क्या? Any attempt of a round. The crowd completely silent. मैप पे कंपटीशन नहीं हो रहा ना बात हो. Stacks looks like a machine on split. मैप पे तो कंपटीशन नहीं हो. This is his map. This is his home territory. And I'm telling you, it doesn't matter how many picks that Loud are able to get early on, they cannot hold the help Cosmin का चल नहीं रहा है ये मैप. लास्ट में उसके बाद भी राइफल थी. उससे नहीं हो रहा है. 0 किल पे अभी One तक. side anchor, sometimes 2 side anchors, to play and dance around smokes, to dance around the architecture of the map, and then flooding people in to try and help them. Is working perfectly to counter Loud. Yeah, it's break that 0 point. Not a chance. Zest gets the info. जेट को अपड्राफ्ट कराओ नाइट तोड़ने के लिए. कॉफी और बॉल निकल. ड्रोन मार के हवा में गोली मारना है. कॉफी यार ये कैसा क्वेश्चन है. Trailblazer. एक से नींद उड़ती है, दूसरे से ऐसा सुकून मिलता है. मतलब कॉफी से भी मिलता है. But there's the snake bite and the orb. ऑडियंस से चैटिंग आ रही है पूरी. It's an instant response. The dance. चलो भाई पर love him so much. Bright Slayer बोल रहे हैं. Bright Slayer. I love him so much. Out of every player on DRX, Zest has looked like the weak spot. ओए क्या भाई. It goes down again. That's the spot changes. That angle didn't exist before. And so first player to fall. तुम देख रहे हो डिफेंस में पूरा फैंटम यूज करते हैं बट अटैक में वैंडल्स आना है. Stacks nearly has a flashback online. Just for reclearing it. I mean the confidence to do this Overflow one. and look how it's drifting all of the defenders back over towards B. Buzz is ready to help RB whenever he likes. Mako as well going to be rejoining the defense now. But there are no stars left online. How does RB anchor without a smoke to play हाँ उनका ही DRX का बोल रही हूँ सब आ गए. प्लीज माको को मार दे वहाँ बस माको मर गया जीजिए. Repositions though. कंफ्यूज हो गया बंदा. Let's go. Yeah, clean round. भाई ये भी 9-3 होगा. इतने सन्नाटे में अब आवाज निकला इनका. हाँ ना. 9-3 होगा. स्टार्ट कर रहे थे. I mean, Loud have been putting up 7-8 in a more on their attack side so far this tournament when we've seen it. क्या शील्ड लेना भूल गया क्या? So DRX have already got them in a great spot. And their economy's good. मार खाया होगा Should be able to provide for the rest of the map. नहीं देखा ना. मार खा के ईद तो कोई आई नहीं उसने. Big ults to work with too here. Both teams have a बंदा टेंशन में ऐसा पसीना आ रहा है इसके इसलिए ऐसे चला भाई कोई. So the defenders have क्लच किया ना अभी मैं तो करूंगा. Was like someone Makos but he should be doesn't difficult even to get know through. I It looks like exist. he's going What to should use I it in do? mid with a judge. What the fuck? Or maybe he's just going to play the judge early Make on. him know of your existence. Commit his What do you pit mean? later. Yeah, possibly waiting for the right time What do you mean? to use it. But just holds for now, and it's again Loud. Haruki bhai, boli It's bhai. been their game What plan, is that? pressuring towards A. Every time, God, that's good info. 2 players spotted. It feels like their game plan is bully Zest.
It has been that weak link so far, trying to anchor down the back of the site. बात तो सही है. Quite found the right timings for him. Now that util though, drop down, stars, dash forwards, dog into the back. उस पे बहुत गंदा घुस रहे हैं बे बेचारे Zest पे. It's a waterfall move. चलो GG nice. 9-3 9-3. 9-3 होगा. Look back into that side and play fast to disrupt एक that round और take. निकालेगी DRX. Punish. And look what happens when the anchor isn't able to stay alive. When Zest falls, those players who are trying to flood in and help him, Loud can put the focus on the retakers, the rotators instead. You contrast that to the round where they're going towards B and RB stays alive for so long. Loud is still hunting for that anchor player, so you can't focus on the players in B heaven or at CT that are flooding in. I would say Zest has got to adjust, but frankly, it's already late in the half. And I think DRX have done enough to be able to win here. Any YT update? Sure, it is another back. one on the board would be great. A 9-3 half. We've only seen 9-3s in the opening halves to these maps. So there would be some poetic irony to it. map 9-3 But I think either way, DRX will be very happy about this. 8-4 या 9-3. They've already equalized their best performance नहीं, on maps 1 or 2. ये round निकालेगी DRX. It will be 8. Proper भाई नहीं है ये लोग पे. It will be 8-4. And then Loud come back. And it's a 3-0. बेचारे को तो ऐसे उसके मारा है. ये लोग साइड KO रेटिंग फिर पे भी नहीं छोड़ देते. हर बार पिक ऑफ हो ही रहा है वो एंकर है ना, मतलब वो कितना ही बार पीछे जाएगा. वो साइड छोड़ के क्या एंकर कर ही नहीं पा रहे तो कहाँ का एंकर हुआ? रिटेक पे ही हाँ, उसने नाइफ दिया था बट उससे नाइफ ब्रेक हो गया था, तो नाइफ ब्रेक से कर सकता है. नाइफ तो हेवन से भी दे सकते हैं, वो जो दे रहा था उधर टॉप साइड का. हाँ, वो बट वो क्या है ना, ऑन साइड जब आ गया तो वो एंकर बन गया. Now going to be utilized straight down into mid. Trailblazer though, double satchel. Let's Bro, मारे सब प्लीज नहीं. भाई ये क्रेजी था. ब्रो से पता भी नहीं निकल गया. अरे नहीं, अरे ये हर बार ये ऐसा हो रहा है. अबे अल्ट कर भाई कौन है? Oh my goodness, lucky to get out alive and still no one's looking for RB. थोड़ा देखना भी पड़ेगा यार. Quizz मारो यार, Quizz please. He's alive in this one. Less than 2 years. 2 smokes players with the most to do now. And it's cutting down. Dropped up सही जगह पकड़ लिया उसने. Fragment nade pushes it back. एंगल फनी हो गया उसका. ये मर जाएगा. आरबी ऊपर देखेगा. अरे आरबी. अरे. And still RB uncontested. ओए 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 ओए. And where will be that चढ़ गया ना, सही trade? है. अरे पागल है क्या? भड़काओ. इसका नेट गया क्या? अबे इसका नेट चलेगा पक्का. इसका नेट गया मेरे को लग रहा है. कैसे बॉल बना? रोज चलते चलते ऐसे ही जा रहा था आगे वो. Throw everything at it. वो रोज कोई होल्ड कर रहा है. उसका पीसी का तार खींच लिया कोई. पक्का उसका पीसी का तार खींच लिया. ऐसे कौन चल के जाता है भाई? Waves of that utility blocking the sight line. 30 seconds contacting up, down. वो राफ्टर गया ना? ओ नहीं, पीछे चला गया. Clear it. छोड़ दिया, एग्रेसिव नहीं रखा. सही है, good decision. They're both worried that they could have pushed through spawn at this point. ये नीचे कर रहा है. अबे एंगल ऊपर देख ले. Oh my the timing. मैंने कहा था ना 9-3 होगा. That wave. Please. ठीक है, अच्छी बात है 9-3 कर. वो अल्ट डॉज क्रेजी था बट You're a DRX fan, I'm sure. ना. You're going to be more than happy with that one. Nice and loud as they secure that 9-3 half. So सामने का रेज अल्टर में खड़ा है. ऐसा बोलते हैं टुकर. ये बाड़गांव को देखिए क्या कर रहा था. From Stacks and Mako. अरे क्या तेरा The clutching and the sight. इनका बारी-बारी से एक बंदा ब्रेंडेड हो जाता Looks है. like a different team, and they've got that momentum to be able to bring this back on split. Now the comeback begins. मिसिंग फैज में है मेरी. 2 दिन VCT खत्म है उसके बाद. पूरा रात को फैज मोनाइट ही चलने वाला है. मौत देखी ना उसने. I understand. I miss it too. Oh, side on sound. Joined by Koreano, streamer for Loud, and also FRT, the captain of the show match that's going to happen in a couple of days. First of all, thank you for letting me crash your watch party. How's it going? How's the watch party going? First of all, hi guys, I'm Koreano. The watch party is awesome. I mean, I really like doing these, especially like inside the crowd and everything. The sound is awesome. Everything is awesome. And Loud is doing a really great job. I mean, we did a really good job on the first half. Technically, GE तो गई तो GE का कोई स्ट्रीमर ऐसा नहीं हुआ. हर टीम का एक तो कॉन्ट्रीब्यूटर जा रहा है ना. रॉसी है. अच्छा रॉसी ही कर रहा है राइट. वो Now I don't really understand. As a pro and as a contributor both. What are they chanting? What does it mean? Okay, they just like pushing the team to the limit every time.
they always वो तो like show match cheering था. for a crowd like match का ही बोल रहा हूँ loud, मैं. loud, तू क्या loud. पूछ रहा है? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर एक और का एक कंटेंट क्रिएटर भी है जो इन स्टेडियम ये सब कर रहा है, मतलब समझ रहा है, वॉच पार्टी कर रहा है. वो नहीं पता मेरे को. I don't know. हाँ, because मैंने एक किस्सा देखा मैंने. Screaming, shouting, it's crazy. एक एनर्जी Can you का guys देखा. teach me something? You know, Loud if I का want to है. be supporting Loud out ये there, what should इसका I है. say? The best word to say is vamos. Vamos! Vamos! Okay, okay, I understand that one. Now, Tarek is actually right next to us. He's also captaining the show match. So, you got anything to say to him? You know, you're going to be playing against him in a couple days. I can't wait to play against him. You're top because 5 I know anime. it's gonna be a great match. But I'm winning this game, bro. I'm winning this. Trust me, bro. I'm winning this game. You guys can't see this, but Tarek is right next to there, and I think he's responding to us. And lastly, is there anything you want to say to the players if they can hear you right now? Some words of encouragement because they are knife 3 down. I mean, for DRX, I'm going to wish them good luck because Loud is coming really great. The changes on the roster, especially the coach as well, Loud is doing a really great job, and I think Loud will both Oh, thank you so much, you two, for joining me, and have fun for the rest of your watch party. And I'm going to pass it back to Brennan Sideshow to jump back into the second half. क्योंकि मुझे मॉड बना देना. हेलो भाई कितना आ जाओ. इस बार DRX 69% defensive round. Some sort of favorable position. The crowd has not had much to get excited about here on Split. DRX have been so firmly in control. Defensive map. Their game plan has worked perfectly. The question is just शुरुआत के 4-5 राउंड में 13 किल में था, उसके बाद पूरा आ गया. Loud's comp, I think, is designed for attacking, but it also is not reluctant to get up in your face. क्या सचल मारा है भाई? Oh my goodness, that's a little bit awkward. Satchels. That's a little awkward. ये तो देखने मिलता नहीं है. And it looks a bit awkward. In the meantime, too, this is what I'm talking about with this comp. It's so happy to get active on defense. सड़क थोड़ा उसकी तरह लगता है. Hoping that they were going back through sewers, but they definitely heard elephant foot stomps. सुन लिया रे बाबा. कितना कूदेगा भाई? Time stacks is the one who's also. सोच इधर साउंड फेक करके वो लोग वापस एक ही तरफ वॉक कर लेते तो क्या लंबा फेक हो जाता. And they take the timing. Oh, timing अच्छा लिया. बहुत बढ़िया timing लिया. Strutting to contact play, but this is where the backstab will really reign. Oh, the timing. पूरा team उड़ा देंगे ये लोग तो. Waits it out. First counter. Let's go. Finally, the third. Stacks भाई कल. So much to do. उसको लेके गया बे. हाँ. Resources. What a play. Fantastic timing from Aspas and Carantine. The whole reason they're forced to rotate there is because this hit into A was so messy. सब लोग साला वाइपर को ले रहे, I आर्बर don't think it को was ले रहे. necessarily Loud doing anything spectacular on their defense, so much as Buzz with a bit of a beef trying to entry, the players getting distorted and mixed up. This isn't a very bursty comp from DRX. It's not going to group up as 5 in A main and B main and explode. At least, I don't think it's playing to its strengths if they decide to do that. I would like to see them control mid, go for A heaven, run some splits, run some fakes, make use of the fact that Loud doesn't have a sentinel that can give them information on the map. Orb collected though. That's DRX making the most of these eco rounds, making sure that they prioritize the ults for the next. Building up to their advantages. For Loud to have any shot of trying to shut down this comeback, this new momentum that's behind DRX. Pistol round was a good start for it, but it's still an incredible uphill battle. And Aspas has not been pushed away. Aspas bye, let's go. Boom. Marshall in his hands is deadly, very good. especially when there's no armor. Gotta be careful. Running right into the sight line. Check close, please. Nyo. अरे अबे कॉलिंग गंदे हरामजादे. अच्छा किया, मैं भी होता तो ऐसे ही. एस तो लिख दे भाई. एल बोला.
पागल कहीं का उसके किल कम है ना इसलिए वो कहता मेरे को भी चाहिए को फ्रैग्स भाई बोल रहा भाई मैं असिस्ट ही लेते रहूं क्या भाई dangerous of all the ults to get online for a मैं bonus. उसके पास वो खड़ा था उसका जो वाइपर है लेस देखो उसके लेफ्ट पे खड़ा है वो नहीं वो जंपिंग क्या putting फ्लैट गया Aspas in a position now where if he plays aggressive in B main and goes for some kind of push, maybe in mid, you know, there's so many places where you can get onto sight lines early and try to challenge these players from DRX. So it has to be a clean crowd win for DRX. Don't let this bonus get out of hand. Got that full investment. You got the rifle. Spots the one. Nade's going to be used and Amen पूरा control ले लिया. Yeah, Mako pushed all the way back. Aspas is pushing. Trailblazers use this good discipline. Tags him, stunned up, has to use the dash to get out of there. Yeah, that's good. So from DRX's point of view, they've managed to take mid and push Aspas a little bit away from B main. They have given up the whole of A though as a result of that. And look at those lap plays in A Heaven, they're only looking at vents. They don't care at all. I mean, now they've just started to pay attention to A main again. Because there's a timing where DRX could have re-cleared. Oh, a bungle from Stacks on the flash as well. Doesn't even threaten like they could be going back in this direction, but still, Loud for some reason going for the gamble stack on A. तीन दिन पहले इतने बजे इतने ये वाले मैच में ये राउंड में तुमने मेरा ऐसा नोट करके रखा था उसने. Diligence there from DRX, making sure that they clear all the necessary angles just in case. But it's a three-sided support team, so you're going to see that 5v5. बस मैं समझ रहा हूँ. Great trade by Zest. Exactly what his team needs. Using the Seekers to push forward a little. Pushing them back, and so the danger removed as Aspas does fall there. Satchel play, flash. But eventually going to be meeting them with that rifle fire, and it is Mako, Mr. Consistent. Please check करना ये angle please. Kawazin. अरे उतना नहीं, थोड़ा off था. Great positioning by Zest there. Lovely little off angle, making sure that there's not going to be any crumbs left up. जा भाई kill ले ले. Really well played, very disciplined. One of the things though that I'm slightly concerned about with how DRX play on their attack side, they're not creating serious presence. They're relying on this Viper wall kind of setup from Mako. But Loud are playing it aggressively at the beginning of the round, and they know that no one's getting back over there. Yeah. The other part to this too is, RB is really, really safe in B main. So if Aspas decides to get aggressive in B and hang around there for a while, DRX could run a B split without ever clearing garage. So a couple of things where you could definitely see an opening for Loud to start getting back into this map and controlling the game on their defense side. And it all comes down to how aggressively they play the outsides, the extremities of the map. डाल दे भाई डाल दे हाँ डाल दे. Come down to this, isn't it? ये और डर के ना सेम है, पूरा अपना खेलते हैं. Gun round. Operator in the hands of Aspas. Deep Get पे aggressive ही खेलना पड़ता, वरना point Spots the one, and guess what? Aspas. मरेगा Of course he's taking that space. He knows where he is. मत कर पीक मरेगा. This is dangerous for Mako. Juggle peek fires, dash enabled. Snake bite to try and force the angle up close. चलो ये मिस कर गया. Oh fuck! But there is a trade. But did they anticipate this? ओए पागल है. Still there, 2 years. That's going to be the response. Oh, pull करके मारा. Dashing right down. Nice, amazing pull, amazing pull. Relieving most of that one. There was a pull. Great assistance. How do you salvage it with DRX? जीत गए. अब थोड़ा सा ना, ये थोड़ा smoke from RB. Pull back there. Making it look like they could have gone in, but the spike again is just wide out in the open. One little peek from less. And they know there's no threat. वो अगर टूइज वहीं पे मर जाता ना पुल नहीं कर पाता तो हो जाता. Has to be this side. That's where it's going to be landing, and it comes down to this crossfire. गया. Impossible. Lovely by RB to whip it around. Somehow return the fire. The players are weak though. Sadak. Danger zone now. Smoke popped up, but time pressure. but ये भी लोग था. 11 seconds. Trying over the wider swing, but lovely patience by Aspas. ये सादक को मार देता एक गोली पे. DRX are still grouping up really heavily on the outer sides of the map. I haven't seen them use mid great apart from the previous round. ये बहुत बढ़िया था ये वाला. इससे hold करते उसे. Look at the A pressure. I mean, the Loud's comp completely controls A main, B main.
Come back हो गया यार डिफेंसिव मैच है मां टांगों पे मारा ना तभी तो मैं बोला whether it's that और मुझे भी चाहिए यार जल्दी they've got going on the opposite side of the map with Sadak and Tuiz. उसको पता चल गया ऊपर है फिर They dominate the outer wings of Split. And DRX need to recognize this in that time Spanish, where they can have a chance to talk sure. to the coach. कुछ meaning होता है and they need to be taking mid. OT जाएगा OT ये Aspas can always be more mobile, of course. He can bring an operator to mid or try to go for a push there, something of that. DRX जीत जाए बस भाई वरना जल्दी सोना पड़ेगा. Not seeing the same mobility for DRX. कोई नहीं है उसके बाद थोड़ा they were set up to be able to खेलेंगे get लोगों a पे. comeback started here. 9-3 at the half. Sure, they lose the pistol, but they're letting an opportunity slip away from them. And that कल अच्छा खासा वो रैंक अप मैच पे छोड़ देना चाहिए था. फालतू में एक और सिंगापुर के लिए एक और आ रहे और माइनस any करवा chance दिया. of pulling this back and getting us to 5 maps, getting the first Valorant reverse sweep in a BO5. कौन सा? Would be devastating. वो लास्ट वाला मैच तू तो चले गया था उसके बाद का बोल रहा हूँ मैं. Josh, you cannot let वो तो उसके बाद भी खेला है. And DRX knocked down to the weaker fight. Still getting the rifle in the hands of गया Stacks उसके बाद तो रेगा और माफिया है. हाँ. उसके बाद तो और लंबा खेले हम लोग. Behind this one still could be हगे या dangerous. नहीं अरे सब सही चल रहा था बस मुंबई सर्वर पे मैच मिलना बंद हो गया. उसके बाद हम लोग 3-4 मैच जीते बैक टू बैक. फिर मुंबई सर्वर पे मैच मेकिंग ही नहीं हो रही है. सुबह के 6-7 बजे कोई है ही नहीं तो सिंगापुर लगाए 2 मैच हार गए. Clinch the maps, the rounds that they should. That's a fast play. Satchel in the face and offsetting the weaknesses of the Stinger if there are many. And this is where I was talking about earlier. RB plays very safe, very passive, but they've spotted Aspas, so now they've got to go for the crunch. Okay, that's... Yeah, I mean, listen, not affording too many chances there. Had to dash forwards because he could feel the players swarming him, approaching him from behind. But this is so much better executed by DRX. Oh, by उसने op उठा लिया. Buzz, Nice operator, yeah, using the op. This round is gorgeous from DRX. The set play off the rip to set them up for the opening kill. The crunch on Aspas. Every part of this was lovely. RB even getting into a slightly more aggressive position in B main. If this is what they talked about during the timeout, and they continue running this kind of round, Loud are going to be under so much pressure. क्यों feed कर रहे फालतू में? Buy है नहीं. हाँ, गन मार सकते. अबे right में ये वाइपर को मार दे बस more मजा आ expensive, although उसके doing too much obviously to them. It was a half buy anyway. Exactly. Yes, nice one, nice one. पीछे. Consolation. Stack shuts it down along with the cheers of the crowd. And this is quite a weird spot actually, because they've saved an op into this round, kind of against their will. I don't think they're going to want to be opping on attack. I mean, look at how much value Buzz is getting when he decides to play aggressive with even a stinger. Maybe RB ends up picking up the operator and plays those kind of safer lines over towards B main. But otherwise, this seems like it might even stunt the attack. Absolute vodka try करो. अरे भाई Look क्या? how rough the force is from Loud. That is rough. Guardian, no armor judge from Sadak. I got a question why they're even bothering to buy it. ये तो desperate force Why not go for the half? Not wanting to play for that OT, it seems. Feeling like they have to buy up into this one. Maybe with the ults online, they can make the most of it. Look at this. Aspas, again. So much confidence to be able to push back Mako, even EMEA, and look at the punish. I mean, maybe with a rifle, Buzz could have got something done there. Buzz ने op क्यों उठा ली मेरे समझ नहीं आया. Attack में op क्यों ले रहे हो? Aspas was very fast on the reaction. अब अगर मर गया अगर भाई जात में वापस आ जाएगी तो लग जाएंगे. And grouping up into this crossfire. It slows down DRX so much. दे दिया उसने Zest को दे दिया. Cosmic Divide though. Rips its way across. Now you see it. दिखा. Clearance. क्या बे पहले ही spot कर लेता. Rocket exchanged. And a life for a life. I'll take that. Into the site now. Life for a life. Not really relenting, are they? It looks like Lava wants to play this a bit more fast, but okay, watch down. Nice shot. Yeah. Zest this time, his turn with the operator. ये तो भाई बिना armor way into this corner, but not the greatest weapon for the job, and no armor to work with, or speak of 87 health. Looking like DRX reaching that map point. I think critical for them. I think Sadak probably wants to go for this, and the other two should save. Hello though, 2Es with a pick. Zest response. भाई वो स्टन ले गया थोड़ा सा. वो स्टन के पहले ही चल कर गया वो. Time running low though. Anything to offset this, pull it back, has to tap it because of the pull.
DRX should know that's enough utility used, enough time pressure bought that is going to land them there. The 12th round, map point for DRX. What a bounce back split has been. And that timeout so crucial between round 16 and round 17 to get themselves back into the headspace to win here. Loud are going to respond with one of their own, but it's a horribly broken vibe. They made their last gamble. The economical gambit in round 18, throwing caution to the wind. And now this looks all but over. DRX with 6 opportunities to take us to map 4. And I think so far, you should be fairly confident that DRX could do something similar on a Fracture. Because their dismantling of the double duelist composition, despite the fact that Aspas has 21 kills, is pretty gorgeous. They've stopped all of the follow-up. Flood retakes were good. Slower rounds controlling the map. A little better. Signs of life. And listen, Josh, I'm happy to see it. I was thinking for a moment we were going to be seeing a fast 3-0. Maybe just the blunder that DRX were facing last time they played against Loud, but now they are one step away, securing split, extending that play deeper into the series, where it gets more so into that unknown, more so onto Fracture, possibility, the potential to really push Loud to the limit. And I don't think that a quick 3-0 would have been a disappointing performance here. You know, it would have been incredible to see Loud looking dominant heading into the finals. But I'm all aboard for a close semi. And for DRX to keep their hopes alive of making it to a grand final and having a chance to lift a trophy. No time wasted with this one. Look at the space that's going to be taken. B main controller's theirs, and RB, he's got the stars in his hand, starting to lay this one down. Double satchel. Nice. His timing's it though, and the judge is there. Counterplay by the rifle. Nice. Needs to be dealt with. How does he claim 2? Inconceivable almost, but down to that 2v2, and the pressure's mounting. It's Aspas and Kawazin who have to do the most here. Weapons aren't too good for it. Seeker's committed. This round. One down to the ground here. Start to split the site up. Is there going to be that crossfire? Zest! Taking a fight to them. Pop flash play. Leaves it up to RB. Can he perform the slam dunk? A tap. Baits out the pull. Still plenty of time, but one of the players has got to hold this, and the rifles are in the hands of the Loud players. It just looks impossible. It looks just impossible. And Aspas. Sweating maybe, but listen. That might be the most difficult round that Loud have to get through to bring this to OT, because their weaponry was awful, and they still managed to pull out a win. Having said that though, Brent, only keeping one player alive, oh, that's so good, the 2K from left. But like I was just about to say, keeping only one player alive there means that their economy is still in a rough spot. They're going to have to keep pulling out round wins, and some of them a little more cleanly, in order to get their economy back into a decent position and face DRX on level footing. Get it back in that manageable state, but again, similar tale to the first 2 maps in terms of there being no room for error for one side. That is just spam. I don't know what read. Yeah, what is the cue of that? Not too sure, but it catches. No idea. Counterplay on the other side of the map as Aspas and Kawazin take A away and make this a bit more comfortable. Having said that, they've got 3 players leaning on the A side. What is this clash? Pushing wins the fight on 8 health. But Stacks has got to call a reactive push into B right now. He knows there's max 2 players there, and Tui's put under incredible pressure. Indeed he has still. Will a headshot please be available to him? The one buzz good to trade it. Sight cracked open wide, back in position, into heaven. But now you're playing right into this Viper's pit. Still 3 players available. Full out, dropping down already. Aspas with the knives. Flash down, Kawazin buys time. Crossfire. Bing, buzz for the ace. Will he be the finisher? Less, so much to do. And just buying time with a showstopper.
Ace Pulling it off the clock. RB, what a finish! ट्रिगर डिसिप्लिन तो है वो 1v1 का थ्रो करने नहीं गया वो अल्ट के नाम पे होल्ड किया पूरा. There's still life in this squad. We've seen it before. You cannot count them out. They looked outclassed in the first two maps. A massive difference, a tier gap almost. But we've seen it before. Lower bracket final of champions. We've seen it in their run even here. That once you knock the DRX, this squad, now tempered by experience, have got more to give. Fracture's going to be another opportunity for Loud to close things out 3-1. The double duelist we're expecting to come back out and play again. भाई एक और DRX हो जाए मैं तो बोल रहा हूँ एक और DRX हो जाए फाइनल देखना है हमको तो. A real tested DRX squad, the history. भाई कैसे बज रही है चैट यार अरे क्या भाई मुझे फिर बेड पे जाके देखना पड़ेगा मेरे से बेड का नहीं क्या बज रहे हो like grand finals at the global events. That's what they have been hunting for. अरे तू क्यों डिफेंड कर रहा है जैसे तेरा डैडी हो मतलब ये हो क्या बोलते हैं तुम्हारा टीम लेके खरीद के रखा है और तेरे पर्सनल तेरा पैसा डूब रहा है इसको ये लोग हार गए तो. अबे बार-बार अटक क्यों रहा है? अच्छा प्रेडिक्शन वाला ईगो फाइट है ठीक है फिर ठीक है. क्या अब तक गलत हुए नहीं ना आज गलत हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा. नहीं होंगे हो जाए मैं तो बोलता हूँ आज DRX जीत जाए. ओए यहाँ से वॉच पार्टी कर रहे हैं. आज एक बार DRX जीत जाए बे. ओह माय गॉड. ऐसा डिफेंड कर रहा है जैसा इसका बच्चा है बे लाउड. माल पोस के बड़ा किया है बे. यस मेरी टीम थी ठीक है मेरे दोस्त लोग हैं ये ठीक है वो आसपास ठीक है मेरे आसपास रहता था आप बोल. आसपास रहता था ना अभी नहीं रहता है वो बोला चल निकल अभी. कांटेक्ट थोड़ा छूट गया. Shiro if you're not feeling देखती हूँ I'll try. I lost my luggage on airport. I took them to court. I lost. ज़रफ़ को पता होगा ये तो the case. Fuck hello. अरे यार छी. अब DRX का ही मैप पिक है हो तो सकता है. BTS ने जीतना चाहिए मतलब दिल अटक रहे हो. मतलब क्या है? कोरियन अबे भाई. What the fuck? BTS. कुछ भी भाई कुछ भी. लोगों शिट करो अरे तो लोगों के लिए भी बैठना तो यही पड़ेगा ना. It's the same thing. हर बात वो देख छोटा कर दिया बे. दमाओ अरे तेरा कर दिया. मैं भी तो वो कीबोर्ड है जो तुमने मुझे दिलवा दिया और भाई मैं स्ट्रगल कर रही हूँ जिसकी वजह से. हाय स्नेश अब DRX को जाना है करते रहो भाई मेरे फोन में कोई यूट्यूबर है क्या उसका चैनल किधर है? ठीक है विराज. नो अमेरिका में शायद. एक गेम हो जाए ब्रेक में इतना लंबा ब्रेक थोड़ी होता है बाबा दे 2 मिनट में चालू हो जाएगा अभी. लंबा ब्रेक तब आता है जब दूसरी टीम का मैच होता है तब थोड़ा गैप आ जाता है बीच में. That's what she said. 15 मिनट. DRX is finally DRXing. DRXing? ये बोलते तो 20 से Hello Sherlock, hello Rhythm. Thank you for the 1.9 and sexy keyboard. मुक्का मारूंगी. सेक्सी है ना ले जाओ खुद. जर्सी कौन सा है क्या बात. ठीक है मेरे को दूसरा दिला दो जिसमें एटलीस्ट F1 बटन्स तो हो. सो जाओ स्लीपिंग स्ट्रीम. यार मैं तो This is that time of the series when reverse sweep happens. Inch by inch. You can do it. एक सेकंड inch by inch बोलो. रिवर्स स्वीप दे दे मैं तो बोलता हूँ दे ही दे आज. ना रिवर्स स्वीप है लाउड को थोड़ा साइलेंट करा दो भाई. नहीं मार पाएंगे. इम्पॉसिबल. उतना मोमेंटम कैसे ला सकते हो? पॉसिबल तो कुछ भी है. मेरा चैट क्यों गया? 2 ऐसा हारने के बाद तीसरा जीतना भी भाई वैसे देखे तो 2 9-3 हारने के बाद 9-3 सामने भी तो दिया है तो कुछ भी हो सकता है इसमें. हाँ थर्ड में तो इज लाइक अ डू और डाई राइट. बोलता है ज़रफ़ साला रीजन द्रोही. रीजन द्रोही. ओ मां कसम. आप क्यों नहीं आए लंदन यार? डेमोक्रेसी फॉलो करो भाई. मुझे पूछा नहीं यार रीजन द्रोही में. रीजन द्रोही.
What is the best combo to hit when you're struggling in a game? Alt plus F4. No. No, it's not. हाँ. फनाटिक के सामने तो हुआ था अभी 2 दिन पहले. बहुत गंदा हारे थे. Zeref Salaben, yeah, still remains on top. Yes, true. तो कितना रैंडम चैट था ना उसमें, वही एक सुपर चैट आया था ये. Zeref का कोई रीजन नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर से मचला. Imported है वे. Borders ain't for me, bro. तैरते तैरते आ गया था इधर. सीधा बे ऑफ बंगाल से निकला. नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं कर रहा. लाउड के पीछे ए ना लग जाए. हाँ भाई, हो सकता है भाई. 2-0 से 2-3 हो सकता है. लाउड तो फाइनल बॉस है. मतलब the final जाने one round at a time, one map at a time, Achilleos. That's what we're talking about when we talk about mounting the reverse sweep. Never happened before in international Valorant history. But we might never happened before, just be on the path to it. It could be the day. This was a major rally back here from the side of DRX, once again showing that mental perseverance is still in full force. Still though, Loud looking terrifying. In particular, still somebody who very much needs to be accounted for as we move forward in the series. Even in that loss, he was dropping some significant numbers. It looks like one sleeve at a time for you, Seth. You're very, very hesitant to get back on the DRX. The 2-2 score line, who knows? Maybe I'll be wearing this bad boy. क्या बोल रहे हो? एक सेकंड रुको. What the fuck? That guy was still out of control, and it's kind of insane that they lost 13-7, given how well Aspas played. He was 8-1 in first kills to first test. 8-1. I love that call out because Mimi, it all started on the defensive half for DRX. It was Mako and Stacks holding sights. Yeah, thus far we have not really seen this double duelist, double dive composition tested on the attacking side for Loud. But DRX did such a good job at shutting down these side executes, and those 2 players you call out were fantastic at it. Both Stacks and Mako would kind of initially give space to double dive and flash back. समझ नहीं आ रहा यार. रौनक का चैनल हैक हो गया. चैट में आया. रौनक चैनल हैक. यार देखना है, नींद आ रही है. वो तो बेड पे तुम देख सकते हो आराम से. नींद आ रही. नींद नहीं आ रहा है. नींद नहीं आ रहा है. तो क्या हुआ? Buzz having a very strong performance overall in the race. It's a good sign. As well, and for Loud, it felt like this is the first time where their game plan. Sparkling water के साथ मस्त लगता है. वोट. अरे भाई तुम रुको. अरे रात हो गई है. अब ठीक है. अब रुक जाओ. अब सोने का टाइम हो गया. woman in the table ये कैसे इंग्लिश है इंसान की. kind of goes back to what Josh was saying on the desk. हाँ, all videos 7100 लगाए थे. हाँ यार, मैंने split पे 7100 लगाए थे guys. जो delete हुए थे, सारे points है मेरे. मुझे उसको just public मारना है. जैसे public मारूंगा, सब videos के नोटी यहाँ से जाएंगे. So much more comfortable. Setups were there. He had help. Now, of course, लोगों पे भी लाइफ हुआ है में. But it was this round 17 that really felt. अरे guys, लोगों का point है. मैं इधर बैठ के देखना होता तो मैं देख ही लेती. इसलिए इतना कंफ्यूज हो रही हूँ. मैंने तो यूएसडी की मंगवा ली. जिंदगी में हैक नहीं होने वाला. काम करते मैं जाती हूँ. अरे आदि भाई $20 थोड़ा ऑफ गेम कल करते यार पूरा वॉच पार्टी. कल वैसे भी इंटेंस गेम्स होंगे. नींद आ रही है. देखना भी क्या करूँ यार. देख लो, लाउड जीत जाएगी नेक्स्ट गेम. खत्म हो जाएगा. देख लो भाई. सबसे फनी कैरेक्टर मुझे ऐसा देख के तुम लोग को भी वैसे हो रहा होगा. इससे मैं जाती इसका होता था गोली. और कल पूरा फर्स्ट मैप से लास्ट मैप तक वॉच पार्टी करेंगे. वो लोग दोनों जब भी साथ में आते थे भाई. मैं जाती हूँ. ठीक है, बाय गाइस. कल मिलते हैं. अच्छा लगता ही नहीं था बचपन से. इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्टिंग बढ़िया था. बाकी लोग ऐसा थोड़ा बच्चे